Evening. What's happening, guys? Good evening. Every day, long day, a lot of things. We got Genji versus Sentinels happening in 1 hour after the Paper X versus Loud. Okay. With matches, guys. But before we do all that, we have a new game in town. Before we do all that, no sound. Your phone is on mute. New game in town. New adventure. We are going to play something called as gas station simulator. Gas station simulator. అంటే ఏంటి తెలుసునా, వచ్చిపోయే బండ్లకే పెట్రోల్ కొట్టాలి. वैरायटी स्ट्रीमर, हाँ सब कुछ करते हैं हम. So guys, people are asking for room update. The work in the room has begun. I'll be posting frequent updates on broadcast channel Instagram. So if you are not joined, please join. If you don't know how to join, Google it. I'm not going to explain anything here. But अगर आपको रूम का अपडेट्स देखना है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सब देखना है तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आ जाओ. अनब बंग्स 50 मेंबरशिप देने आ रहे हैं क्या? 100% देने हैं ना उसको, 100% देने हैं. हाउ इज अक्कास हेल्थ? शी इज 95% बेटर. I am thinking, since we don't have much time, let's quickly jump into the game and see what it is, because we only have 1.5 hour. उसमें 1 hour is actual time, half an hour आप लोग CSK versus RCB मैच देखने जाएंगे तो व्यूअरशिप नहीं होगा. बट स्टिल वी डोंट माइंड, वी स्टिल कंटिन्यू टू प्ले. 8:30 को मैच है तो वो भी हम नहीं करने वाला है. सो ऑल दीज थिंग्स create a problem in the long chain of we playing different games. So let's quickly jump into the game. मेटालिका का सॉन्ग लगाओ. बहुत और एक्शन है गेम में. एक्चुअल गेम क्या होगा मेरे को भी पता नहीं.
खरीद लो, मैं बोल रहा हूँ खरीद लो। आओ देख लिया, credit card swiped, place but 12 hours later. What did we do for 12 hours? ग्राफिक्स हाई में डालो, इसमें एफपीएस की ज़रूरत नहीं है, ग्राफिक्स हाइड में डालो, डिस्प्ले बॉर्डरलेस, लॉक एफपीएस 60 क्यों 240 V6 not needed price. Okay, all this is fine. ग्राफिक्स ओके, कस्टम क्या होता है? एपिक ही बेस्ट है ना? एपिक बेस्ट, एपिक बेस्ट। ओके व्हाट इज दिस? पिकअप नॉट नीडेड। Current task, figure out a way to enter gas station while holding something, throw a right mouse button into trash can. Okay. Hey, what is this, Ray? Oh! Arre shit, miss हो गया. Let's throw. ज़्यादा हो गया रे बाबा. नी अम्मा. ओके. मही तो पेट्रोल बंक टू बिजनेसमैन. अरे पेट्रोल बंक ले लिया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप, क्रेडिट कार्ड बा, पेट्रोल बंक बाट. लेफ्ट क्लिक टू पिकअप. ओ इसमें डाल सकते हैं क्या? प्रैक्टिस थ्रोइंग गाइस. शिट పోతలే బా. 1 2 3. जॉड हो जाए. वाह ఏదో కొడుతుందన్న, అదే కదా. क्या जगह है रही है? Follow the high voltage cable and find a way to turn on electricity. High voltage cable कहाँ है? Oh दिखा. Oh, it's coming here. टीबोन आएगा आज. मैं टीबोन का पर्सनल मैनेजर सोच रहे हैं क्या आप लोग? सच बोल दो ना. आर यू थिंकिंग आई एम टीबोन्स पर्सनल मैनेजर? बोल दो सच. It's almost like electricity is going directly. Pick up the phone at the booth in the front station. ना कामा क्यों रे बाबा? शैडो एक हेल्प कर दो. क्यों? We can run क्या? Oh, we can run. Congratulations on your purchase and investment, little nephew. It has been a while since you've heard my voice now, hasn't it? Yes, I'm a busy person. But luck would have it that the land you've purchased once belonged to my father. Oh. Since you are not only a potential business partner, but family no less, I'll do my best to help you. I will send you emails on a regular basis providing you with information on how to handle each part of the business. Do make sure to pay attention. Well, I must head off now. It was pleasant speaking to you again. Good luck. Thanks, old man. I got one email.
ये सब निकाल सकते हैं क्या? अम्मा ये भी प्लेस इसको कैसे बंद करते रहे? यू कांट यूज इट राइट नाउ. Solid investors are with the fast as a solid Get into the mini excavator. Decrease volume of the game. ज़्यादा है क्या? F to interact. पता है मेरे. Remove the pile of sand in front of gas station. पेट्रोल नहीं है. Find a way to refuel 𝐻𝐼𝐍𝐿𝐒. अच्छा ये टास्क है. कहाँ जाना है मेरे को? Music off. Equip the jerry can, tab and refuel and fill. बहुत काम है यार. Easy. ये निकालना है क्या पाइल ऑफ सैंड को? स्लाइड इट अप. एक सेकंड रुको. W स्पेस बार टू ब्रेक, लेफ्ट शिफ्ट टर्बो. बस देखो क्या पहना है. हेलो नावरियो, क्या दिस वीक द फेरारी दर्द मिलेगा? फेरारी दर्द तो टेक्स्ट. ओपन गैस स्टेशन फॉर कस्टमर्स. You can open gas station anytime. Use the downtime to organize the gas station, do other activities for any बंदरा ना करने दे. 4 मेल आ चुका है. नो फ्यूल. फिर गैस स्टेशन क्यों खुला हमने? कितना है? 200 for क्या क्या इधर? Locked upgrades management. Fuel ordered, fuel dispenser. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. व्हाट मेल्स आर देयर? बस सुबह ऑफिस में मेल्स, कैरी कैर इन्वेंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग गैस स्टेशन, ऑर्डरिंग, ये सब मेरे को सब पता है मेरे को. आप बोल के जरूरत नहीं है. व्हाई डिड वी ओपन द गैस स्टेशन व्हेन वी डोंट हैव फ्यूल रे? वेयर इज डिलीवरी? आ रहा है क्या? कस्टमर आ रहा है. ए जल्दी आ रहे.
अन्ना सिम गेम्स वाई नॉट? बहुत ग्राइंड है गेम अन्ना प्लेड इट लॉन्ग को। हाँ क्या वेरी ओल्ड गेम क्या? ए अरे आओ रे बाबा, आप कस्टमर आर वेटिंग। कोई जॉब है क्या आपका बिजनेस में? मेरे लिए खुद नहीं, आपको कैसे दूं? हाय मैम, वी डोंट हैव फ्यूल, कैन यू प्लीज गेट आउट? ये फ्यूल ट्रक है? आई थिंक दिस इज फ्रॉम दैट कौन सा रे, कौन सा क्या मूवी है रे वो? कौन वो द डेजर्ट में कुछ तो लगा है इसने, क्या ओपन कर? फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, दैट मिल्क ट्रक। मैक्स फ्यूरी। वी कैन गो एंड फिल अप। क्या इसका हो गया ना? You have to fill that point. Left shift to start boost. Oh. Perfect. Why am I playing a race? मैं एक रेस क्यों खेल रहा हूँ? ये शॉटगन। Customer at fuel? Why am I playing race then? How to exit रे? बहुत हो गया। मैं क्लियर नहीं है मेरे को। Serve the first customer at fuel dispenser. Already हो गया ना? ये क्या है? Hit the mark to get paid. फिर तक कर रहे हैं, मैं सब पता है मेरे को। हट। गोल बूस्ट। परफेक्ट नहीं है? Oh no. Tools. Trash bag. फ्री का सामान मेरे को पसंद है। ये कुत्ता पहले से था क्या? With the trash bag and pick up garbage and replace it with trash. Okay. अरे शैडो इधर आओ, एक काम है करने के लिए। इसको ट्रैश नहीं कर सकते ना, अलग है।
इसको भी डाल सकते हैं क्या? ओह, डिस्पोज ऑफ ट्रैश एंड ओल्ड फर्नीचर, सब डाल दो फिर। कस्टमर एट फ्यूल, ए इधर कस्टमर है। ये भी चलेगा, ठीक है। गेम डाउनलोड कर लो, सिंक अप करके खेलेंगे। अरे व्हाई एम आई नॉट गेटिंग परफेक्ट? यूफो को मैसेज करना पड़ेगा। यूफो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है। he'll come tomorrow to my house. He'll stay with me till he gets better. चिकन शॉर्मा खाने लाउडे को, अच्छा हुआ। और का चिकन शॉर्मा कल भी वही दूंगा उसको, चिकन शॉर्मा ही दूंगा कल भी। Hey, chi. Don't go inside the dustbin, useless fellow. Buy a broom, equip it and hold and sweep the floor. ये सब पर निकाल देते हैं ना। क्या कामा कर रहे हैं मनोज? स्ट्रीमिंग का चक्कर पे आपको ये सब करना पड़ रहा है। जो सीसीज को करना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं? Because of CCs I went into dustbin, guys. Hi sir. Have a nice day. Perfect. How to equip it? Group. ये पता है रे। ऑर्डर गार्बेज कलेक्शन कैसे? सर्विसेज गार्बेज कलेक्शन। ये ढूंढ रहा, ये कौन है? Dennis will appear at gas station and paint graffiti on the wall. Stop him by throwing items at him to scare him off. New events will appear during course of the game. Turn them off. मेरे पास कुछ नहीं है फेंकने के लिए, इसको फेंक दो। कहाँ है रे? कह रहे थे? यही ना कोड कर, यही ना कोड, यही ना कोड नहीं, यही ना कोड नहीं। Hi guys, cutie. Cutie going long distance. Top of the line job there. Mac tells. ये तो फाटो है, हाँ फाटो है वो। अन्ना चाइल्ड अब्यूज और what? Buy roller paint and paint the scribbled walls. तो मैं walls भी इसको लेके मारता हूँ next time, इधर ही रुक।
ये सब वो निकाल सकते हैं ना? Why I am having blocked walls on the Hey, we can put it in guys का क्या? Oh, easy then. Excellent job, Manoj. Excellent job. RCB Chennai always रहे. मच्छी मार्केट कोलो स्टेशन में खेलेंगे. Waiting for customer order. Have a nice day. Guys, all perfect. पूरा perfect करूँगा. इसको पूरा फेंक दो रे. Keep the place clean, guys. कल भी आफ्टरनून को एक गेम कंप्लीट कर लेंगे इसका. ओके. ओ पेंटर है ना. पेंट कुछ कस्टमर केयर. सुपरमार्केट कंप्लीटेड. सुपरमार्केट इट्स जस्ट प्लेइंग. नो देयर इज नथिंग एल्स टू डू. ये कौन है? कुछ नहीं देखा. कोई कुछ नहीं देखा गाइस. Pretty much what I asked for. Once equipped, tab color, get close to the wall, left click, start painting, hold within the range. If you go over the market, you'll splash, it's time to, over time paint will degrade, you need to repaint. अच्छा, okay. You need to keep it in the, इसमें रखना है, that's all. Oh, hey. Anna booth is there. अरे पीछे पचक. छी. Gym Simulator early access. What is this sound? गांड फट रही है रे. Steady, Manoj. Steady. Just as I wanted. Yalla babu. Oh, I have to paint the graffited walls. क्या मैं जो चाहिए वो नहीं कर सकता हूँ क्या मेरे को? फचक. फुच अब्बा.
हो गया क्या? ओ हो गया। क्या करना है? Equip tab. Okay. Press A and D to rotate the pin. Hold space bar. Try to open the trunk. Be careful not to break the pin. You'll have 2 attempts. If you fail or leave, you will not be able to try again. ये सब बहुत दिन पहले कर चुके हैं हम. A and D no. Easy. It's a small time kids job, guys. Guys, police has come. Everybody stay alert. Police watch. Police आया, guys. Everybody. Police आया. Police आया. ये पैसा देगा ना? ఎంత అవుతుంది గట్టు పోలీస్ అయితే గొప్ప ఉంది ओहो मौजूद ये क्या मेल्स है रे ऑफिस में मेरी इधर मेल फ्यूलिंग पता है मेरे को स्वीपिंग पता है ट्रैश साइकिल पता है टेनिस पता है पेंटिंग पता है लॉक पिकिंग पता है नहीं चाहिए सब लेट्स ऑर्डर 100 ऑर्डर कर के रखिए और क्या करना है हमको hang the dust ball painting outside the gas station कहाँ लगाना है इसको hang dust inside the gas station sorry inside इधर लगाना है क्या okay take it buy 2 shelves शेल्फ शिट पैसा है क्या मेरे पास हाँ है स्मॉल प्लेस 2 शेल्व्स इनसाइड गैस स्टेशन शेल्व्स भी How to rotate them, right? Yes. Yeah. Police paid and gave a tip. ये इंडिया में possible है क्या? Reverse if they don't ask, it's enough for Godspeed. Buy additional parking space via PC. बिफोर क्लीनिंग कहाँ रे पार्किंग इधर है क्या सॉरी ओह टू मच फ्यूल ही वांट्स Pretty much what I asked for. फास्ट इसको निकालना है आए हमारे पास बंडी है भाई अरे फ्यूल कैन लेके जाते हैं ना उसमें फ्यूल नहीं है do you have any job vacancy? Not there, re baba. ये फुल टाइम बोलते हैं फ्यूल डिलीवरी आ चुका है क्या रुको एक सेकंड ड्यू टू ट्रेडिंग नो इतने सारे सिमुलेटर खेल के अपने लाइफ सिमुलेटर ही लगेगा हाँ लाइफ इज अ सिमुलेटर गाइस फ्यूल किधर से आ रहा है
इधर ही हमारा कतर से दोस्त है ना हमारा. Thank you. You can shift JCB. You can shift JCB with boom. Shift JCB with boom. Timing of watch party 8:30. No match. Parking lot. भाई बोलते. Answer the call from uncle. Hey uncle. आ रहा हूँ. First customer then uncle. Pretty much what I asked for. सुना आ गया है. Hello. I see the business is doing well. I know. I'm calling to congratulate you on Hey, successfully Mausa getting it Leman, off the Bobo. ground. ये क्या 5 मिनट में You 5,000? can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope पहले you'll family find it बोला, within your फिर अंदर डाला, finances to सीधा. repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. I will pay. Don't have me wait too long now. मैं दिखाता हूँ. Bye. Hi. आ जाओ. This way. Hi. सामान is here. Supermarket see? Supermarket simulator, gas station simulator दोनों same game है. You want है? Okay. Okay. Left shift to start the game ah. Hey! Hey! What? क्या हो गया? I didn't do anything. అది వస్తున్నా ఆగా మారం కొడుతుర్రు. Top of the line job there. Guys, impossible है लोन पे करना. 3 मिनट में 5,000 how we can play रे? ये तो स्कैम है. लौड़ा का पे ऑफ कैसे पे ऑफ? मेरे पास तो कुछ है ही नहीं. Guys, impossible है पे करना. If you don't pay loan, what will happen? अरे उधर क्या है रे? उधर कहाँ जा रही है? Guys, where is he going? Hi. ఏడబోతున్నావురా?
కళ్ళు దొబ్బే ఆడే ఉంది కదా ఎంట్రన్స్. Whoa, super. You're amazing. I know. ఏడున్నట్టు దుబ్బోడు. వెళ్ళాను సార్. సారీ. Sure, this is finally got roti excavator fuel garbage. Good for our name ఏంది ఆడ పోతుండు కదా పో మా ఇప్పుడు ఏంది మా లే రోడ్డే ఇంకోసారి ఆరం కొట్టు. Guys, लोन NHK guys. हाँ ये क्या बोल रहा था, कुछ तो दिया ना इसने. In summary, we are looking at $30 to $100 of payment still pending. I dislike unresolved. लॉकपिक करना पड़ेगा कोई गाड़ी लोन क्या. हाँ हाय मैम प्लीज गो एंड बाय. आई एम कमिंग. 36 सेकंड्स के बाद गेम हो गया गाइस. I owe you one. తీసుకోకుండా పోతా నీ అమ్మ. సార్ ఏమో కొనండి సార్ ప్లీజ్ సార్ पैसा लो. 10 सेकंड्स में गेम हो गया गाइस. सेविंग करते मेरे को कुछ लग रहा है, फील आ रहा है मेरे को. टास्क कंप्लीटेड. आंसर द फोन कॉल. हो दैट्स ऑल. क्या डरते है क्या रे, कुछ नहीं है, हो गया. अंकल फोन करके बोलेगा मैं. Hey, punk! Where's our goddamn money? हो गया गाइस गेम. लेट्स गो टू वॉच पार्टी. डन सीन. गेम हो गया. अंकल आया गॉडफादर 4DX गेमिंग. हाँ वॉच पार्टी ओफी. मिशन फेल्ड सक्सेसफुली. हाँ ना, इतना काम क्यों किया फिर मैं. बिना सिगरेट लाइट की ऑलरेडी फ्यूम्स आ रहा है. रियलिस्टिक गेम गाइस. RIP क्या? Wake up, Sam. Huh? You got a gas station to run. Huh? Wake up. I thought I'm dead, no? क्या ट्विस्ट है ये? फिर से फोन मत करो, डर लग रहा है मेरे को. Hey, nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Huh? Thanks for picking up. Huh? We need to talk. There was a mistake. A Uh-huh. serious one. అవునా? You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on कोई your आके मार के जा रहा है, investment sorry भी बोल was रहा है. rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Oh, boy. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift.
It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational 300 అనవసరం కట్టారు అదే కదా 300 पे किया रे मैंने You're a resolute ऐसे तो lad. रोज मार खाता हूँ आ जाओ लोन पे करने की जरूरत नहीं है टेकिंग लोन इज नॉट अवेलेबल इन योर कंप्यूटर टेक लोन हैज टू बी रिटर्न फॉर लोन नहीं लेना है भाई मेरे को लोन नहीं लेना है मेरे को बिना लोन का ही खेलूंगा Have a nice day. Complete all challenges to be able to upgrade the gas station. Trash can full. ये लोग पार्क करके खाली ट्रैश फेंकने के लिए आ रहे हैं क्या भाई इतने के लिए मैं अपग्रेड वो सब क्यों किया यू गॉट न्यू ईमेल यही मेरा दिन सुबह उठो ईमेल गेम के अंदर ईमेल एक बंदा फोन करके मारता है एक बंदा ईमेल खेल के मारता है लोन बिफोर यू गो डाउन अरे काइंड मैन दाम नाम दाम डा 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 जो नेट से ना इंग्लिश कौन पढ़ता है बाबा कोई पढ़ के मेरे को समझो चैट में क्या हो रहा है जस्ट टाइप इन 2 words लाइक कट्टे कोट्टे तेचे दैट्स ऑल स्टोरी नहीं चाहिए लूट देयर कार्स लॉक पिक करो किसका इसका क्या नागेंद्र 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 हे नागेंद्र नागेंद्र How much do I owe you? नागेंद्र नागेंद्र नहीं नागेंद्र मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई डेनिस डेनिस फ्यूल लेवल कितना है गैस स्टेशन में కొట్టావు హార్ను సచ్చావు నా కొడకపో నువ్వు కొట్టావు హార్ను నీ కారు దొబ్బిందే मास्टर का था एनएच के ना नहीं आता मेरे को ट्राई करे क्या एक बार ट्राई करे क्या चैट नागेंद्र नागेंद्र क्या आई एम नॉट एबल टू ओपन व्हाट इज द सिचुएशन Whoa, super.
अरे नहीं आ रहे रे नहीं हो रहा है व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग गाइस क्या कर रहा हूँ मैं गलत स्लो करो अन्ना चेक स्लोली आना है व्हेन इट इज टर्निंग प्रेस टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है वो देख लिया कि बार हाँ लॉक पिक करते समय एक बार मेन्यू ओपन करके बाय मैं कैलेक्सर कर रहा हूँ करके वो चप्पल मारेगा आके पीछे से और सीरियसली ट्राई करते हैं गाइस ఏం లేదు చూస్తున్నా అంతే కార్ బాగుంది కంప్లీట్ ఆల్ టాస్క్ టు అప్గ్రేడ్ గ్యాస్ స్టేషన్ అప్గ్రేడింగ్ గ్యాస్ స్టేషన్ ఇస్ డన్ అండ్ గ్యాస్ స్టేషన్లోనే అసెస్మెంట్లో గేమ్ పీసెస్ Complete more objectives. क्या है objectives? का दे दिया क्या उसको? फ्री का दिया ना एक क्यों गाली दिया లైట్ తీసుకున్న దొంగతనం చేయాలి అట్లా ఉండకూడదు You're amazing. बस दाना हाँ एग्जैक्टली फ्री का दिया मैं इसका गाड़ी लूटूंगा ना ये आके इधर तक कहीं वॉशिंग बहुत यूज कर रहे हैं इसका सर क्लीनिंग सर लैंडमार्क डेकोरेशन बाय करो कैसे डेकोरेशन कैसे बाय करते डेकोरेशन लैंडमार्क किया परचेज लेवल टू अपग्रेड फॉर गैस स्टेशन कितना है कॉस्ट 0 हेवी ये सब क्या है फेंक दो बाहर వస్తున్నా వచ్చేసే టెక్నిక్ అవునా ఓకే సార్ దొబ్బేయండి ఇంకా Just as I wanted. Okay, what do we have here? No smoking. Stop motor. We can paint these walls. Use sponge clean lockpick which game? पता नहीं which game मेरे को
फुल ट्रैश कैन, यही काम है मेरा। क्या फुल ट्रैश कैन इधर फुल लेके आओ। नहीं, why am I not able to paint? I can't paint anymore. Oh, I can paint. Left shift for color choosing. ये अच्छा पचक। हाय, ये कलरफुल स्टेशन बोलते हैं। Super. काल कचरा वाला क्यों बहुत है ना। यस मैम, हाउ मे आई हैव योर सर्विस। ఈ కచరా పేకనికి వెళ్ళారా అవి అదే చేస్తున్నావు కదా నువ్వు, మందుకే వచ్చినావు కదా, చెప్పు, సిగ్గువాడ కూడా చెప్పాలి. నేను ఈ find a way to enter the warehouse, open the gates. Hey, we have new challenges, guys. Keep your warehouse gates closed, otherwise someone will try to steal you. इसके अंदर क्या है स्टील करने के लिए? ठीक है, the hell? Remove haystacks, make sure where is operational guys. చేద్దాంలే, మస్ట్ టైం ఉంది. Customer cash register coming, customer fuel coming. Top of the line job there. తెలుసులే వెళ్ళు. Super. फ्यूल ऑर्डर करना है गाइस, फ्यूल ऑर्डर करना है, डिलीवरी फ्यूल सप्लाई 200 मंगा लो. क्लीन कन्वेयर विद स्पॉन्ज. स्पॉन्ज कहाँ मिलेगा मेरे को? टूल्स क्या है स्पॉन्ज? what are new email upgrades. Appropriate tab able to say other construction work quickly. System नहीं पढ़ना है ईमेल्स, क्या करना है बोलो गाइस. आप लोग खेले ना गेम ऑलरेडी, क्लियर. आप लोग यूज स्पॉन्ज टू क्लीन कैश काउंटर. अरे वेयर इज स्पॉन्ज रे? यही क्या? ये नहीं ना, स्पॉन्ज कहाँ है? When you scan the items. अच्छा हाँ क्या? Okay. Hey, our fuel truck color changed. ट्रंक के पास जाके टी स्पेक करो. इसका होने के बाद करता हूँ. అన్నా రా అన్న తొందరగా, వెనక రంగు కొడుతుర్రు. Hold space bar to open truck. Be careful not to break the pin. You'll have to wait. Thanks. Shit.
मुंह पे छोरी, हाँ ज्यादा ज्यादा नहीं सोचने का, सीधा उसके सामने ही करना है. How much do I owe you? ఎంతో తంతి. ఏం కాలే అన్న వెళ్ళానా ప్రెస్ స్పేస్ బార్ किया तो So we have to do it slowly रे, slowly करना है. हाँ मुझे पापा. How much do I owe you? I owe you one. I can clean normally, no? अन्ना मतलब मत दो लोन. नहीं ले रहा हूँ लोन कहाँ लिया? मेरे पास पैसे नहीं, लोन कहाँ से दूँ उसको? ఏలే పెయింట్ చేస్తున్నా. పచ్చక్ पेंट इनसाइड वाला करूँगा पूरा करूँगा. अभी थोड़ी देर के लिए लॉक पिकिंग का काम पక్కన పడితే చేయొచ్చు. I was worried we'd be stranded. इनसाइड वाइट करो. वाइट नहीं करने वाला हो रहा है मैं. आई डोंट लाइक वाइट कलर ओनली. अच्छा पड़ा. Good job. Yes sir.
अच्छा దయ్యం వచ్చింది కదా మళ్ళీ. Have a nice day. ఓకే దయ్యం వచ్చిండు, వెళ్ళిపో. నేను దయ్యం ఫ్రెండ్స్లే. अच्छा वाइट कलर पेंट हो रहा है क्या? नहीं चाहिए भाई वाइट मेरे को. దయ్యం వచ్చింది కదా. Before. Have a nice day. నీకు ఏం కావాలరా? क्लियर करने का ऑर्डर करे तो बेटर है आई थिंक. Still on, no? Super. वेयर हाउस क्लीन करो कैश मिलेगा. लाइट लगाओ. कैसे लाइट कैसे लगाओ? लाइट है ना ऑलरेडी. हाँ वो क्लीन करता हूँ थोड़ा पहले इसको सेट करके.
One after the other, guys. One after the other. Pachak. Whoa. ये कितना? Guys, no pachak, no pachak. Yes sir, police sir. हो गया ना पूरा? ये भी करना है क्या? बहुत टाइम है रे। वो क्वेश्चन मार्क बने हुआ रहा है वहाँ पे कुछ मिल रहा। हाँ वहाँ पे जाना है। आई नीड टू गो देयर। Thanks. How much do I owe you? Have a nice day. चलो उधर का कुछ करके आते हैं। ये ट्रैश बैग इक्विप करके जल्दी कर सकते हैं क्या ये चीज़? नहीं, नॉर्मली डालना पड़ता है। बहुत सारा निकलना है। गराज डोर खोलो। गराज डोर खोलो तो चोरी हो रहा है ना। बाहर फेंक सकते हैं क्या? डस्टबिन में नहीं डाला तो क्या होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ओपन करके ऐसा फेंक दिया ना, क्या होगा फिर? एक और पेंडिंग है। कौन कर रहा है? Restore warehouse from main PC tab.
Order additional products for sale. Guys, मैं भूल गया क्या क्या करना है. You got new email इसकी mail की. The mails warehouse and deliveries. It's time to make the first purchase. Kiddo, last time I had products delivered to you. Now you was that. Rosalama is a blante. One more thing, remember always close the warehouse gates when you're not working around a place. A thief will smell any opportunity a mile away, so don't be reckless. अभी जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किया वो वेयरहाउस में आएगा कि इधर आएगा? Top of the line job there. अच्छा ये सब वेयरहाउस में आएगा क्या? Then I have to wait for the Hi. How much do I owe you? అంతే అంతే. Super. सुना रही है. Okay, warehouse में अभी है products. What should I do with them then? But these simulator games are addictive. अच्छा है ये game. Actually speaking, it's nice. कहाँ गया वो? Refill the shelves with the products from warehouse. Go to the shelf and interact with them to place the products. Have a nice day. शेल्स में रखना है, ठीक है. मैच स्टार्टेड है ना? मैच स्टार्टेड. कौन सा मैच है हमारा? 10:30 को ना, 8:30 को ना. आई एम नॉट वाचिंग सीएसके का मैच. आई मीन नॉट वाचिंग बोलते स्ट्रीम नहीं वॉच, नॉट वाचिंग. नॉर्मली आई वॉच. Whoa, super. कहाँ से लिया है? वेयरहाउस ना? नो सर्विसेज प्रोडक्ट्स.
पैसे नहीं है क्या मेरे पास? Whoa, super. Pick up for an answer. Uncle has some words for you. Chid raha minded. I see you're putting hard work into keeping your station running again, kid. Good, good. I wouldn't have it any other way. I just wanted to remind you I'm not the only one judging your performance. Sure, your uncle knows better how to keep a business going and wants to see you flourish. But my Genji versus approval only Sentinels का goes match start so हो गया? far. The real approval you need to watch out for is the one given to you by your customers. If word of slander gets out, you might even sell Egyptian diamonds for free, and nobody will bat an eye. Keep those customers happy. You hear? चलो सेव कर लो. Let's back to gaming. 10 मिनट है. गाइस क्या है, गेम चालू हो कि नहीं? मैं देखता हूँ, छोड़ दो, आप लोगों को पूछना भी बेकार है. If we take less out of the question, you know, if we think of it more as a sentinel, playing on the, even when Sense is not playing. चालू नहीं हुआ ना, क्यों बंद करवाया मेरे से? हाँ, क्यों बंद करवाया? नहीं हुआ ना चालू. मॉड कोई है क्या? टाइम आउट दो सबको. जिससे मैच चालू हुआ वो बोला सबको टाइम आउट दे दो. मॉड इतना डेडिकेटेड सा गेम खेल रहा था मैं. ये कौन सा हेडफोन है पता नहीं रे. Disagree. It's What actually a the name of the game. I mean, look, I'm Can you trying explain over what here. the segment is about? All right, guys. So Alonso here's is back. one Cutie is thing. back. I'm gonna read some spicy statements. And I wonder okay? what we're gonna do with those statements. And then what we're gonna do, mira, ay, Dios mío, oy. Okay, there we go. We got signs. All right, we got signs handcrafted that we flew all the Just way wait from to the airport. Americas. Sorry. Yeah. All right, so Famous location, Americas. yeah, famous one only location, only one. All right, let's go ahead and check out our first one. And it's all relating to the games today. So, Loud is going to make a lower bracket run. Agree or disagree? Chat, make sure you play with us as well. We want to hear from you. Strongly agree and Strongly agree. agree. I want to know what the agree GB, is I want you to about. hold up your sign too. Well, Hear me out. America's biased yours stats. are- Isn't that just sad to see? I look, I mean, come on. Okay. Yeah. Go ahead. You explain first, Ben. Yeah, exactly. Because you two very strongly Very agree. biased. I can You understand. I can impartial. understand one. I can say one. But PaperX is the kind of team that might come up with a surprise. We all know that. We've been there. Do not forget. You know, history is set to repeat itself. Fair. And I feel like Loud Fair. definitely has a way to get back into the match. But based off on yesterday, PaperX might be in that downside, but we Yeah. know that they won't go down just स्प्लिट because बैन they नहीं beat हुआ तो Loud. वन मैप So, सेंट्रल्स I का agree. पक्का है. I just BO don't 3 में strongly वन मैप agree. 100% your favor का मिल जाएगा. Right now, and I don't think PaperX is there in their current form. Okay. I think the match is going to be a very close. I would kind of put it up to almost a coin flip, but I lean towards Loud's experience here, which is Yeah. why I believe that they're going to be the ones to come I'll in tell that you lower what, though. bracket. I wouldn't know what to do with my hands, my body, or nothing if PaperX walks out with. I mean, but the thing is, it's PaperX. It's possible. It's That's the thing. PaperX. That's why I didn't strongly It's- agree. And if the script is real, they have to get second place again. So. Oh, the script. Oh, Brennan's Eye Show. All right, well, let's go ahead and check out our second one. It's Okay. going to be Forsaken will break the record for most aces globally today. He's 2 aces away from doing that. Do we think he's going to do Disagree. it? Agreed. Okay, Disagree. come on. Disagree.
As someone who just Though loves aces the impossible Valorant, एक I really match में. hate to see aces because it really shows that the gameplay is degraded. Okay. No. Okay. and you disagree? Oh, Mimi, you know what? Live your truth. I I'm living strongly it. I'm living disagree. it. I think that the level for both of these teams is too high for that to happen. Somebody, and just based on those fundamentals, Yeah. just based on She's those spitting. fundamentals, he will be traded off sooner than he gets the ace. Also, Yeah. if he gets greedy for it, they'll throw another like Just- 5v4 just started saying, guys. around. Just saying, it could happen. Pistol It could rounds. happen if Yeah. someone Go was around. going to That's do why it. Mimi went on the. I'm just saying, my guy pops That's off. why I was on both sides. Yeah. Hey, right, look at you. Okay, now this next one is going to be a fun one, all right? Gen G have a good chance to win their first major title at this event. How do we feel? But Loud, I mean- Sentinels, Gen G, I think they're all in such similar form. I think it's so close. I favor Sentinels, but I think it's very possible for Gen G to win today. I struggle with this statement because I would rate it mild, you know? Yeah. Like, I think that Sure. any result for Gen G after making it to here is already good enough. And even if they don't get the But title what of sign winners, do you have? No, come Oh, on. boo. God, Agree. I know, I mean, I yelled at her for that, so to be I fair. already got yelled at. It's time, No, it's time for me to trickling yell down. at you. Yeah. Okay. Trickle down yelling. That Okay. works famously. I have a am good chance, yeah. gonna go with disagree. Okay. Unfortunately. Godspeed, आ जाओ, watch party करते हैं. The reason why I'm not saying strongly disagree is only because there's always that possibility in my mind, especially with how they've been playing. But I just feel like Sentinels is really just feeling it I'm right kind now. of a It's scary. turncoat here. You're a turncoat. I think the map pool works well for Sentinels today, especially they're almost Yeah. guaranteed to get to Yeah. play Split or Sunset. I think both those maps are going to be a gimme for them, and I really see it being highly likely for them to pick up another in the pool. And then I think I agree with that one. the team who wins this match today, is so likely to win the grand finals. Because Yeah. as we already discussed, Totally. Yeah. double ban, extra prep time, that is so important. I think it's unlikely, but it's nowhere near impossible, especially if they win today. All right, so we have time for a fourth one. This one would have been on the chopping little block. treat. Nice. But I'm curious, so let's see what we end up getting. All मेरे right. को ऐसा क्यों The लग रहा है कि finals Gen G will be versus, a PRX finals होने वाला है. regional rematch. Whoa! I mean, but which way? I mean, I think I know the way. Which but way No, do no, you no. think? You said regional rematch. You didn't say what way. So strongly agree. Either one or It's or the wait, other. it's a 50% chance. yeah. It's Okay. 50% chance Yeah. they're right or wrong. Oh boy. Wait, is no, that how but- percentages work? Chad, is this Yes. true? That's exactly how it works. I know a lot about numbers. I Sen strongly versus agree. I PRX think होगा. that especially I don't think so. Sentinels, Sentinels after versus the Gen G. pressure that they were put on yesterday, having such a strong start, making it into 2 overtimes and being able Here's to... your American visa. Congratulations. Oh, thank you very much. You- This is my green card? Yeah. It's your green sign. I don't know if that's how that works. Give it to I me, know Alex. this is all over the place because they said that they were going to go on a run. CSK got 2 wickets already. Watch. Me, when I देख रहा हूँ. contradict, honestly, मेरे राइट साइड को आप लोग का चैट है, लेफ्ट साइड को It's मैच है, contradicting इधर ourselves. वॉच पार्टी है, सब कुछ है मेरे पास. So the reason why is because I would like to see a non-regional matchup. This is more what I want versus what I think will happen. But hear me out. We're getting, right now, today, we're getting seed 1 versus seed 1 and seed 2 versus seed 2. Is Correct. that not good enough? It is. Nothing's it is. ever good enough for him. You I know, don't know what that I'm means. just. You guys are going to break me. This is too much for me to handle. Okay, folks, we asked you earlier in the day, well, just like a couple minutes ago, Massacre fan poll, and the question was, who do you think's going to be going to the grand Sentinels finals? will never lose a fan poll. Yeah, I feel like, you know. You hear that? That's people cheering for Sentinels winning Yeah, the fan poll. I'll take the 71 though. That's pretty strong. But I do think though, if we kind of remove the funnies from it for a second, it does make a lot of sense, Sure. right? I mean, Kukuka, what we've been seeing from this Sentinels team has been CBET లో so free seat ఇప్పిస్తావా? impressive. The way that they've been able to ENKP put నా this కాలేజ్ lineup అదే together and really not just find an identity, but find camaraderie, I think has just been so awesome to watch. I strongly agree. I also strongly agree. With what you're saying, completely based, Alex. But hear me out. I think that for today, I'm going to double down on Gen G is doing a quiet round. They're literally Fair. motivational quotes. They want to keep the expectations. As I said, any further than they can take it is already a huge win for Big them. odd I wanna see them 1 take it. out. Narrate Well, 10 let's go ahead T-bone and find out आसपास. where we're going to be आसपास. playing, and well, let's go ahead and take a listen in for our map I will selection. crack it and give blessings. Welcome to Map Select presented by Omen. Both of these teams came into this match with the same seed and the same record. So therefore it was a coin flip that was done before this that ended up being Sentinels Team A, Gen G Team B. So we will jump into the pick ban phase. Sentinels, your first ban. Ban Icebox. Ban Icebox, your ban.
Then sunset. Sunset. Map number 1 from Sentinels. Split. Split. Side on split. Defense. I'll take. Attack. And Oh. map number 2. Ascent. Ascent. हाँ नया मैप लगा रहा है क्या? Ascent చెప్పు అంత ఆశించకు. ఎట్లా పెట్టినా బొక్కేనా? లాజిక్ ఏంది? अरे सपोर्टिंग जेंजी ये टी शर्ट पहन के सपोर्टिंग जेंजी क्या? इधर आओ रे तू इधर इधर कैमरा इधर घुमो इधर అన్నా వాళ్ళు చెప్తారా అన్నా ఏంది వీటోనేది ఫైనల్స్ కాదు. Lotus. Lotus. Side on Lotus. Attack All obviously. right, next set of bans sitting with Sentinels. You have Ascent, Bind, and Breeze. Ban Ascent. Ascent Ascent, ban. you're banned. You have Bind and Breeze. Ban bind it. Ban Bind. Map number 3 by default is going to be Breeze. Sentinels, side on Breeze. Attack. Attack All right, good luck to obviously. you both. Thank you. Split Lotus Breeze 2-0 लग रहा है. A lot of deliberation there. We don't have a lot of time, but I want to break this down real fast. Split first map. They had to 2-0 pick लग रहा है, guys. Sunset or Yeah. Split. Sunset is a map Genji plays way less of. Godspeed, I think आ जाओ. Split is going to be so Discord आ जाओ. hard for them to win. Chill करेंगे. If they're to win this series, Genji, it has to go to Breeze. Yeah, exactly. And when we talk about knowing the teams, knowing the fundamentals, a split comp with the double duelist is something that you need to know to a T. RCB 3 down. देख रहा रे बाबा. Kohli is still there. Overall, takes a bit of an edge for Sentinels. Lotus is the Anna, bigger నేను Genji, వస్తా. but it's ఎక్కడికి still వస్తా? a scary map. Both these teams play that same standard Fnatic comp with the fade, with the raise, and honestly, if they both execute on it incredibly Anti-strat well, बहुत I think किया they're the होगा, two कुछ strongest तो है. players नहीं, on नहीं. that map. हो They're जाएगा. still मैं left बोल in रहा हूँ the ना 2-0 है. tournament. So that's kind of a coin flip. Split. Send This is gonna be 2-0. such a tough series for Genji. It's going to be tough, but it's definitely this is if I could choose just 2 maps. हैदराबाद का मैच देखने आ गया ना. CSK fan हैदराबाद का मैच देखने की जरूरत नहीं है. I know that Sunset was out of the question. Yeah, well, it looks like we've missing, got our T-Bone's gift, and Bund. This is going to be incredible. But folks, let's get this show on the road because we have great matches on the table. It's grand finals on the line. Genji versus Sentinels, Paper X versus Loud. Day 7 of Masters Madrid starts right now. అనుజ్ భాయ్ వస్తున్నాడా? Hello everyone and welcome to day 6 of Masters Madrid. It feels amazing to have a tournament like this, like Valorant Master, right near my home. I dream about this and now it's real. I'm so excited. There is no chance, there is no hope. Sentinels, inevitable. Sen look incredible here to take Anna, pull me if you can see me. in the upper finals. I feel good about our win against Loud. I think as a team, we played What's happening? we showed a good version of ourselves. नमस्ते अन्ना नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. आपको क्या लगता है वीटो सेंटिनल्स के फेवर में था? सेंटर्स के फेवर में लग रहा है मेरे को. मेरे को लग रहा है पूरा जेंजी फेवर्ड है वीटो. Split is Sentinels का map. हाँ. They are very good in They play this very Lotus. slow and methodical, but at the same time they have Actually, हाँ, both teams but- are good in Lotus. players. Exactly. ब्रीज का ब्रीज में ये यूरो खेलता है ना? नहीं. Genji definitely look like a tough opponent. What does I think Force? Jet. That's not our problem. What Force does this second tense played play? Yoru. नहीं नहीं. What does tense play? Normal Jet KO.
एक ही मैच प्ले बेसिकली 2 मैच are balanced. Yes. We are supporting Sentinels. I'm तो अच्छा है. Jason Susanto. He's the goal. स्प्लिट भी जेंजी अच्छा खेलती है अन्ना, तो It's really मजा good आएगा. actually. देखते हैं. सेकंड स्क्रीन पे आईपीएल चला रहा है ना. हाँ, इधर आईपीएल देख रहा हूँ, इधर मैच देख रहा हूँ. When we go our bracket, अन्ना मेसी और रोनाल्डो, none of the above. very fast, and hopefully in our bracket we will show you guys on our improvements. अनुज भाई कमिंग मैसेज किया रे, डोंट Falar em bracket é difícil, deve ser frustrante para vocês assistirem, assim como é pra gente perder um jogo tão close, mas faz parte, somos humanos, a gente também erra, a gente vai consertar tudo que a gente fez de errado nesse jogo para tentar ganhar a Paper Rex. मेरे को तो लगता है यही ग्रैंड फाइनल्स Like होगा. us, they really strong. जेंजी सेंटिनल्स लग रहा है मेरे को भी ग्रैंड फाइनल्स. हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है. A gente But there I have a doubt, does Sentinel have a map pool that can give them a trio? I'm gonna go all in this match, and I hope you guys enjoy our gaming. That I am not sure because अभी तक जो भी है उन लोगों का 90% was 2-1s. हाँ. So not easy. I mean yesterday अन्ना, to be honest, Sentinels ने Icebox अच्छा शुरू किया था. They started well, and then that one round where they should not have overpeaked twice towards the B side, that kind of gave it away. And once they lost momentum, 𝘼𝐿 just, I mean, amazing plays by 𝘼𝐿, to be honest. इसके बाद Prediction. It's going to be 2-1 in favor of Sentinels is what I want. Let's see. A grand final spot is on the line. I feel if it goes to third map, it will be Genji. Looking to do something massive. But if it goes, if it's 2-0, it can be Sentinel. Fighting for a crown yet again. And for Genji, it's not just about establishing Pacific as a strong region, Kukuka. It's about Genji establishing themselves as a top-tier team in Valorant. Exactly. I'm calling her Alonso. Alonso. हाँ, उसका नाम काकुका है. Kakuka Alonso. Spot in the grand finals. They want to be the top one out of the entire world. And of course, the journeys have been a bit different and so similar at the same time, maybe. The last time that Sentinels played a Korean team in the upper finals of an international event, it was over 1,000 days ago. Sen won that. They went on to win Valorant's first international LAN and haven't made it back to a final since. So much about this team has changed since. Anuj is coming. He's having a ball. But he's a completely new player from the star-locking Jet way back when. The difference as well for Genji is wild. Back then, it was solo playing alongside Lockpicking, who is now क्या इधर वॉच पार्टी होने वाला है? क्या इधर वॉच पार्टी के लिए मामा आया है? Yes sir. 1 घंटे में क्या गॉडस्पीड बिस्तर में जाने वाला है? नहीं 2 hours 10:30 11:30 ठीक है 10:30 to 11:30 is the right time. Done scene. फिर पूछेंगे what तो मैं दोनों मैप्स के लिए हूँ. अरे wonderful. फिर पूछेंगे what is it that Godspeed tells his team and also his partner in bed. होल्ड करना सीखो. नहीं मामा, नाम जो है Godspeed, वही बोलेगा. अन्ना, उसका तो सिंपल आंसर है रीसेट. Hey, your answer is in the name, no? Godspeed. Does it keep? छोड़ो यार, बहुत जल्दी हो जाएगा. थोड़ा 10:30 11 बजेंगे, बच्चे सो जाएंगे, फिर करेंगे सब. अब तक PG-13 टीम है. वो हमको भी पता नहीं होने वाला है. They haven't gotten the same fan attention as a team like Sentinels. They haven't shocked in that same way, but they have consistently. बजाज भाई, I might have a coaching tip for you. बताओ भाई. आपकी टीम में कभी ऐसा हो कि कोई प्लेयर माउस बहुत जोर से पकड़ रहा है, उसका एम हिल रहा है, तो उसका सोल्यूशन मैंने निकाला है. ओके, मैं आपको फोटो भेजता हूँ. And it is apparently helping me a lot. लेकिन all seriousness, I'm not even kidding. हाँ, मतलब I am also listening very seriously. देखो मैंने WhatsApp पे फोटो भेजा.
So do you know the story where Adam Gilchrist World Cup final में 2007 का हाथ में स्क्वॉश बॉल डाल के खेला था? हाँ. हाँ, तो you know what the logic was, right? I understand. तो ये मैंने थम्स अप का बॉटल का कैप लगा के रखा है. भाई साहब कल मैं स्ट्रीम पे खेला प्रीमियर, जो गांड मारी है मैंने. आप लोगों का स्ट्रीम लैग हो गया क्या? Of course, 8:30 on the dot every day. मेरा तो अटक गया पूरा. कौन सा YouTube? नहीं, Twitch. तो अन्ना मैड्रिड से अन्ना लैग हो रहा है थोड़ा. मेरा तो नहीं हो रहा. क्या सूरज डायरेक्ट स्ट्रीम आ रहा है मैड्रिड से? रुको मेरा डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ है? लगा है नहीं क्या? वो फोन करता हूँ रुको. But Bajaj, actually try it someday. Don't even need to stick it. मैंने Just watch ask the party player to along hold with it you in the guys, palm. please. Venka, आ जाओ. What is that question? T-Bone Discord आ जाओ. Track करता हूँ. But basically just hold it in your palm. हाँ, वो होता है. मैं कको का चाहिए मेरे को. ये लोग नहीं. पहले का हैक था कि लोग रुमाल रखते थे. हाँ. समझ में आ गया मेरे को देखते. That is good. बट ये मेरे को पता है इतना टाइम से मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. बट देन मेरे को अचानक से याद आया गिलक्रिस्ट का. मैं बोला यही करते हैं. Let's go. Map 1, round 1. Sentinel. भाई सेंटिनल स्प्लिट पे कल क्या तोड़ा था, देखा था क्या? आज भी देखते भाई जेंजी ने कल पेपर एक्स को जो तोड़ा ना, आज तो भाई बदला. Starting it out on their opponent's map pick with Lotus up next, and as we saw in the video, it'll finish out on Breeze. Gen G didn't want to pull Bind into the mix. Venka, once you are in Discord, let me know. I'll drag you. Back in the day. As we start out the pistol round, Sentinels on the defensive side, 2 ghosts and a spread defense, but they're looking to crunch on mid after contact for Gen G. Wearing Sentinel's jersey also, remember? अरे देखा नहीं, मैं तो लाल हुडी है वो पहन लिया. सेंटिनल जर्सी तो नहीं है गाइस. जर्सी पहन के नेक्स्ट PRX का पहन के आऊंगा मैच होने के बाद. डैम भाई. नहीं भाई गाइस, हमारे पास तो लाल टी-शर्ट और ब्लू टी-शर्ट है, वही पहनेंगे. हुडी सॉरी. Ended up coming back in this tournament and demolishing them on it. Meteor though in this round, he's just looking to sell a bit of a bruise, and he has done. A push coming down mid, but the rest of Sentinels are all rotating over towards that B site. Not a member even in the right half of the map. This is a pistol round that plays out a lot less. Guys, Walking Simulator 2024. Waiting on mid. Nothing this is the best. Fake info on A is given away, and the space is taken. Very nicely handled the setup for a post-plant situation. Sentinels send in a dog love it. and they're going to deny the plant altogether. But in the chaos, Texture's able to pick up one, and then A buys them space. They can secure the site now, get a plant, and look to pop after Meteors. Also snuck up behind Tens. Didn't matter with 𝐶𝐈𝐍𝐿𝐒 shutting him down, and these other players now locked in towards the spawn. Up top is 𝐶𝐿𝐒 is alone, but there's still some fight left in Sentinels. They don't want to give this round up just yet. Yeah, had to be a fallback from Gen G. Guys, Venka bot is here. Can you please hashtag OP? Hello guys. Hello Venka. How are you doing, brother? I'm doing good, bro. I'll do better if Sentinels to get back into this Yeah, one. bro. Running out of time. लगा है क्या कुछ? Try and isolate one of these jewels, and with the spot already Oh, coming in, the rest bhai, of he's the a lineup minor. He's a minor. It was a loaded question. He's been fantastic at clutches, but it's not happening this time. Gen G, they will take the pistol. And again, just the patience shown by this attacking side. You saw as भाई we कल said, जॉन क्यूटी भी क्या Sentinels खेला था भाई, operate एकदम डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल भाई. The fake is made by Gen G, making noise on A, taking space, and they walk into B for free. But post-plant, the idea to just send the 2 players and spawn first and map, sit yeah. there, waiting, running the clock down. John QT couldn't go out and fight with his teammate because he's worried about a flank coming up through heaven. This is a really nice pistol round from the side of Gen G. I do like Sentinel's ideas as well, because they laid a trap. Just Gen G were too wise to fall into it. Now on the attack side, you know, it's an interesting buy, Tom. I have to say, Texture is surprising me, because I'll talk all day long about the benefits of playing this Outlaw. I just don't expect to see it on the attack that often, but he's found success with it right off rip. Nobody on the defense has shields, so this weapon, even if they have light shields, which they don't, it's still going to be an This camera is 2 OP, shots, re. very fast movement, and a quick reload. It's a round as well, though, where realistically, nothing really for their opponents to भाई be playing साइफर में with. इनसे घर पे जाने में भी डर Sentinels लगता है भाई, पता नहीं किधर कैमरा saving up for the next round. It does mean that you want to keep it clean. Meteor, the only player that can really go down without being too much of a detriment. And obviously getting that extra information is a decent start. John QT! That's the Sen spike Classic. down for John QT as well. This is starting to get By worrying. Sen Classic. Well, Texture's down to 13 HP as By well. Texture's 1 HP. You know, he's pretty much
in an even fight, Heal होगा. regardless of who takes on that. Never He mind. needed to come through. Luckily, there's been some time. That clock runs down. The health goes back up for Texture. Spikes down. This is not looking good. Munchkin there to fight with him. Heaven But का they क्या have scene to है, walk boys? into the open to take that spike into a big crossfire in play for Sentinels. Sentinels Instead, got they're gonna Heaven. take some space in Heaven. Get that little bit of extra space to play with. And here comes a snake bite. There's no way, Come right? fully into the corner. Genji got this. Genji got this in the back. नहीं हो गया. Ah, bro. Oh my god. Venga bhai. Excuse you. Sorry. तरस्टी बोलते. Now 1-1 after winning the pistol. अच्छा है वेंगा भाई, आपको गैम्बलिंग एडिक्शन नहीं है. Instant response with the Mastercard. हाँ भैया, बहुत अच्छा है. Maybe some वरना jitters for Gen G because फ्यूचर ना that's a थोड़ा heavy ब्लीक लग रहा है. investment. 4 players with rifles. नर गॉड्स भी जानते लोगों को जिनको है. गाइस इतना भी कैंडिड नहीं होना है. That is an uncharacteristic error for someone like him. भाई लेकिन कैसे निकाला भैया? Seven classic buff. After the switch to Omen, I feel like he was fantastic. And that is a really rough way to kick off your attack. ये जाने के लिए अभी 2 बार भाई सोचेंगे. हर राउंड में जो भी प्लेयर अच्छा खेलता है ना, हाँ. उसका सेटिंग्स खोलता हूँ मैं. Now Sentinels have the same Wow. chance. Prosettings.net. हाँ prosettings.net भाई सबका सेंसिटिव मुंह पे याद है मुझे. लाख्या 0.33 QT 0.2 800. Zekken 0.175. Oh no, QT is 0.2 1600. Never mind. You're going to need a trap Now there, pay which the can baba. obviously be broken by some of Texture's utility. 0.2 1600. That's a good sense though. It is good but मेरे से नहीं होता ना भाई. 0.3 के ऊपर थोड़ा भी जाता है ना मेरा वाइब्रेशन चालू हो जाता है. Very strong for Sentinels. I don't imagine there's too much trouble. Close range engagement. Catches 𝐿𝐶. Oh no, not again. Looks like I should have kept my mouth shut. We're all of a sudden in a Boom 5 versus 3. shakalaka. Showstopper popped and fired at random. It doesn't land, but they've got Bhai, a huge Sassy advantage to bhai, play with here. Sassy bhai, needs to hold strong. let's go. He's in a good Never position, mind. though. Already dropping a first, but the trade is instantaneous, keeping that huge अरे advantage. बाबा round. What a chaotic start Munchkin to अभी this उनका map phantom already. लेके मारेगा. पूरा रिवर्स हो गया क्या? The delay already put into position. Munchkin in a good spot, has a teammate alongside him, may not even need it, and it's going to be Back-to-back 50s. No. straight back, getting their money's worth in the early stages of this game. They bought hardly anything here again, Tom. They bought more than Sentinels. That's true. No, Anuj bhai is coming. This is a hell of an argument for the bundle, but there's a few sheriff shots landing there with the classic assists on the back of it. Just absolutely insane to see this in the first 3 rounds. That back and forth, that was 𝐿𝐶's orb as well. The Huh? back down. Second round में ही. पहले 2 मैच ऐसे ही जाएंगे. So that means that he got Do you miss caught this by comp his God own speed? utility. Again, it's an error from either side. Both I miss it, in bro. the early stages have made mistakes. All right, Oh, Tens. nice shot, Tens. That's one hell of a start. They've still got Angie, a couple nice of shot, rifles. Tens. It's definitely not the prettiest of buys. कितना आगे हो मेरे भाई? but Even still, somehow the team with the weaker has got off to a good start. Well, that's it, because they happen to take the fight up against one of the players who has that rifle. And John QT, other side You of the saw map, is Genji's sort of the comp phantom. that Loud Now also played? actually swapping over. To be, कौन से map पे? towards A. यही. But for the side of Sentinels, नहीं. those 2 rifles, they Sorry. stand a good chance in any fight. Those pistols, though, they're left to do a lot. So you're replacing Cypher with an extra controller. They want to be playing this off the utility. That's the nade going through, forcing them back, Info तो doing है some रे बाबा. damage too. Karen's now down. Watch to them all 8. turn around. Another thrifty. Actually thrifty नहीं है, half पाया अभी They तो. got a rifle, but because of that neural theft, they used it Nah, to check bro. if anybody was They're holding walking a in. rifle. So that's now a third Tens gun भाई picked up from खड़ा है Sentinels. बुलंद. They have boosted this Vandal quite a लेके. bit. 40 seconds left. ये क्या लाना क्या इतना ऊपर तो मैप में जिंदगी में देखा भी नहीं है भाई. ये बैक साइड है, तो बैक सीधा साइड पैड में है जाएगा ना. अभी. तो समझ गया बट क्यों भाई? ये भाई 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 ट्रैकिंग रूटीन नहीं किया उसने. ट्रैकिंग रूटीन नहीं किया. ये देखो जेलिस देखो. There is no way. क्या है भाई? How? What is a trap? For 𝐿𝐶, he's being wrapped on. At least a chance to shut him down. That's a भाई दो भाई. बंदा लेके गया उधर से. Go. It's a connection with 12 Tens seconds. भाई बेटिंग. And then the spike's gone up. Another thrifty. तीन भाई क्या है? अभी guys, no prizes for anyone guessing this You're round. never going to believe this, but that was a Mastercard thrift. नहीं ये वाला तो सेंटिनल जीतेगी I guys. don't know what's happening. ले Genji That's the जीतेगा first ये. one we've seen so far. No, I believe it's the third. No, how is This is nobody such able a to break the peculiar trap? game. Now, obviously, Unbreakable है क्या teams वो? are
still sort of नहीं building breakable है. ब्रेकेबल है, बट वो हक दिए वो लोग. No, I think Viper wall भी थी ना उधर. So paranoia सब कुछ आ गया वहाँ पे. बेचारे का MC पीछे हो गया वहाँ पे. भाई प्लीज सेंटिनल्स, प्लीज एग्रेस दिस राउंड. थोड़ा एग्रो खेल लो रे बाबा. नहीं खेलेंगे. Mamba News and coach. भाई मैं तो भाई बोलो तो भाई चैंपियंस जिता दो भाई. डीमन 1 को किसने कोच किया? किसने? पता नहीं. आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा. They call me Potter, bro. My other name is Potter. Unfortunate, but these things happen. There was a combo of util again thrown towards them, making it that little bit more awkward. They try to take some fights. That's not destroyed that. Yeah, I'm starting to think Sentinels have got some sort of trap abuse going on. Trap abuse. They're not taking Very the bullets. interesting choice of words. He's just about to walk in. Excuse you, Sassy? ऐसा कौन walk in करता है Sassy? Before anybody really realized. Tens up above. अन्ना नहीं आता ना इनको खेलने. अपन चलते चलो. But this will be an afterplant. This time I don't think there's any denial. Meteor hasn't stopped. Right का ID नहीं है. He's still going forward. It's a lot of space to take. A position you usually Casting करो मांबा भाई. कर रहे. He's also there. आज से content creator हम छोड़ दे talent. There it is. The step was heard. But luckily, those players are able to round the corner just in time. Passion follow कर लिया. अब पैसा follow करेंगे बाबा. एक second. I come back in 2 minutes. Break. At least in his mind, but the paranoia Poor is kept Baba. in the back pocket. Now burned up to go towards. Zealous. Here comes the blast pack from Zekin. He's towards the site. Zealous पूछ रहे हैं जेवलास का. अरे बाबा मंचकिन. Doing so much damage. It looks like Munchkin was able to catch an angle, and with the snake bite landed, that's buying a little bit more time. Another has to round. run for the hills now. There's no time left with another foul. Arey. Gen G take the lead. It's not quite a MasterCard Thrifty, but it is a Red Bull clutch. the script really is just paying dividends at this point. A round break back for Gen G. Coming off the clutch, again, we talk about Sentinels in these retakes, and they're phenomenal. Just being able to come in from behind, isolating these fights, and even after the aggressive positions that were held. But as Munchkin, the leader of the team, someone who's been highlighted so many times by different members of his roster to help elevate, well, this time, he's done it individually. Get out of my way. Wait, they got ecoed again. Popped. The pacey side Yes. of this round looking to Not completely equal. Genji ने buy किया था थोड़ा बहुत टूटा हुआ. भाई बोला था थोड़ा aggro खेल लो. सुनते ही नहीं मेरी बात. अरे क्यूटी भाई क्या खेलते हो बाबा? Oh, I thought he might have had that for free, but the cage blocked off Cutie just bhai. Not a match. give him that little bit of space to work with. भाई क्यूटी भाई थोड़ा और हैंडसम होता ना मेरे दिल जीत लेते. What do you mean? नहीं मतलब खेलते अच्छा है. Look at how much they're keeping in their back समझ रहे हो? pocket for the efficient नहीं brother नहीं समझ मेरा limitation थोड़ा. PC utility that the big ones online. आपके standards थोड़े ज़्यादा शॉट मारा रे हैं. मीटियोर ने. Meteor turns. The blades are used up. Look, they're not finished pushing. Sassy bhai, Lugia good trade. went Sassy bhai, charging nice. forward. Even though his teammate had fallen back at a little Excuse you? from Genji, but Munchkin capitalizes on the chaos. भाई एक्सरे होता है क्या इनके पास? Keeps having control. नहीं, That's a huge एक्सरे कहाँ? position इसको for them to कहते play हैं with. And now server, Sentinels local even server sends पे. Sassy back to reclaim it, buying so much time. As A only lot of big words, but Junkies I do on not the understand side anything, flanked out. Papa. And मैंने क्या destroyed बोला? by Meteor. The clock is running down. ये देखो भाई एम नहीं, पर जेंजी ने क्यूटी पर जेंजी ने फाइनली कन्वर्ट किया. एक राउंड कन्वर्ट किया जेंजी बाबा ने. insane हाँ. insane. Finally seen a second round in a row after what was a crazy back and forth. It is Gen G to come out on top, but again, it was close. And 𝘼𝐽𝐿𝐻 comes out with a लगातार 2 राउंड मंचकिन की वजह से जीते हैं एक तरीके से बोला जाए The तो. way that he's been playing, the way he's been punishing them. कि पिछले राउंड पोस्ट प्लांट में वाइपर यूटिल से थोड़ा डिनाई किया और फिर इंपॉर्टेंट फ्रैग लिया और इस राउंड भी डबल फ्रैग इधर. 4-2 in the lead. As said, this has been विराट कोहली RCB 77 for 4 विराट और मैं देख रहा हूँ भाई लेफ्ट साइड मैच है मेरा गाइस. You guys can't see but I can see the match. 4 back-to-back. I can also see bro. सारे स्क्रीन्स में सारे रख के देख रहा हूँ मैं. डैम रे बाबा. As said, Gen G have been so fantastic at adapting. They beat मैं नीचे EDG, जाके they beat PRX का Paper जर्सी X, लेके they've been आया. evolving throughout जब this तक मैच tournament. चालू हो जाएगा नीचे सो It's जाएंगे. not going to be easy just because this map is solid for Sentinels. We are ready for PRX match as well भाई guys. किसका मैच है आरसीबी वर्सेस CSK. CSK. Around mid. Looks like the rotates are underway. Wait Anna, who do you support? Swinging all the way back. Friend का team है. I have to obviously support CSK only. सीएसके बताओ भाई. No.
some ultimates to ये back हुई ना them up. बात फ्रेंड का टीम है तो दूसरा टीम कैसे Mushkin's सपोर्ट game करे? has been fantastic just last round, the way he played and controlled Nice. Heaven in the late game, allowed that spike to explode. लाइन अप लैरी देखो भाई Thanks to his hard work, Seekers as well, but they're not used. Instead, it's going to be dashed straight out in front of the Seekers. Meteor, though, he's caught. He can't quite see anything for a moment, but as the Cloudburst fades, he's able to find a target. Nice headshot, but the wall gets in the way. Sassy holding on to that barely. Eventually shut down with the Viper's pit in. This becomes a hard round to win, but a showstopper pop. It's going to be a gamble from Zeki. He has the biggest spot, and he's found Karen, but landed with his हाँ, but not for long ना. a quick execution. भाई ये बंदे का कुछ तो झोले रे बाबा With Meteor down, there's a chance that's the hat. क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, अल्टी वेस्ट हो गया क्यूटी भाई. लेकिन कुछ भी मंचकिन बहुत स्मार्ट खेला वेटेड अंटिल द लास्ट मोमेंट स्पैम एक और आउट हो गया वाओ ब्रो आरसीबी के 4 डाउन ऑलरेडी भाई आरसीबी एंड शोकिंग 5 डाउन क्या 4 डाउन नो 5 डाउन कैमरन ग्रीन आल्सो गॉन गाइस लगता है एलिस पेरी को कैप्टन बनाना पड़ेगा इधर भी I mean they've won already one title काफी है इस सीजन के लिए. Knowing that his opponent would eventually try and catch him on the ping. Correct. It has been भाई राइट क्लिक पे ग्रिप लगा के रखा है खाली. हाँ मैंने भी करा था कुछ टाइम के लिए. I don't know लेफ्ट क्लिक उसको जी प्रो यूज कर रहा है ना जी प्रो का लेफ्ट क्लिक अच्छा है काफी. राइट क्लिक अच्छा है उसका. उसने राइट पे बस ग्रिप के लिए लगाया. भाई मैंने माउस पे क्या क्या लगाया मैं बता दूंगा ना तो आप नसे काट लोगे. मेरे माउस पे कुछ नहीं लगा. मेरे माउस पे थम्स अप का बॉटल लगा है. माउस पे थम्स अप का कैप क्यों? अरे मैं माउस बहुत ज्यादा टाइट ग्रिप कर रहा था. So to not allow myself to grip my mouse too tight, I put a cap. अन्ना वो 1.6 में रुमाल रखते थे ना लोग फोल्ड करके. वैसे उसकी जगह बॉटल का कैप. उस टाइप्स का. And then coming back and being eliminated by them later Insane, on. right? Seems to improve though. That's the thing I want to give here. Yeah, give credit to him as someone leading. And he's leading by example right now. He's forced Sentinels into a position where they're taking a pause. And again, you look at some of the results. This is a team that, well, they played loud a couple of times in their last 4 matches. Loud only managed 4 rounds and 3 rounds. So, GG already रिद्धिमान साइज also playing, you know. ऐसा सवाल आपको कोई पूछ लेगा तो बुरा नहीं लगेगा? नहीं ब्रो अभी तो चालू कर रहे खेलना. अरे दिनेश कार्तिक भाई उम्र कितनी है आपकी? 17. मैं यंग ब्लड भाई. इतने साल से दिनेश कार्तिक खेल रहा है. 17 साल की उम्र में तो हम भाई धूल खा रहे हैं. मैं भी धूल खा रहा हूँ. अरे ब्रदर ऐसे नहीं. हाँ आजकल वोटिंग बहुत लोग यूज कर रहे हैं. All effect भाई. Physics पढ़ लो. एक मांगा है कीबोर्ड देखते हैं क्या सीन है उसका. What a catch bro. मैंने अभी देखा what the fuck. It could be. He's learning from मैं the best. कंफ्यूज कर रहा हूँ. मैं बोल नीड कैच 5 on the board already for Gen.G as we said. This was not going to be a भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आधे वैलेंट प्रोज को ADHD है. terrifying like you're saying. Possible है, already possible far exceeded expectations. They've got a एक रिसर्च पेपर निकला था द रिलेशनशिप बिटवीन गेमिंग एंड ADHD. इसलिए तो 3 सेकंड ज्यादा एंगल होल्ड नहीं होता किसी से. But here we are, round number 8 and Gen.G have another chance to extend this lead. आउटकम तो बताओ. बता जो है. पढ़ो जाके खुद मैं क्या बताऊं. अरे कंफ्यूजन बताओ ना भाई. नहीं. He's been able to take quite a lot of space now. This is space बजाज that's भी given एक up. नंबर का ट्रोल है रे. John QT as his cam, consistently watching. And with only 40 seconds left, we're seeing this late clear into middle. Now, a lot of this was probably off the idea that, okay, we could have double back through and taken. And there is a reason players like Nats, Chronicle are more like consistent and successful एक time पे. Because Sentinel and Viper. they just have more It's never patience easy to get past than this others. util, but they're beginning to predict it, and now they have to try and clear the players. For a patch. QT. Trapped by John QT a little closer. 12 seconds. अभी कल पेपर निकलेगा अश्वगंधा एंड क्यूटी भाई 2 को मारे. 8 seconds left. But players up in heaven surely not able to पर deny फिर it. भी Nothing to clear them from position. The fight's going towards Gen.G. सैसी भाई ने जो 100 मोमेंट किया था. But one hit to that outlaw 10. Full form of ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. क्या बात है. गवार थोड़ी है भाई. बजाज भाई क्या है भाई. कूलिंग वूलिंग किए है ठीक है. तेरे दे एक इधर भेज दो. तारा दिख के नहीं बोलते वो रहे मेरे दादाजी. समझ में आता है. गैस से Wow, bro, that is. He's 12 and 5 because they're running into his trips. He's getting an opening kill. मुस्तफिजुर ने 4 विकेट लिया.
That's been one of the things I've loved about छोड़ दो रे बाबा फिर वो लेके जा रहे हैं तो so quick and so committed वो लेके जा रहा है मतलब वो बहुत अच्छा बॉलर था हैदराबाद के लिए वो ओ शिट नहीं रे मैं वो अरे मैं बांग्लादेश का विकेट कीपर समझा वो मुश्किल है हाँ वो थोड़ा मिस्टेक हो गया ना और वो रहीम है ये रहमान है वही तो बोलो मिस्टेक हुआ रे बाबा I can only imagine being in the coaching seat. You're screaming about the time left, but they had it all under control. क्या हो गया सेंट्रल्स भाई कुछ करोगे? Going to round number 9, Sentinels. As we said, they've got scraps, and the pistols are apparent to us. There's only a few ghosts. A sheriff. This is a round that they've won before, so you have to be careful. And well, caution to the wind for Tens. He goes through the orb and falls right down. Let's see what else we've got though. The weapon's going to be upgraded, and there's still some util to play with. This is the thing we've been hyping up. Slap diamond Controller players all the way through. Excuse you, Ascendant 2. तमीज़ से ठीक है? नहीं bro, पर honestly उसने जो बोला वेंका उसमें कोई गलत बात नहीं है वेंका ने जो बोला क्योंकि this is बहुत normal मतलब वो बंदा बाहर भी किया उसको डायमंड बोल गए ऐसा हर्ट मत करो ठीक है असेंडेंट तो बोल दो कम से कम They're reading into the fact that okay, this is going to be बच्चा कुछ है ईगो वो भी हर्ट हो रहा है just walks a little stroll straight towards this B site. But good assumption वेंका भाई given the state of casting कि सारे casters डायमंड है have been good historically. नहीं है bro. That's just toxic bro. A couple of ghosts, a classic and a sheriff. Well, we're going to be marveling at that for a long time. Desh Pandey. Oh, meeting for the first time, Venka. In a post plant. Yeah, I think so, bro. Hi, bro. A site like this, Hi, bro. with essentially a quick fire, semi-automatic 2-shot op in play for 𝐿𝐼𝐽𝐿𝐿 with everybody on light shields. It really is one of those rounds where you start to think about just going down to the spike, maybe dropping some weapons if Gen G do get a bit aggressive. Gen G might win the whole thing, bro. भाई वो सब ठीक है लेकिन क्या किया Of all the ways to use that weapon, of all the ways I thought I'd see that weapon used, running through your own nade to double hip fire at a player who's eco, that was not on my list. Man risked it all. Hey, you know what? They've got the Well, that's credits to okay. play Honestly, with. It's a gun I that he respect doesn't it. necessarily need to bring 9-3 forward. karo, If let's he's gonna go. buy straight back into a Just rifle go again. in, though. That's the only request I have. The thing is, his opponent's not going to pick it up. So realistically, all that's happened there is that अच्छा देखा था उसने लेफ्ट साइड पे and maybe wasted a little bit of Good evening, never random watch मारा welcome, what's up? It was spoken तो about निकलते हुए देखा था ना in an interview I mean, with I didn't Alex notice that he after actually their saw last match. He said that it just feels like क्या कर रहे हैं भाई Gen G have a वो great टावर lead लेके on फेंक us. दिया माउस पे At the moment, it's looking like they have a great read on I'll go Sentinels back. as well. Because the way they've started this Never matchup, mind. they've gone the right It's way right. every single time. The paranoia, decent. Good flash. But the counter there, Tens will be able to keep his life and the aggression quelled for a second. But look how quickly they've got a response. There's 4 players from Sentinels here. Make that 3. Tens is down. Zel's is spotted. And A-Pack is just too good. Sassy here and वो कहावत वो था ना मेटाफर पहले कि बंदूकों के जंग में हम बारूद लाए हैं समझा नहीं लेकिन स्काई का वो चिड़िया से साइफर का ट्रैप अटक सकता है क्या? नहीं डॉग से अटकता है बट वो आ जाता है वापस अब पहले पूरा टूट जाता था फ्रेंड से बात करके वो ऐड कर but it still counts as one hit right out of the This two time Sentinels had the perfect read. They had the expectations, they had the trip? rotations, they had the players in वो position. ट्रिप पे अटकता है वो And they lose every ट्रिप वापस आ जाता single है fight. हाँ वो John Two- QT, didn't it all have he like can do at this two point it tags 2 is players just and then hold fucks on off to the rifle, but the credits are नहीं ऐसा for कुछ Gen नहीं G. या तो course मैं they're राइट से बात करके वो चिड़िया को ट्रैप काटने का सीन स्टार्ट करेंगे कल हुआ था ना स्प्लिट में अरे वो गेको का ट्रैप 2 प्लेयर्स नहीं ट्रैप 2 प्लेयर्स पहला एक फिर दूसरा वापस आया स्प्लिट में सीटी से ए आया किस्म Yon QT is 13-5 but they're losing 2-8 It's not even going to blow up in time. एक प्लेयर के लिए से क्या होगा 8-2. This is झूलो टेंस भाई झूलो नीचे झूलो One team having 8, the other team having 2. The fact that it's Gen G with the 8. झूल रहा है ना वो So far, little surprising. The fact that we've actually, I would say, most of this game so far, Meteor की I've been settings देखनी complimenting पड़ेगी Gen G, pushing and pulling the map, रुको, finding मैं open देखता हूँ, sites, being able to run भाई into the 0.3 के ऊपर lighter सेंस side हुआ of तो the मैं कंसीडर भी defense. नहीं Then कर we रहा see ठीक what है happens if they run into the सेंस entire कौन देख रहा है defense, ब्रो वीडियो and they still सेटिंग्स win the round भाई flawlessly. वीडियो सेटिंग्स YouTube 2 4x3 Kind of challenge डेस्कटॉप 1280 960 But खत्म that's the thing. I think going into this match, सेम माउस है नाइस it was almost unequivocal that Sentinels were the best team in the world on split. We might have to reevaluate that.
उसका scope sense point 1.3 है. मेरा भी 1.2 है. There needs to be some sort of response here for Sentinels. They brought back in again the ults, particularly close, at least the valuable ones, but they are looking to put pressure on. Looking to try and deny Meteor. He's going to go straight through. Oh wait, If he what? waited a second, I think he actually gets वो the मार kill. He's सकता था still उसको going to be उधर. able to survive. They've used a lot of utility to try and shut कुत्ता this man पीछे down. काटा है, And इसलिए he's भाग not गया. taken a lick of damage. Zelsis, though, the timing here could be everything. He's got it nigh on. Perfect. Looks for a big play, and he's found one. 2 kills down. The first time they've really managed to catch them off guard. Texture falls, and just 2 remain. Meteor looking for a move. He's at least going to get a quick step back. Make this one a little bit competitive. And the man they're up against has been insane. 3v8. It's not going to be an easy fight on any front. He's choosing the harder of the Hey, two. rip. Just one player towards the spawn. Whoops. There we go. I've never One seen player towards the texture spawn, like but 2 by up top. a Make that 3 vandal. now as they come into position. No snake bites. That orb only going to block vision, maybe add some decay, give him an opportunity though to play up top with the shorty. I like him trying to create some opportunities. Only I keep mispronouncing Zelsis' Too big of name. a task keep for calling anyone to Zelsis take. and these. 8-3. Nine से बोलते हैं, कर से activate Could करते हैं. see Sentinels find a 4th, Tom. That is not 8-4 something I was curse is ready to real. say today. The good thing for Sentinels fans out there 8-4 is हुआ we've तो seen mass landslide victories. भाई जो इसने crit करके उसने snap किया वहाँ पे They've aim. proven it time and time again. Look at their last match versus Loud, 9 rounds. So they can do it. It's not a death sentence, especially if they can get to 4, but it's the manner in which Sticker देख रहे हो they've been jersey winning पे? that does make me doubt that. And they're going कौन सा straight back sticker? to the bread and Opium? butter. The A take has been fantastic. Hey, Kens good has sponsor. been able to delay them at least a little bit, and the Seekers are going to give things away. The nade from Zekin is ये good as कैसे मर well. गया? They've got off to a strong start. Need. Yeah, the util through from Sassy as well helps out. They're blinded and paranoid by Tens, who's now making his appearance up top. Boombot through, it's found a player, and the bullets soon follow. Only 2 left standing for Genji. A healthy recovery for Sentinels towards the end of the half. It was looking a little bit shaky, but they found their footing Word now. speed? हाँ ये लोग देखो एमिन पे bleed V2 कर रहे हैं. The dog got far enough through that wall to see Karen, but either way, they'll suspect नहीं it. क्या? Spike on the floor and they'll attempt to take it. भाई पर ये वॉल देखी ये वाली नहीं पिछले राउंड वाली इनका नहीं याद नहीं ब्रो इतना याद होता तो कहाँ होता अभी. गटर से वो कर रहे हैं सीवर से टेढ़ा वॉल एक्स इस वॉल का पूरा ऑपोजिट वो बहुत मस्त वॉल है. I see. Looking for the fight. And Tens is just being an And no team is prepared for that wall. Like Genji has been using it throughout this tournament. No team feels prepared for that wall. देखना अभी I think so Sentinels might use the same wall if they do. Flawless. To give them their 4th round onto the board after what was almost a flawless half out of Genji. An early shaky. That was interesting. Oh, he got spammed to the smoke. He got that also, I think. Vulnerable. For the Korean super team, they definitely put themselves in a good spot. But as we know, Sentinels can definitely turn the tide. Viper का तू से vulnerable हो गया वो. It's not over yet, that's for sure. But Genji have to be happy with how things have gone so far. In fact, we've got some friends of Genji stood by in the audience. Let's hear from them. Run out or what? नहीं है क्या? टेक्सचर ने मेरे को बहुत कैरी करा है रैंक में. Angie? टेक्सचर बहुत मारता है ब्रो रैंक में. Yeah bro, he's insane. पता नहीं bro, can't relate. Never played with him, no? हमारा लेवल का प्लेयर नहीं है वो. हाँ रे बाबा. We play at a very different level. I think it'll be more difficult for him to get to our level than for us to get to his. He can never play at this level. Many players can play at that level. Not many players can play at this level. क्या क्या? क्या क्या क्या? नहीं सुना ही नहीं एंड में. Many players can play at that level. Not many players can play at this level. Correct. Especially with T-Bone. हाँ, with T-Bone तो She hit Texture से G hit torture हो जाएगा वहाँ पे. Wait, who's she? Genji ना अभी, sorry. This woman? Texture's friend. This is oh. मेरे को लगा कास्ट मतलब जो होस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ. That's a good battle cry, bro. I like it. ए काको लेके आओ. ये सब निकालो.
स्टेडियम फुल है रे बाबा. All right, Tom. Yeah, you know what? I got to hear a Gen G battle cry, but the crowd didn't really turn up for Sentinels, Tom. Give me your best Sentinels battle cry. Hype them up. Give it to me. Oh, buy the Sen bundle. That's all you need to know. That's all you need to know. I can't believe. You can work on your delivery, Tom. I'll say that. The battle cry, I have a tear in my eye. That was fantastic. It was wonderful. Well, 8-4 though. We've heard about Gen G's hard-working nature in that interview, and listen, hard work pays off. So far, a 4-round lead, double the rounds of Sentinels, hailed as the best team in the world on this map, Tom. They've got to show us why they're called that here on their attack. It is time to prove it, because as we know, next map up is the choice of Gen G. Lotus has been a home turf for them. 5-map streak. Not a bad map for Sentinels, but you wouldn't want to be going in this series with a deficit. 𝘼𝐿 now becomes the pinnacle. He's had a bit of a quieter game, but we know that at any stage, this youngster can turn it on, can take over rounds, and especially on that raise, it's been fearsome. Lucky though. Ooh, he actually just look at the utility. He's gone down. Been having a bit of a rough map individually. I think I'm falling in love, guys. This is all just the root. This is going to start pulling players over, put the pressure onto Meteor. It's a spot that you have to check on the way out. I think Sentinels, you imagine this they is will. hard. 𝘼𝐿𝐻𝑒, look at him. Oh, he didn't see him. The What the X-ray just fuck? sneaking past towards the screens. They'll never expect him to be in this corner. And the steps heard on the rotation back. Oh, this gap is absolutely massive. No way that Munchkin could expect it. But does he expect He won't expect one side He though. could think that's the only player. One guy in screens coming back to check there's no one and running texture, back. Oh no, texture. texture Baba, texture Baba. And now he's got an opportunity to trade Texture, texture. Oh my God. टेंसर भाई ऐसे नहीं मारने का टेंसर भाई. It's not over. It's not over. It's done on the spot. Karen does well to find one, and there's the follow-up. टेंसर भाई ऐसा पिस्टल से ऐसे नहीं मारने का. गलत है वो. Closer to winning Sentinel's map pick. Yeah, bro, that's actually unfortunate. Time in this tournament, I have watched. इधर टुक्के मार के उधर डुबकी मार के इधर चप्पल मारा. खत्म तीन मर गए. That never should have The been. level of There was one where it patience. exploded through a smoke and instantly popped. Texture. This one was discipline. This one was waiting patiently. I'm actually surprised he killed the planter first. And again, he takes down 3 players. This man has been Planter को पहले नहीं मार revitalized रहे within क्या? this Gen G roster, and that has got to be Normally easiest kill aim in वाला होता पहले. Yeah, you go aim into planted. हाँ. I mean, 𝘼𝐿𝐻𝑒 was blind. Killing him first though was the worst option, but वही. I don't know, bro. It worked. But I think वो इसलिए मारा कि अगर वो नहीं भी मार पाए फ्यूचर Plant नहीं हुए. बाकी हाँ तो डिले हो गया at least for his Time is also not there. Excuse me. Okay, bro. This is we go Lotus, bro. Well, the numbers advantage doesn't really matter when the judges fire in a way like that. APAC teams are actually just too good. ठीक है भाई. जेंजी को फाइनल्स का स्लॉट चाहिए कहते हैं. To their pistol. भाई जेंजी का जर्सी नहीं है मेरे पास. Even further on their side of the table. Full harassment. Solo is just. यार YouTube में इशू चल रहा है क्या? सबका लैग हो रहा है व्यूअर्स का बोल तरफ से. Maybe brother. मेरा तो लैग हुआ वापस OBS वो करना पड़ा. लगता है ट्विच पे करना पड़ेगा रे पापा आज. Played it so many times within the Americas, so many times already in this tournament as well. Right now, Gen G are showing why they might just be the hope of Pacific to finally get towards a title win. It definitely feels still a fair bit away. But in this round, they've not got a completely weak purchase. A few rifles, an outlaw as well. Okay, Karen's left on a pistol and Munchkin's SMG. पहले बोलना था ये सब. It's not the most desired खुद बना लो ना नया. मैं सेंट्रल्स एंड पीआरएस के लिए प्रिपेयर्ड हूं. 2 orbs away from तो आउट ऑफ बॉक्स आ गया. अन्ना सेंट्रल्स फाइनल पहुंच लग रहा है. सेन तो फिर भी पहुंच सकती है. PRX तो बहुत ही कोई अपर ब्रैकेट है ना ये वाला मैच.
लाउड को कैसे अपर रहेंगे ब्रैकेट तो क्या है फिर तो पहुंचेगा तो क्या सीन है They've got the पहुंचेगा rifles, but they need to find success with it. ये टूर्नामेंट सेंटिनल्स ही Weaker जीतेगी weapons for मेरे Gen हिसाब G. से। That outlaw is dangerous. नहीं शायद bro, आज हारे। मुझे Dangerous is the four लाउड या players on जेंजी this लग रहा है A वो side. सच We बोलूं saw तो Gen G run into this. हो सकता है 4 of Sentinels up in like heaven. मैं चाहता हूँ And Gen G PRX से lost about सेंजी थे 40 बट रियलिस्टिकली आई थिंक total. जेंजी अलग भाई है। नहीं भाई मैं तो कोप कर रहा हूँ Execution on the A गाइस side. Sentinels समथिंग are ही doing it जिताएगा with a split through द बेस्ट vents. लायबिलिटी यू कैन हैव ऑन योर Two टीम players on their way to crunch heaven. Best Problem is, man Gen G called get him a crunched right liability. back. मैं बोल Listen, रहा हूँ man. जेंजी एंड If it works, it's great. If it doesn't, then it. Man Yeah, doesn't know how Genji's to in stop finals. peeking angles, dude. जेंजी सेंट्रल्स फाइनल्स Yes. आप जिसको कप देना चाहते हो दे दो फाइनल्स में दो ही टीम आने वाले हैं अन्ना स्क्रिप्ट जल्दी लीक हुआ है क्या आज लैंड है पूरा इससे तरसती क्या नहीं तो बाय राउंड है। आई थिंक उन्होंने बाय किया है। हाँ बाय राउंड है बाय राउंड। 5-10 and they win next round. Then they're on equal against 7-10. Winnable. And although they pushed in, अन्ना की चैट में एक जन ने आइडिया दिया है आपको जर्सी नहीं मिले जेंजी का तो बॉडी पेंट कर सकते हो। Well, Tom, you know, नहीं करने, this is the sorry. expected result, though. 2-round win, one on the एक back green of the color pistol, t-shirt the पे other to sticker follow up. चिपकाऊंगा। You win your third up Gen Z against का those logo। weaker weapons. It Honestly, still gets Sentinels तो close. पहुंचेगी Couple grand of well final। played shots by Sentinels puts them ahead in those पहुंचनी fights. कितने चाहिए। लोग आएंगे ग्रैंड फाइनल में? दो ही टीम खेलना है, एक जेंजी आएगा, पीआरएक्स का आएगा, सेंट्रल्स आएगा, कितने लोग खेलना है? लाक्या और टेंस अन्ना झूल रहे नीचे। मेरे हिसाब से तो पीआरएक्स आज एलिमिनेटेड है। हाँ सेम मेरे को भी वही लग रहा है। Just about rounding the corner in time. That was a target-rich environment. Now Gen G have to fall back. Surely they won't keep pushing. They won't keep taking this space. With Texture, Oh, they don't know what Meteor's beam and gone push. forward. Okay, they know. He doesn't even have a dash online. This guy's crazy. He's Nice. cloud bursting around to try and stay alive. He's still not running away. Tom, he's sticking around for a fight. Hey, I hey. did not expect that. अनलकी हो गया था थोड़ा सा। मैटर भाई, मैटर भाई, Texture as well. He wants to try and ऐसा recover क्यों मर this. गया? Such an aggressive start. The paranoia showstopper combo could have eliminated half of Close ले जाना Sentinels. चाहता Instead, वो he found मैच को। nothing. And now it does kind of look like Gen G is scrambling Finish a it little like bit. Dhoni. Such aggressive positions, and the fallback is going to go धोनी से towards ज्यादा that है A side. IPL Thing में is कैसे though, हुआ? because they had so much map control, तब नहीं। it's been an early read from the side of Gen G. Once again, it's looking like we might have 4 players within this A site as Sentinels go to push. One flash on Lakia, one nade on Texture. No paranoia, some smokes. The second just came online for Karen and one's just been popped down. Here comes the showstopper though. That's the big Second by gun on the other चप्पल side. बोलते हैं। And Sentinels find the opening with it, but there's a response. Gen G equalize things, catch them on the rotate through heaven and drop the spike. Bro, Texture is actually him. The nade buys even more time. The rotation उधर मारने वाले को छोड़ के इधर हल्का सा पीछू बोला उसने। थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हो गया क्या? No time, no time. ऊपर है when They have exact time. They have exact time. But now no time. They had exact time. नहीं होगा, नहीं होगा। नो टाइम नो टाइम। नहीं होगा, नहीं होगा। They had exact time. अगर जॉन क्यूटी मार देता उसको, जेल्सी से दौड़ता रहता तो हो जाता। हाँ तो हो जाता। हाँ। 400 रुपीस के लिए इतना सब किया Every होगा। single time he makes the right read. Texture is having a worldie of a defensive भाई half. टेक्सचर भाई का फोटो अगर मंदिर में लगा है तो हम भी अच्छा Walking खेलेंगे into क्या? this trap almost every single time. Gen G's read to वो get वुल्वरीन वाला भाई, न्यूज़ याद आ रहा है। इनका स्कोरबोर्ड देख के लग रहा है कि 5-11 हार रहे लोग। that he can have faith in क्योंकि Munchkin भाई to अकेला hold मार on रहे to that site and buy लाकिया भाई झूलो। टेक्सचर looks so cold, stone cold. it has to be slowed down Texture ऐसा just relax enough. होके That खेलता है एकदम। split second Chill. does the work. टेक्सचर बहुत chill। Heroes are there. The stars are aligning. Man's is clapping some of the best players in the world on a Sentinels are on server. their last legs. His KJ clutches on Pearl, याद है Pearl पे KJ के clutches 1v4 1v4 दोनों G के लिए बहुत अच्छा था, cool एकदम। बहुत हाई सेंस है इसका भी टेक्सचर का। Karen knows बस exactly तो what's going 0.225 down. खेलने वाले Despite भाई 800 पे। the judge in हमारे लिए hand, तो भाई सब it कुछ हाई could be है। somewhat unexpected. They'll see his economy was low. Will they anticipate it upstairs in heaven? This is a danger up against. 0.225. I think that's 10 cents. And they're No, on their no, way. 800 bro. 10 is 0.345. Karen's waiting arms. If he wins this, 345 is 1.1 in CS. that's another The best nail in Sentinel's position. coffin, and he's back. जॉर्ज He's just ओनली खेल रहा है creating ब्रो, ये some बंदा ये space. लोग कितने टिल्टेड होंगे। Not getting out alive. In fact, sticking around for another fight, but 10. दो को मारा। Oh wait, what? 10 से 2 का चप्पल दिया।
They've still got भाई झाड़ू मार ले उसके साथ पंचकिन साफ कर देगा अभी देखो poison orb up. He's going to be able to isolate the spike. Already dropped to the ground. Good trade though from John QT again. I like that he waited for Bringing the things back into an even scenario. The clock not so low this time, but Lakia already he's gonna switch up. चिड़िया उड़ ये नहीं करना था अरे ये फिर भी निकाला ये ऑपोजिट साइड था पर एकदम सेम प्ले हुआ था याद है ना क्या लोटस है क्या हाँ टीम को 13-12-5 हरा रहे लोग लाकिया भाई झूलो झूलो नीचे वो पीछे अन्ना झूल पूरा ब्लाइंड होके दो को मारा भाई इसने क्या स्कैम है भाई टेंस बफ I like how ऐसे हवा में दे रहा है हाय मेरे को बोल रहा है हाय क्यूटीज हाय मेरे को बोल रहा है Gen G, they really are changing the game. Round 18 could be भाई लोटस में इनका कॉम बहुत अच्छा है इसका जेंजी का डिफेंस के लिए बस डिफेंस स्टार्ट कर रहा है ना डिफेंस ओरिएंटेड कॉम्प है उनका थोड़ा अच्छी बात है ना जल्दी खत्म होगा मैच हैं जी पैसिफिक ओह माय भाई गॉड फ्रॉड रीजन गाइस अमेरिका फ्रॉड रीजन गाइस फ्रॉड हेलो वो फ्रॉड रीजन तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है ये तो फार्म हो गए भाई फार्म हो गए भाई गाइस मैच देखने आया था ये नहीं पता था कि डेथ मैच चल रहा है जल्दी की दाढ़ी उग गई एक दिन एक मैप में काकू का लेके आओ अभी बहुत टेंशन में है अन्ना कॉल करो ना जरा इधर कौन कॉल में डालो ना मैं और बजाज कोचिंग देता हूं उनको थोड़ा काकू नहीं सेंटिनल्स वालों को मैं रेडी हूं ऐसी कोचिंग किसको चाहिए हाँ कोचिंग इज कोचिंग वेदर यू कोच काकू का और समवन एल्स इट डजंट मैटर एग्जैक्टली कोच काकू का या I am not sure where this is going but okay sure I am down if you're down राइट और डाई भाई ने बोला तो करने का बजाज भाई यस मामा भाई कैसी है तबीयत एकदम सही और अब आपका जिमिंग कैसा चल रहा है यार बहुत दुखी तरीके से चल रहा है आज मैंने भाई लेग्स किया ना भाई ऐसा लग रहा था पैर के बीच में बैरल आ गया भाई ऐसा सेक्सी पंप हुआ ना भाई पैर के बीच में बैरल हाय ये I should have thought that through I should have thought that through that is not what I meant guys माम्बा का अलग बैरल चल रहा है बैरल का तो पता नहीं लेकिन बैटल अलग है भाई तकलीफ होता है रे बाबा भाई वो तो भाई मिडिल फिंगर नहीं दिखाना चाहिए था वो हाँ बोलो ना मामा सीएस में अभी इंडिया में एक प्लेयर है लॉन्ग बैरल यू आर शॉर्ट बैरल हम डबल बैरल ये अच्छा था एक और घंटा गाइस फिर बच्चे सो जाएंगे फिर बेड टाइम स्टोरीज होगा बेड टाइम स्टोरीज फीचरिंग गॉड स्पीड वाओ बिकॉज़ वेंका इज माइनर नो उसको कुछ नहीं कर सकते हाँ अरे हाँ रे वेंका भाई अरे हाँ रे वो तो मैं सोचा ही नहीं वेंका माइनर है ऐसा वेंका माइनर है मैंने बोला भी पहले बार में जब व्हेन यू मेंशनड नहीं रे बाबा मैं वो थोड़ा तब अरे ऐसा मैं अभी छोड़ो मैं कुछ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर मैं कुछ स्लिपरी स्लोप स्लिपरी स्लोप है ये मैं अभी बोलता कि मैं भेदभाव नहीं करता ऐसा तो भी और गलत लगता एग्जैक्टली नहीं गाइस कोई जगह पे भेदभाव करना चाहिए वाओ वेट कोई तो इवेंट था अरे यही था ये अपना डोमेस्टिक लीग का मैच एक मैं वॉच पार्टी कर रहा था वेंका भाई एग्जाम दे के आए थे हाँ कौन सा आरएनटी वाला एग्जाम दे के सम मैच ऑन आइसबॉक्स यू प्लेड नो RNT exam buff bro I farmed those noobs yo noobs बोल दिया गाइस RNT वाले को गाइस जल्दी क्लिप करके डाल दो गाइस
आरएनटी वालों को नहीं बोल रहा था मैं, रैंक्ड गेम में बोल। करेक्ट गाइस, ये वाला पार्ट कट कर देना गाइस। व्यूज आ जाएंगे फिर, व्यूज आ जाएंगे फिर सॉरी बोल के डिलीट कर देंगे। आरएनटी का क्लिप करके एडिटर आरएनटी वाला क्लिप करके डाल दो, बाकी पूरा छोड़ दो। वेलकम टू YouTube in 2024। एग्जाम्स का फ्रस्ट्रेशन सीधा इधर निकाला। हाँ बराबर। लेकिन रिलीज तो जरूरी है गाइस। सब शांत हो गए। नहीं मैं तो चैट से थोड़ा हाई लो कर रहा था। रिलीज मैं मैच देख रहा हूँ। वो अलग टाइम पे होता है। रुको जरा ट्विटर खोलने दो भाई। सेंटिनल्स बिंग्स ने सब्स गिफ्ट किया नहीं किया रे? नहीं किया, हाथ दे दिया मेरे को। हाउ कैन वी लूज, वी हैव दिस। वालों अरे ट्विटर खोला ना सेंटिनल्स का, तो काइडे और टेंस का फोटो था। तो उन्होंने लिखा था हाउ कैन यू लूज, वी हैव दिस। मैं बोला फिर भी हारे रे बाबा। वी वन व्हाट। वो अनुज भाई अच्छा खेल रहे हैं आरसीबी के लिए। 25 रन नॉट आउट। कौन? अनुज रावत। सेकंड नेम से मतलब नहीं है, पहला नेम तो अनुज है। क्या नाम तो पहली बार सुना है लेकिन। जब दो माइक थे ना सोलो के सामने, विजुअल अच्छा लगा मुझे। ओके। बजाज भाई म्यूट करके हंस लिया। काकोका को लेके आओ, ये सब को हटाओ। अन्ना एवरीबॉडी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी नो। ऐसे थोड़ी कि फिर आप मजे ले रहे हो, हम खाली बैठे। नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। ऑफ साइड, लेग साइड, स्विच क्या वाइड हो गया? हाँ ठीक है। ये अन्ना आज मैं टेडी बेयर, मैं गेको। गॉड स्पीड क्या चाहिए? पेंगुइन चाहिए? नहीं मैं वो दोनों के बीच टू यंग फॉर दिस। नहीं अन्ना, वेंका को नहीं, वेंका को नहीं, वेंका को नहीं, वेंका को नहीं, वेंका को नहीं। मैं वो रैबिट। रैबिट की तरह। हाँ बराबर। नहीं वो गेको के बाजू में ही है। गेको के बाजू है, ठीक है। तो गॉड स्पीड को दोनों चाहिए बेसिकली। बजाज भाई बॉलर निकले आप तो। अच्छा वो लाइन पे नहीं आता भाई, फिर बोलना कुछ हमारे लिए भी छोड़ तो रे बाबा। एक काम करो गॉड स्पीड, डोंट गो टू स्प्लिट टू लैन आल्सो, दे विल विन। ए बजाज अगर स्प्लिट टू लैन पे जाएगा तो बता, मैं आऊंगा। किधर है वो? स्प्लिट टू कहां हो रहा है? I don't think you can say it. Oh, it's not public yet. No. You can message or write it. I think हम पहले स्प्लिट टू लैन के लिए क्वालीफाई हो जाते फिर बात करते। भाई किसी को कोई मुझे डिस्कॉर्ड पे डीएम कर देगा तो मैं बोलूंगा नहीं गाइस कहां पे हो रहा है। अरे चैट में लिख दो ना, we'll tell somebody wrote in the chat. वेंका दूसरा आईडी से आके चैट में लिख दो। I will they know. मैं डेथ मैच कर रहा हूँ, सॉरी। डेथ मैच के चैट में लिख लो, मैं देख लेता हूँ। हेलो लिख रे बाबा, लिख देता मैं। अच्छा। अरे ना आपको तो पता ही होगा कहाँ हो रहा है। Don't tell me it is Delhi bro, please. ए दिल्ली रे बाबा, नहीं रे बाबा, I don't want to go there. पुणे वाला मिस कर दिया मैं। दिल्ली देखेंगे रे, मन तो नहीं कर रहा इतना आने का। यार दिल्ली का तो इम्पॉसिबल है, मैं तो छोड़ ही देता। What's up with the Delhi hate guys? दिल्ली हेट नहीं रे बाबा, मेरे को तो लैंड पे आने का मन नहीं कर रहा अभी। The only time I feel like going to Delhi is for track days. वो भी I plan in such a way कि it's like 5-6 hours journey for me. No way man, Delhi.
बैंगलोर में हो तो थोड़ा अच्छा पब्स में जाने मिले। वाओ Wow, bro, so helpful for me. मैंने कहा आपके लिए थोड़ी, आपके लिए तो होटल रूम में लाइम जूस हमारा आएगा। हवा है बैंगलोर में, कोई दिक्कत नहीं, आपका एंट्री हो जाएगा। अन्ना अन्ना स्ट्रीम पे नहीं अन्ना। अरे एंट्री बोला भाई, मैं क्या बोला? हाँ, एंट्री वो फ्लैग वहाँ आप पे एंट्री बैठ- दे लोगे क्या? LAN पे आई एम entry हो इनिशिएटर, आई एम इनिशिएटर, वो आई वहाँ एम गिविंग एंट्री टू ड्यू लिस्ट। करेक्ट हाँ, वो वहाँ पे बैठ के चिप्स भी खाए, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं नाइफ फेंकता हूँ, वहाँ पे पूरा सप्रेस हो जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, खत्म। भाई मजा तो कन्वर्जन्स के बाद आया था रे भाई। That night was fun. That's what. नहीं वहाँ सेंसर उम्र हो बढ़ती गया। जा रही है लेकिन हरकतों में सुधार नहीं आ रहा है। भाई एक जमाने में मैं भी 17 साल का होता था गाइस। वाओ, सब एक जमाने में 17 साल के थे मामा। कौन 17 साल को स्किप करके सीधा 20 साल को आ गया रे? नहीं रे, यंग ब्लड मिस होता है रे अभी। आई मिस द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी द यंगेस्ट ऑन द सर्वर। क्या है उसमें? अरे अन्ना, हेयरलाइन रिसीड हो रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, क्या बात कर रहे हो? सबका इलाज है। घर वाले शादी करने बोलो, उसका इलाज क्या है? उसका भी इलाज है। उसका भी इलाज है, वो पब्लिक नहीं बोल सकते बस। What is 17 bro? 17 is 17 bro. 17। अरे बेचारे का, my friend is Bangalore boy, does not know Hindi very well. It's okay, brother. Nobody like. If you don't know Hindi, you don't know Hindi. हाँ, that's it. Wow, bro. Sherlock Holmes है God speed. Bro. थोड़ा। God speed की एक बहुत फेमस सेइंग है, बोलो ना God speed। At the end of the day, the day ends. भाई ये तो पीट रहा है भाई, कौन है ये लेफ्टी? रावत। यही है तो अनुज भाई। अनुज रावत बहुत मार रहा है भाई। बहुत मार रहा है, इसको तो पहले भेजना था। अरे भाई इसको थोड़ा ऊपर भेजना था। ये यंगस्टर लग रहा है ब्रो। ये उत्तराखंड का है। वॉच पार्टी में आके आ गया बॉल वहाँ पे। ये ही टैटू करवा दो क्या? At the end of the day ends. I've got an interesting stat too often, but in the last 9 series, Sentinels have won the first map. The 10th, they lost 2-0 to Loud. So that is the last time where they lost the first map in a series. ऊपर लिखा हुआ है, Even lost the series. ऊपर लिखा है हगामा सुरुतो। They always win the अब ये first कौन map. सा So it's लैंग्वेज the है first पता time we're नहीं। going to see them भाई 4-5 राउंड जैन जी भाई एकदम एग्रो खेल के चप्पले मार देना। भाई ये भाई कोच बनूंगा मैं, बता रहा हूँ भाई जीसी आ रहा है ना, बताओ 3-2 हो गया मैच। चलो हो गया। बजाज भाई जीसी का कोच बन जाऊं क्या? जेनजी ने 3C पुश और 2B पुश किया। साउंड फेमिलियर। काकोका ने जस्ट मेरा मैसेज लाइक किया इंस्टा पे, इसको बैन दो चैट में। कुआ कौन है भाई? वेंका भाई इट इज नॉट फॉर यू वेंका भाई। एंट्री पे दे दो। ये देखो भाई, वो तार है, बंदर है क्या? दो पे चढ़ के मार रहे उसको। फिर भी एक को मारा रे। ends is now past tense guys. I think wow. This is a team that many would say that they should just ban JJ strong है रे इसमें। picking Lotus. That would be भाई silly. लेकिन मुझे एग्रेशन अच्छा लगा रहा है। I like them setting the tone. भाई टीबैक कर दिया। वरना फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, जैसे ये 3C पुश 2B पुश। लोटस में ऐसे ही खेलने का होता है कि रेड मतलब रेड पार्टी एक भेज दो, 3-3 जन का 2-2 जन का, कहीं ना कहीं इन्फो या एक किल लेके आए, एक फाइट लेके आए। ओके ब्रदर। भाई बड़ा आई एम लविंग इट भाई। ब्रो जी एक्चुअली लॉस्ट लाइक जनरेशनल टैलेंट भाई। भाई क्या पर्सनालिटी है टेक्सचर। टेक्सचर एक्चुअली गोट है भाई। ऐसा लग रहा है उसको कितना मजा आ रहा है मतलब खेलने में। It's like he's found his home finally. हाँ,
सोलो आ गया ना वापस उसके पास. Second bye. Chappal bare. Hello. Hello. Zishu type entry. An early back and Zishu forth. coach We know of the 10 Sentinels seconds. can do it. Even with just the pistols, the C's fantastic. Even put in What? onto a snake bite. Lovely combination. kill ले लिया. Seas is actually useless, bro. Threw in a nano, so you just had so much Seas damage. पकड़ने के बाद health कम होता है ना 2 सेकंड के लिए. हाँ बस health ही कम होता है bro. I feel like movement better हो जाता है और sound नहीं आता बिल्कुल भी. Like fade out हो जाता है basically. Won't be easy. They've already expended all their big utility. Wait, did they change comp or am I tripping? And with these weapons close range, ओ भाई भाई कैसे चलाते ये लोग स्टिंगर ऐसा. जेंजी का यही कॉम्प great reveal from हाँ Sassy to सेंट get की बात himself the करो. kill. Karen हाँ सेंटिनल Straight नहीं खेलता था पहले. नहीं पहले नहीं खेलते थे. with texture the last alive. He Good doesn't round. stand too long. Another thrifty. वेंका ने Zishu type entry बोल दिया. Chat में रो रहे Pull पब्लिक. it back. Reminiscent of the last. भाई मेरी चैट में तो किसी ने कस्टम सर्वर बोल दिया भाई. वेंका देखा सिंगल गाइस सिंगल हेट मत फैलाओ इनिशिएटर. गाइस. Exactly. That's the thing. They had a slow map. ये अभी in the last. They got ट्रेंड है भाई outplayed by सिंगल GG. इनिशिएटर डबल कंट्रोलर लोटस में. To say they can't come right You know back these guys are on 240 hertz. Yeah. would be foolish. वो अच्छी बात है बुरी बात है. बुरी बात है कुछ ये लोग Massive अमेरिका में investment on the other 360 side. पे If you देते piss हैं. Yes, sponsor है ना. America's Marshall 360. put into play for The Meteor. sponsor no. Yeah, sponsor guys. That's why everyone's playing on stretch res like Sen wale. Off the one way. भाई लेकिन I don't like the fact that Val doesn't actually allow you to go full stretch, Sassy like full farming stretch. up the orb, not far away from his ultimate already. I think that's a good thing, bro. ना bro मुझे मोटे लोग पसंद है भाई. Space. That sounded very. अरे गेम मेरे बाबा, गेम मेरे बाबा, गेम मेरे. What the hell? गेम मेरे बाबा. Pause, bro. Pause. गाइस लगता है आज फिल्टर लगाना पड़ेगा. आज वॉच पार्टी नहीं होने वाला. That paranoia from Tens does a lot of work. John QT Oh my जॉन क्यूटी ने पिस्टल से 3 को चप्पल दिया. as well for John QT. वहाँ पे स्पैम नहीं होता जॉन क्यूटी. राइट को बोलता हूँ. सॉरी रे बाबा. राइट को बोलता हूँ वहाँ पे स्पैम नहीं होता. Early on as well. जॉन क्यूटी ने 3 मारा बोल रहा है अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ. देखो स्पैम लगेगा. हाँ स्पैम मार रहा है. Oh no. इधर क्या हो रहा है? थ्रो रहा है. Shots for Meteor, chances to be the last two though. Throw तो नहीं था but nice shot था भाई. हाँ Bro शॉट मुझे like सासी को spec करके ऐसा लगता है मैं किसी ascendant को spec कर रहा हूँ पर भाई बहुत अच्छा मारता है वो. Like crouch play करता है but मार देता है. So you're telling me I am sassy but without the aim. लाकिया भाई फिर से झूलना चालू करो. भाई बहुत जन सक्सेसफुल हैं हमारे रीजन में भी. क्राउच प्लेस अच्छे चलाते हैं बहुत जन. नाम लो ना bro. बहुत जन अच्छे चलाते हैं मैं ये बोल रहा हूँ. एक का तो बोले दो. अरे लास्ट में ये लोग बहुत अच्छा कमबैक किया रे आरसीबी वाले. 73 for 5 कुछ था. हाँ कमबैक तो Hey, करा Venka, you अच्छा. said it's good that you can't play full stretch on this. ऐसा क्यों? हाँ ना ये तो लग रहा 180 जाएगा आराम से. हाँ जाएगा रे. अच्छा मार रहे. मन करा बोलने का बोल दिया. Damn भाई मन तो मुझे भी कर रहा था लेकिन मेरे शब्दों का मतलब कुछ और निकल रहा था. आपका तो अलग ही निकला मामा भाई. वही कह रहा हूँ. Hello. It was punished almost immediately. Most times the pushes come, but I think a little bit more. Valorant console पे कब आएगी? Munchkin toying with the idea of pushing up, and Zalsis eventually bites the bait. Venka भाई 2012 नहीं है ये. अब सीधा मोबाइल. नहीं आएगा रे मोबाइल. हो गया मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा. मेरे को पता है कुछ नहीं होता है कुछ. And look, he's already burnt up their paranoia. A very valuable. हम लोग जनवरी में रहे. जनवरी आ रहा है. मेरे को स्पैम किया. मैं बोला आए तो मैं 100 गिफ्टेड दूंगा. भाई वैल्यू मोबाइल आया ना गाइस. पीसी बेच दूंगा भाई. खत्म. एमुलेटर पे खेलेगा. पर वैसे लीक्स तो थे अन्ना कंसोल पे भी आने के जैसे मोबाइल के पे थे. वो सब हुआ है. कैसे खेलेंगे रे बाबा. छी. कंसोल पे तो आ सकता है एक्चुअली. बट छी. जब लोग एपेक्स खेलते हैं. हाँ जब लोग एपेक्स खेलते हैं. एपेक्स नहीं बेस्ट एग्जांपल है ओवरवॉच. हाँ ओवरवॉच. Battle Royale I can understand bro. Fucking tag shooters and all I can't. even starting to rotate away. They have fallen for the bait completely. Oh wait, tense तो भाई. Wait, how is? They've seen him. There was no way out. Zach is caught. And now there's no way to stop this spike from being released V3 Pro. They have to play for the retake. Spams are coming close. There's no भाई कि C is Angle for Karen. the kingmaker here. ये तो घुस ही गया. Just about the shrouded step buys him the space. And he's hightailing it to play the post plant. 6 HP on Zelsis, 22 on Tens. And second and John QT are not too healthy, but they have to go for a save on Gen G because of all those players still standing. Fight
A bullet or two landed extra, and this round would भाई look ओडिन different. निकलवा दिया भाई. Instead, Gen G are out of here. ओडिन अच्छा है मैप पे. बहुत पूरा पेपर मैप है भाई. हाँ वही तो पहला 2 मैप दोनों ही टीम स्ट्रांग थी, बस पहला मैप थोड़ा सेंटिनल. भाई हमारे ये लोग में तो पुलिंग आउट इन ओडिन इज अ साइन ऑफ डिफीट है. ने कभी ब्रीज खेला है अभी? मैं वो कभी देखा, इसलिए मैं कॉम्प एक मैप खेला है. I don't think I've seen Sentinels play breeze. एक मैप खेला है वनीला कॉम्प था, जेट केओ वाला. खेल रहा था 10. केओ खेल रहा था 10. I feel like ये लोग कॉम्प चेंज करने वाले ब्रीज का, पता नहीं क्यों. करेंगे ही. और ब्रीज आ गया तो जेंजी जीतेगा भाई. ब्रीज आ गया तो जेंजी जीतेगा. 10-0 पे देखने वाले, मेरे को फीलिंग आ रही है. डैम क्या पता नियॉन निकाल दे. ज़ेकन का नियॉन है ऐसे भी गोटेड. हां ट्रू. सबसे गोटेड नियॉन तो था ऑनिक मोनियक भाई. A lot of early pressure from Gen G around A. It's not in what आगे they बोलो भाई. It's what they're preparing. हाँ I would that was reaction. भाई I agree. Oh yeah, John Judy actually too good भाई. It's still recoverable, but that makes it a little hard. Second चप्पल मारा. Down. They know Karen around this angle. There's not too much. Sentinels giving it back भाई. Nice read. Giving it back. Shoot समेत guys. That's why he started. ये देखो भाई. Retrieve for Karen. ये देखो भाई. He's going to find it hard to even find an angle to use this one. It just come down to a save. The fact is they're almost having to gamble on where their opponents are going. Sassy the भाई. fact is Senna happy to just चप्पल मत खाना play सासी भाई. patient. A second round सासी again भाई crouch where they're करेंगे using अभी. Sassy as this उसके पहले ही मार दिया. He's just executed him. बोला था चप्पल मत खाना सासी भाई. Stairs, and now he's Oh up my top God. suppressing fire. The guy's got 42 HP. He Oh swung out no, he wide. peeked before the flash. John Cutie ने पागल हो गया भाई. John Cutie. Disappointing. Cutie always पागल. Meteor now having to clutch it out. John Cutie में world का top 5 है. Players are. They could have snuck away to anywhere. It could cost them a lot of time Wait, on the way they back use the through, ult? but it seems he's relatively confident that हाँ they'll भाई. play towards the site. Inside that गेंद pin, फट in गई fact, the भाई. lockdown is अम्मा. here and now. They have to open the door to run away or emerge from Timing. that. Oh, Nah, the timing. bruh. Oh, it was so close to seeing Meteor fall. no. He catches John QT on the other side of the wall. Celsius is standing, and now Oh my God. take it down. A sensational How clutch. to lose a That is round the 101. worst play. Like you're helping him by using the ult. How to lose a round 101. Flabbergasted at 2v4. Both of them. भाई ये लोग अंधे थे क्या? उनको पता नहीं था कि केजे के पास अल्ट है. Recover an Odin that somehow does some work, but this नहीं, man. but why? You're But they helping don't him know by where using the he Viper come ult. from, no. A Red Bull clutch, and at this stage, Bruh, honestly, you're going to look at the clutch statistics. You might head They probably thought he's coming along. भाई प्रोडक्शन हगा गाइस. रीप्ले का आवाज आ रहा है लेकिन रीप्ले Replay नहीं दिख का रहा आवाज आ रहा है. Live का visuals है. गाइस इधर भी होता है क्या गाइस? हगास So I am not surprised इस that मामले he's में. confident in the 1v2 because he's been doing it all the way डूबा है through the बहुत गंदा tournament. डूबा To है. use his lockdown FNS there का to टीम का force नाम them Victor, out, Victor. he's wasted their Victor खेलता Viper's था. pit, but more importantly, क्या खेलता था he's put Victor? them on the Neon? board when they हाँ shouldn't have नियॉन been there. फ्रैक्चर पे याद है. Big clutch coming out of Meteor. क्या टीम थी भाई वो? As an operator. They're putting in True, utility, भाई. but it's being destroyed. भाई टेक्सचर Almost गिव्स नो just फक्स भाई. baiting the fact that there's someone here, but he's so clean with Wow. it. First kill goes through, instantly retreats. क्या बहुत देख ही रहा हूँ मेरे को समझ में बहुत नहीं ही फंडामेंटल तरीके से सेटअप से इनके सेटअप एकदम फंडामेंटल है जेनजी के. एकदम बहुत ही प्यारे हैं. मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं ये सेटअप. बहुत मस्त सेटअप से. I like it when Godspeed gets happy. Sounds very cute. Maybe they can posture a fake. Not really though, considering Meteor. बजाज भाई KPL सीजन 3 होने के चांसेस है आपको पता है? क्या बात है. लेट्स गो. Okay. Brother, only the most prestigious Valorant league. Legit. Wall up. Like literally Eco India's through. most prestigious Valorant league. अगर वो नहीं जीता तो क्या ही जीता है भाई? Still stacked. PRX slot भी देखोगे? Yes. I'm कल watching आना both प्रीमियर against लीग. Textures here with the operator. That's the thing. कल आना प्रीमियर लीग. Wow. No, legit. I'm not kidding. It's an actual tournament. Yeah. Utility उसमें and क्या होता bait है? out that they might be going in this कल direction. आना होता है The fact is हेलो. Munchkin has sat around. There's still उसमें a ऑप्शन होता है प्लेयर्स के कैप्टन सेलेक्ट होते available हैं. here for Texture. He might be फर्स्ट ईयर मेरे सामने आया था Godspeed फाइनल में. Almost that. अरे बाप रे. Karen still in position. अगर जनजी जीता तो क्या होगा? जनजी will be termed as winners of the match. He's waiting for someone to go for the ball. They're in front of him. Not cleared. Oh my God. Ooh, Karen भाई. It's too far gone. Karen भाई रुको. Into his own hands. Karen. भाई एकदम मेरे जैसे खिला रहे Karen. Flabbergasted, flustered.
भाई पैराट्रूफ में ऐसे ही खेलता था मैं एंकर भाई स्मोक लेके धुआं कर देता था धुआं थोड़ा कम करो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है मामा भाई ऐसे नहीं वैसा धुआं नहीं करते हम लंग्स का बहुत ख्याल रखते हैं that op on the angle was the only thing there, the only element to भाई this defense. आइसोलेशन देखो किस तरीके से आइसोलेट कर रहे हैं एकदम क्लीन आइसोलेशन है जब एक एंगल दिख रहा है तो चढ़ जाएगा क्या भाई पता चला 4 राउंड और जीत लेना उसके टेबल पे जाके खड़ा हो जाएगा ये तो मुक्का मार रहा है The reason why they're standing is because it's like that. Oh, for sure. Like the last 2 rounds. Pro settings dot GG. Or at least got close. अगेन देखा ब्यूटीफुल उनका टरेट तोड़ दिया रिएक्शन आना ही पड़ेगा पर रिएक्शन बहुत अच्छा आया सेकंड बुरा मान गया भाई Oh my god, my यार टाइमिंग पकड़ा है सेकंड ने He's in the conversation for best player in the world right now and you've just witnessed why. गोटर ऑफ द गोट्स भाई कैसे बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई है ब्रो एक्चुअली है हमें वेंका भाई भाई ने बोला तो मानना इस टूर्नामेंट में स्टैटिस्टिकली सेकंड इज वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा बट आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सबसे बेहतर फर्स्ट ब्लड सक्सेस रेट ऑटम का है 61%। यार कोच बनने के बाद ऐसा सब डेटा भी देखना पड़ता है This is stretch rest that they're playing, no? मेरे को भी stretch rest पे खेलना है एक बार blasted with a showstopper left ना ट्रू स्ट्रेच ट्राई करो सब भूल जाओगे सारे किस VLR में मिल जाते हैं ट्रू स्ट्रेच बैनेबल है by the way wait कैसे बैनेबल है but if you're not changing game files how is it bannable under the radar value this man मेरा मन करा बोलने का मैंने बोल दिया नहीं है बैनेबल you're literally running the game windowed mode and you're changing the desktop resolution to 1280 960 there is not a single change no How is UFO? Infection थोड़ा है No, it is actually correct. Allowed नहीं है. Not at all. Stay and take more medication. Not allowed. मेरे को कौन सा कमबैक करना भाई मेरे को तो केवल ही खेलना है एटलीस्ट पहले तो अलाउड नहीं था मेरे को पता है बिकॉज़ पहले हमने पूछा ऑब्वियस पहले अलाउड नहीं था अब पता नहीं क्यों कोई खेलता था क्या पहले ट्रू स्ट्रेच पे इंडिया में 2-3 जन ने ट्राई किया था पहले आर्यू बोल रहा था कि विन एक्सपी यूज नहीं कर सकते बाकी इशू नहीं है looking to pressure on Tay again. They put some real value in Meteor being solo. And he's got an op this time. हम तो रैंक टीम बन के बैठे guys. Changing around who's pulling that all about. Texture had the early pick before, but Meteor the solo anchor on this side of the map. Meteor भाई. Only now having a player come towards him. Munchkin that's around. Meteor भाई. Not even, previously we've seen 𝐼𝐼𝐿𝐼𝐿. This is where he'd throw over a haunt and figure out if there's someone in the area. That's a tough smoke to play around. Yeah, you take the risk because if he goes down here and they close the distance, there's no way out. He'll still get one kill at least. Take that way out here and now. Does he have a shorty? He doesn't have a shorty. He has to fall back. Dangerous. The nade from Texture might delay them slightly, and he has a showstopper to work with. He's sticking around. Oh, fucked up the landed perfectly, and now the showstopper comes through. It doesn't find Oh my god. क्या एक सेकंड रिवाइंड सॉरी रिवाइंड करो नहीं देखा मैंने मेरे को फिर से दिखाओ हां बचता है खुद को shows up and he's got the little one out as well. The one from the bundle. He'll be able to use it with 10 HP. Second बार reload कर लो. He just backs off. Posts up with the operator again. The snake light's coming for him. He's got to back off and he does. The third kill. मर गया Act 2 वाला मर गया Will eventually drop him. But John QT's got 2 more opponents to take down. One on the way with an ult in the back pocket. I don't know if they'll use it. There's 12 But time नहीं है. I don't think we'll be able to clutch it because seized आ जाएगा. हाँ. Lucky aligning him up through the wall. Insane. A seize to catch him, hold him in place, and a headshot straight Brother, through the wall that to put him sequence down. was very good. Meteor though, 3 kills on 10 HP. पहले जब वो सैचल तो था ना सेकंड का He got बिग ब्रेन dude. in the first, before he even saw anyone, he got dinged through the smoke and then just wipes out. Hello, eventually. Hello Anuj. Anuj भाई नमस्ते अनुज भाई नमस्ते नमस्ते. Huge individual step up for the side of Gen G. They've had so many. मैं और बजाज बस अभी सेंटिनल्स का कोचिंग चालू ही करने वाले थे कि आप आ गए बढ़िया करो नहीं अब आपके सामने थोड़ी and yet he's still going to give up that operator to Texture. क्या चल रहा है भाई गेम में जिंजी क्या चप्पल दे रही है going to give him an angle. You're not often going to be too scared about an op being posted on. बात तो सही है अनुज भाई. No one reveals themselves. Sentinels hunkered down. There's 5 players here. They don't want to give it away and have the rotations of Gen G come through to catch them. Instead, they're going to wait, but
Anyone pokes their little nose out before that smoke is up. In fact, the smoke is for stairs. Texture's still good on the angle, but he doesn't find the shot. He's going back for more. He's sticking around, and he's caught his shot. Zel's is down. Blast packing away, being chased by the Boombot, but he's able to post once more, and the door control remains in the hands of Gen.G. There's no threat from his left-hand side. This man only has one direction to look at, and Sentinels there's no space for them to capitalize on. Instead, they'll break the door. At least that's the idea. Meteor's waiting for that too. Oh, no, in fact, that was Lakia breaking the door. Yeah. बताओ भाई, I think इंसान he's राइट बॉडी लगा almost के trying to give his teammate an opportunity to make a play through the door. 30 seconds left. Still, Sentinels sit, waiting for someone to make an error, someone to make a mistake. They've still got utility. The Nightfall previously used by Lakia delayed them. पूरा throttle कर देने, कुछ करने ही नहीं दे रहे. They cannot do anything. No, वहाँ पे हो गया, stall है पूरा, stalemate है. पूरा ट्री कंट्रोल साइड कंट्रोल लेके खेल रहा है. Whatever you do, they can counter easily. हाँ. Save कर लो, मैं बोल रहा हूँ, next round खेलते हैं. These extra weapons because they do not want to allow Sentinels सुन to लिया get away ना. scot-free. ये सब एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट. एक टाइम आउट भी लो. Haven't pushed the door, so it's only the one player hunting. पहले ये देखने तो झूल कौन रहा है. वो बड़ा बचा रे Not बाबा. this time. So few weapons saved. लाकिया झूलता होगा. Texture. He swung into 3 players, but again, How is there's a Texture lot so of good, utility coming their way. भाई Texture used to be this good only. He was one of the finest. I'm not asking how is he so good now. I'm saying how is he so good. वही बोल रहा हूँ कि इतना अच्छा वो था पहले भी. It's just last year के बाद people started underestimating him a lot. As well, that's the main thing. It's the See, I told time out, they took time out. See, phone call है guys पूरा. इधर से वहाँ तक link है. To reclaim tree control. Definitely risky. No doubt about it. But that has been what Guys, मुंह छुपा के बोल लेते हो, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा. And now Sentinels clearly feeling after the last 4. Tense is not tensing. 5 rounds, 4 have gone the way. ये क्या rhyming है? भाई जॉन क्यूटी सिर्फ श्योर बोला है. 4 बार श्योर बोला है What उसने. we've seen from them, आप प्रोफेशनल लीडर हो. on the attack, which is a very scary आज मेरी स्क्रीन पे आना मैं कुछ एक ही बंदा मार रहा है ना तो उसको ही बोल रहा है भाई और मार. Sure. मारेगा ना sure. Please मारो sure. यही हुआ वहाँ पे discussion. 10-2 versus Loud the last time they played. 9-3 versus 100 Thieves. They've always बोला है ना लाके झूल रहे हैं ना. By Munchkin by or Zelsis by. Munchkin by झूल रहे हैं. झूलो Munchkin by झूलो. For this squad, one of the bigger tests that they've faced from a team that I think the community has been favoring Sentinels for sure, but we even heard it from the desk. You know, they're the This season, John QT is the best player. Necessarily if Gen.G win, like this is pinned to be a close game and one that Gen.G have chances in. Or maybe it's better to say not the most incredible upset we've ever seen. जब हाँ पहले T1 में अच्छा नहीं था वो. T1 में नहीं. हाँ. They looked like वही better तो. teams so far. Sentinels. भाई जेट केजे सबको लेके उसका डिसीजन मेकिंग कितना क्लीन है देख रहा है. जेनजी में समथिंग आ गया. Prowler surely. He's left in a bit of an awkward position. Does he stay around there aggressive? No. It's time to fall back. It's a good thing. करना चाहिए था. But that's the thing. हाँ. पर लॉजिक सही था. वही 5-10 सेकंड के बाद थोड़ा सा पुश. बट पाउडर के साथ करना चाहिए या साथ में करना चाहिए. तो आप क्या है दीवार के अंदर चिपक गए? I concur. So they made sure that they cleared everything. The operator hanging out in the wall. That won't be able to be ऑपरेटर को बाहर मैप के बाहर फेंकना था. वहाँ पे क्यों छोड़ दिया ये लोग ने? ये लोग सी ही जाएंगे वापस. इनके पास फेड अल्ट है. Towards the A site, using this time John QT because of the fact that Sassy has his ult again. Not going to be used to fake it as he instantly catches both players. Good flash. Oh, I like this. I like this. Has already made it into the corner. They've got to be careful of this. This is actually a very good play, Baba. Oh, nice, nice. 30 seconds left. Headphone change करो आवाज नहीं आ रहा. But Meteor doesn't land the first and now What the fuck is going on, bhai? He's brave. Sticking around on that angle to look for a fight. His team That reveal fucked him more. Otherwise, was very smart. Oh no! Oh my God! By Meteor! Meteor भाई क्या है? ऐसा कौन खेलता है? पागल है क्या? Lakia, you know, he wants to just contain him, make sure he can't cross out to main. Mr. Crouch player, please. In the back of his line, they're split on the angle and Sassy isolates one. Nice. Right into his cross. My Crouch player, let's go. Out of Meteor for a Red Bull clutch. इधर तो रेड बुल कैन प्लस क्लच हो गया. This game has been a treat already. Crouch player को दिक्कत है क्या?
AA is नहीं having नहीं दिक्कत नहीं है बट worldly of a बिल्कुल game. अब्यूज करता है ब्रो Being लोकल able to सर्वर take this ओपन much space, बहुत even गंदा you, वाला he वो must have भी been around this angle, even putting in a snake bite just moments later, split second later, to stop him from being able to do that. But luckily, they have this man. छोटा वाला उंगली पूरा कंट्रोल के ऊपर है पूरा टाइम In Sassy to be able to punch things out. We've been देखा able to limit most of his utility usage throughout चलता the है ब्रो game. He also has the clutch in his locker. He knows something Again, we though, don't. this control instant So support when you from have it on Gen G, control, it's they like you can never sat back. crouch They whenever you never want. Yes, yes. ए टेक्सचर को थोड़ा सा भी शर्म है क्या भगवान का भी डर है इसको This is a man. मतलब सभ्यता रखने नहीं रखनी है इसको I've seen an भाई awful day स्कोप भी long नहीं before करके it's रखा up, but, you know, usually from a little अब किया जाके He does have the short. Anuj, why are you not talking? पूरा info है पे C star नहीं C if they go C now they're fucked. Well, this might be a वो लोग ये रिक्लियर करने आएंगे snake bite up and over. That's probably Icebox हो गया, Icebox ban है. Apple का है. Unfortunately, he's a bit more aggressive than you सासी भाई को anticipated. भगा दिया रे बाबा रिएक्शन तुरंत आना चाहिए रिएक्शन तुरंत आएगा If they go B that's आया वो लोग कुछ बस किया थ्रॉटल कर दिया मतलब इतना इन्फो है रे इनके पास तकलीफ नहीं बी जाना चाहिए था बी आइडियल होता जैसे वेंका ने बोला पर बी पे स्मोक डाल के पुश कर दिया सी के तरफ उनको वापस भेज दिया Still a chance, but just Wait. look, two players ready. interesting play actually. I don't think that's good. नहीं बट इससे Thought that he might have flicked away. Karen's still here. भाई मेरे को तो समझा नहीं कौन सी तरफ घुमा रहे सेकंड Back again, leaving it all onto Zekken. 25 seconds left, trying to fake out the plant. Oh, he knows. 𝐼𝐍𝐿𝐒 not wanting to overextend. Doesn't know about the flank exactly though. where he is, and Zekken's gonna go hunting, gonna try and take this man down and do exactly that. Oh he knows. चलो 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 रे बाबा चलो सेकंड बाबा Ready. He'll make the realization that this is going to be a push towards the हाँ ये भी Satchel भाई go running in. That's वेरी गुड Texture instantly puts टेक्सचर the भाई ने lead. गोदी में बिठा दिया Stick उसको this may even go down to just 25 Oh my HP. god. ओ But माय Zekken's still standing, गॉड still holding on. Is he gonna fake it? No. Bros don't fake. Don't fake. Bros Already don't gets into fake. half. Looks to try and bait him in. He's got so Pussy much boy. time to play with. And he has Oh my god. बहुत बोलते हैं. the shot anyway. Oh my god. V3 बोला Pro था लग मेरे रे लिए. बोला था रे God's बोला fate था V3 Pro. भाई बोला था don't भाई fake. Second by का कौन सा mouse है? Headshot. It's what it Second needed का to be unreleased. anywhere V3 else, Pro. and he was going to be traded out by इसका the V3 bullet Pro. swinging back at him. Razer V3 Pro. It was a double Yeah. check. I thought Raise it नहीं हुआ was क्या? away, and I was like, there's no way. नहीं ये Viper Razer फोन करो से Razer वो है को. ना. Shame on you. You Razer ain't played it again. Razer से It was sponsored है Karen. ये I think Zekken. literally the round before. Guys, जी भी Razer sponsored है का ना फोन Razer फोन नंबर दो It's chat in में. that same corner, so of course they're going to check it. अन्ना जी स्पॉन्सर्ड है रेजर से आप बात कर सकते हो Gen G. Well, they were all smiles. Not long ऋषि ago. भाई Now, एक feeling इधर pretty भेज deflated after देते that, but they're only तो. one round behind, and as we said, हाँ Sentinels जी. usually have a very strong attack, so it's not a bad position. अभी तक to सिर्फ be in. Zekken को Even use if it करते हुए ends मैंने देखा 7-5, किसी को they नहीं. called a timeout here. But that's the thing. I feel like it's one thing losing a round to your own mistakes, your own misplays, or your opponent maybe माउस doing पैड भी उनका something यूज कर you रहे हो. didn't $20 का माउस पैड यूज करता है Zekken. don't really believe that टेक्सचर Gen बोल G रहा है did भाई anything गलती हो गई रे wrong बाबा. in those clutches. Like you look, the last But it two, wasn't such a one giga week, chat move you're sat there if going, it's- okay, if they he actually tried to play it started. together. Sassy manages to isolate He the could have fight actually, मतलब and win a expected round. नहीं था. Then Obviously, you look at the hindsight, next but one. just Lucky imagine how falls back frustrating it so would that have his been. teammate can rotate, but Zekken gets बट aggressive. वही है ना takes him बेसिक्स down, पे खेलते हैं texture, ये लोग बेसिक्स में rotates हमेशा यही बोलते हैं कि पहले हाफ quickly, डिफ्यूज takes him करो on the farm, and with उसके बाद 25 HP, मतलब gets सबसे पहले हाफ off, डिफ्यूज ट्राई करो waits फिर for उसके his बाद opponent छोड़ना and gets insta one तो tap. वो Those are two ऑटोमेटिकली rounds where Gen G दिमाग में looking बैठ ही like, जाता है there's not क्लचेस और really an Oh, he's इंपॉर्टेंट using मोमेंट्स में कि Razer हाफ V3 डिफ्यूज hyper करके speed क्या? Sentinels were just better नहीं with नहीं. those individual That's different. plays. And Oh, that's sometimes different. That's all it is, man. Like there Yeah, are going to be he's rounds using where your opponent Viper just V3 goes Pro. off, and there's rounds that Gen G अभी have तक had V2 Pro very आया similar. बस. I mean, even earlier on in this ओ tournament, भाई ये देखो over on split, emerging from a smoke. ये 4 क्या कर रहे shots. हैं? ओ भाई Kills. What? Got one through the smoke already with 10s dropped. And Sentinels in this last round on their attack side. Zekken bro ज़्यादा themselves खुल in a गए. disadvantage due to scrappy early. अन्ना A सेंडर्स को fights. बोलो ये करे. Oh, no. वही बोला था The बट timing is Perfect. ओ भाई Toxins down. Good trade from क्यूटी John भाई Qt. तो They needed something ऐसा extra. They ट्रेड needed लेते हैं to मतलब bring that चांस back ही नहीं to at मिलता. least within 2v3 क्या? contention. With the way the last few rounds have KJ का gone. मुश्किल लॉकडाउन लग है रहा है. सीधा. हर रन पे किल जो अल्ट है. But I Surprised think to see the clutch. Also, But Viper अल्ट है. अरे इधर लो ना. वाइपर ऑर्ब लो. क्यूटी भाई. Meteor's already set up. ये प्लांट पे आ जाएगा उसका. Is great. तो पहले ले सकते हैं ना वो अल्ट करके प्लांट कर सकता है.
down. I don't think he wants to ult also. Especially on this side, Tom, you can very easily box them in, and the only way out is it's a long run. Probably not. Oh, they're keeping waterfall. I think You should can run. ulti CT.
There it is. Good molly. Ultimate ready. You hear the You voice should line run. called. Waterfall ult. Nice. Don't come to my world. इधर box के ऊपर आ रही है ulti already. Aggressively used. Oh, they know they're going CT. Oh my god. Pushing in towards the spawn angle, but that's where Sassy's waiting. What a The smoke. orb's obscuring him for just a moment. It's a beautiful angle. He can even get out of here, but they drop Oh it. my god. Well Destroying fucking the played, lockdown bro. as well. Clinical play from Sentinels, leaving Karen to do it all, and he doesn't What a stand round. a chance. Nice off guys, nice off, nice off, nice off. हर एक क्रिटिकल डिसीजन उसके बाद उसका रिएक्शन कितना सही था उसका वॉटरफॉल अल्ट वो स्मोक के पीछे उसका खड़ा रहना फिर साथ में पीक करना सेकंड प्लेयर के लिए मतलब भाई एक छोटा से छोटा डिसीजन भाई ओह माय गॉड दिस इज व्हाई दे आर देयर मतलब and they've earned themselves a 7-5 at the half. Well, a lot of eyes have been drawn to Sentinels and Tens, one of the main players. He's been sensational. It's time to hear from some of his friends and family over in the audience. Tens के friend कायडे होगी mostly. हैं जी? What? Hey guys, Mika Fast कौन है here. भाई? वही Tens की mom है, हाँ. Very special guest. I have Valerie Tens' here, who uncle. you all know as Tens' mom. Uncle. Tens' uncle. The whole family's out here. Let's get a round of applause. All right, I saw you guys getting really, really into the game here. Of course, how are you guys Where is doing Anuj? so far? Why is Anuj not It's talking? amazing. Hola, my friend. क्या ना? Why are you not talking, Ranuj? अरे देख तो रहो ना. It's been awesome here. Watching the आवाज Sentinels नहीं आ रहा play their game. आवाज आ रहा है, बात क्यों नहीं कर रहे बोल Actually, रहे? a big influence on देख रहा था, Tens match while he देख was, रहा starting his gaming ये career. स्ट्रैट वैट कुछ कॉपी मत करो, हमारा अलग है. Definitely a gaming family and just made sure that he stayed competitive and focused on getting better. And he just took it off from by himself from there. वाकले कॉल And देते हैं. Valerie here told me a Wakle little क्या? secret. What is your rank, वाकले कॉल sir? देते हैं ना अपने स्टार्ट. Probably exactly. Decade Ascendant, but my peak's Immortal too. Whoa! Let's give a round of applause for that. Now, of course, it's massive that you get to see your son here. You go to another corner of the globe, and you have fans all over just applauding his name. How does that make you feel? It's very heartwarming. उसने बोला माय पीक इज इमॉर्टल तो किसी ने ताली नहीं बजाई जब उसने बोला हाँ bro, peak amount पे was ass भाई. God speed का ज़्यादा peak है उस. Tyson, oh my god. So proud. वेंका भाई. Okay, bro. ठीक है. I don't know. I get it. You don't like me, but ऐसा तो मत call out करो वेंका भाई. Can you give a massive shout out to Sentinels आपका क्या and peak है? Tyson playing up there right now? Let's go, Sentinels. You guys are Unlucky, amazing. man. Let's go. भाई You वेंका won भाई तो भाई this. बहुत डायरेक्ट हो गए भाई. Let's go, Tyson! Let's go, Sentinels! याद रखूंगा वेंका भाई कासिंग डेस्क पे याद रखूंगा मैं. Sorry bro, ऐसा मत करो. अभी देखो भाई वेंका एक गलती करेगा ना ओवर पीक करेगा ना मैं बोलूंगा भाई. कभी नहीं बोलोगे फिर. Come on guys, let's go third map and win it. Sentinels, let's go. Pistol round हार जाओ as usual. Okay, fair enough. 7 अंदर to 5. स्क्रिप्ट आ गया क्या? Sentinels doing pretty well at this सब stage कुछ of the बोल game. के We said पहले. they're used to a very strong attack, and sure, there were some stumbles. But now let's see if they can get off on the right foot. टेक्सचर जाएगा Techie by CX Pistol shoot or round what? away. One ghost, and just classics to back it up on that defensive Nice. side. भाई लेकिन डिफिकल्ट है with Not Viper showing and their this thing to attention go just in. yet. They've got some control for the A push. Floor is lava looking होने for वाला any अभी थोड़ी देर में aggression. देखना. हाँ, It exactly. looks like the intention is to take this to C or open that door and quickly double back. The smoke timing We're going all the will way back. deter them for now. A little bit of space towards that B side, but it looks like Sentinels have a decent read. 2 players walking their way back up. The Prowler's actually going to give it away. There's a couple of players here. Zekin does have his match nade हारा तो available. एक और If he chance wants है, to एक और try chance to है. dive, instead he's just going to spam. Jackie He's boy. taking भाई it. precise gunplay guys, precise gunplay. Sneaking into that corner as well. It's a beautiful crossfire if they do emerge onto the site. Deep smoke stopping for any C aggression. Turret watching the push up on the other side. 2 players on C as well. Sentinels have no worries on that side of the map. Or B. Tens has But been A very silent in this come match, under guys. threat. They've lost robo control. They've seen players here, and they're making a quick reaction with a 3-man rotate onto that actual site. So well placed for this push. Tens of smokes has made it awkward again. Already though, Munchkin's able to trade one back. Paranoid is missed, and Sassy's going to try and capitalize off it. But Munchkin lands another shot. इसको हिंदी में थ्रो बोलते हैं. Somehow they're turning this. इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना? Snakebite into position, but it's not पता नहीं, खाली हिंदी आता है मेरे just को. holding at least for the moment. But Correct. Celsius Oh again. no. Is going to be able to bring this back. Both players launching. Oh my god, bro. इसकी settings खोलो भाई. Just whenever
By Manchin तो low sense player. See, as scripted, it is happening. उन लोगों को बोला गया पिस्टल हारने के, हार गए वो लोग. I mean, this guy was. Bye. अबे ये भी low नहीं है रे बाबा, छी रे. Get me wrong. Pretty sure he came out of the first map. Yeah, the first half with 2 Yes, kills. point 3 के नीचे कोई player है कि नहीं इस server पे? And now he's woken up at such a crucial time for this squad. It's not just the 4 kills. He's one hit. But I really like what the Omen was doing though, just jumping around to make noise. लाकिया का हेड और कैमरा का हेड एक ही है guys. By hiding and killing 3 people, and he's like, "Woo!" टेची भाई? खत्म रे बाबा, खत्म. Deathmatch चालू guys. I'm sure he's going to be hyped up after that one too. Tense though, sneaking around the corner. Good for अरे flash होता है imagine. Good catch by Munchkin. Good react. And the follow up from Lakia closes the round. Pretty clinical on the way through. One player lost. I need that much slower because my brain wasn't able to comprehend how. जेंजी को सपोर्ट करने का वक्त आ गया. खाबी नहीं. सेंटिनल्स का जर्सी पहने. Even still, relatively clean. I'm seeing Meteor with a sniper on attack, and I don't mind it because at this point, चलो अब से कम बैक. 17 and 9. He may not be on the duel list anymore, but he definitely has that अन्ना duel list. 4 half armor है. Meteor के पास outlaw है. Couple off. Actually, both players not that far away from ये the भी showstopper. scripted है Could be guys. a big round for the Rays players. Especially with the economy kind of low for the attacking side. Texture, there's one already. Now just one from the showstopper with most of his HP still. कहाँ जा रहे हैं Zekan भाई? मैप इधर है. They haven't gotten away with it scot-free. Karen's been lost. Omen on each side out. Paranoia is no longer in play. 𝐍𝐿𝐶 with one of the stranger angles you'll see held with an oath. It's just a fallback, so he's covering C and B with his utility. Cutie बोलते, चप्पल For बोलते. JohnQT, there's the advantage claimed. Although marginally considering Sassy's HP. ये क्या पर रिवील है? कहाँ से आ रहा है? Trade off that first kill. I think it was actually a solid reveal from Lakia that actually gave up Tenz's position. अरे वो सब बोलना है इधर-उधर राइड डालने के लिए. There. नहीं दिखता है ना. Gen G that they were going to be challenged. But even still, it's going to have to be an almost complete reposition. Now they've got the turret, they've got the alarm box, so they know that there's not really much of a chance that anybody's got गन this स्विच कर सकता था, उसने नहीं किया, उसने outlaw ही रखा. Information is barren for the side of Gen G. They have no He idea knows what something they're we don't, pushing bro. into. You mentioned that Odin and its position. Depending on the plant, Public C जा रहे हैं, C पे खाली KJ है. and he's वो भी holding इधर on to नहीं one of his उधर है. nanoswarms. With 20 seconds left, sure, it's probably going to end up in a retake, but there is a chance that this might be stopped by 𝐍𝐿𝐶. There's the nano activated that's on. बस है ना, 𝐍𝐿𝐶 को टाइम नहीं दिया रिएक्ट करने का. अब वो आ ही नहीं सकता. अब रीटेक पे खेलना पड़ेगा. Safe in the corner. Wait a अभी little GG longer होता. after the nano what a to cut plant! down, and that is a very tight plant. I think he's just about Oh got it, but भाई. no spray coming through on the Balls other side. भाई. That was 0.1 Action or भाई, आराम से. 0.2 of a second by my read, but just about close enough to allow it to कोई go UC through. नहीं With the बोलेगा. texture down, the numbers thin even मारा further क्यों नहीं on उसने ऊपर the उल्टी? attacking पता side. नहीं. Now the defenders, I suppose, of Lakia? this site, one found by Lakia. Meteor needs some impact. Nice with this, Meteor. and he'll find it. Another kill, but he's 4 HP. 1 against 2. Nice The try, nade nice try. hunting him down. लेकिन is विनेबल था रे Second. Gen G के लिए. Mission जीतना found चाहिए. for Sentinels. अल्टे क्यों नहीं मारा उसने? I think sound नहीं आता यार, लैंड पे A कम little आता है bit more थोड़ा. costly, but they did Mask हो have गया a होगा. fair amount of rifles going into that as a bonus. Unlucky हो गया. Again, though, I'd like the delay. The fact is, that came down to a split second, and I think there was a very real world where Lakia fat fingers that, and they lose the round. Just Munchkin भाई झूल हो. Yep. So insanely close. Good positioning, though, meant that they were able to find a lot of these kills before things really got too dangerous. And now we mentioned the showstopper. Texture used his in the last round. Zekken has his available now. These rounds are trickling in bit by bit. The lead only ever summed up by a round or two. It's never safe, it's never secure, nor are these players. Early aggression, again, from Sentinels. A lot of utility, and most importantly, 4 players here. Paranoia used, Zekken gets caught by the other side. Zekken doesn't give a fuck, He's not able to bhai. get a clean shot off on the showstopper. It's interrupted, and Sentinels start to fall back, concede some of this space. It's a good battle. Challenge bye. And they thought they had a lot to work with. ज़ेल्सिस भाई Meteor क्राउच sneaking पिक करे through ओडिन B, but लेके. he's अब being समझो caught. क्या चल रहा है. It's now back into that awkward scenario. They had so much space, but also पूरा ट्री that तक क्लियर takes कर off दिया वो लोग ने. all of that extra killjoy utility. So हाँ, और उन्होंने देखा ना केजे को बी आते हुए तो तुरंत सी पे जाने की कोशिश कर रहे हैं. Contract gameplay with Odin and Skin.
walking into the lines. I like what Munchkin is doing though. Utility, I don't think they expect him here, bro. Because उनको B पे दिखा दो. waiting with his gun in hand, and he's going to win the fight again. Oh, even look at the spam through. He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the round. You don't really see plays like this. Oh wow. ओडिन लेके पिक कर इसको शर्म नहीं आता बिल्कुल भी ऐसे ही वॉकिंग इनटू द राउंड भाई भाई चालू बजना चालू अमेरिका वालों का बजना चालू लव सम एनी ट्रैश टॉक और चप्पल दो जस्ट भाई चढ़ जाओ उनके ऊपर चढ़ जाओ Every part of that was so beautiful. Well, the realization he needs to go for the wall bangs, then that they're going to swing him. He's Axwell is playing at Chennai. A little more awkward for them to land. Like this is good. The swing here. Axwell is playing in Chennai. Where Karen was looking to pre-fire on. Like he could not have read that any better. What an unbelievable play, and then to actually deliver sprays like that, hip firing when you're just beginning it, you have a lower rate of fire. Unbelievable. I'm gonna dream about that tonight. I'm gonna dream about that tonight. बोलता है. No, Bangalore में ना अच्छा Bangalore में खेला है, but the dreams of Gen G's 2-0 seem to be slipping away. Gen G अगर ये round निकाला ना. Extending that lead now back to pistols and a hero rifle for Texture. निकाल सकता है. He's had his moments in this game, but most of it has been लगे वो तो सोचो. with an operator in his hand. क्योंकि Once again, अगर घुस गया साइट में मंचकिन का एक किल प्लांट और फिर अल्ट में ये लोग के पास वेपन्स हैं ऐसे जिनसे ये लोग रोक सकते हैं. Instead, they're going to go back, look to put some pressure onto Tens. Maxwell नहीं रे बाबा, Axwell, AX. But even still, all he really has to do he's is a DJ. get that information. Previously part of Swedish House Mafia. Now he's playing separate. ये नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से. You'll see Tens flex a lot. कोई फायदा नहीं है जाके. The way they've been playing it on defensive side, he's often just the guy throwing the paranoia and trying to get involved afterwards. Ouch. 30 seconds. We go to a map 3. Might see a little more from him. Gen G, few pistols, but as we said, you know, it was nothing but MasterCard thrifties starting off that first map. No reason we can't return to it now. Meteor's flanks have been caught again and again. This time it's Sassy to find him, and with 13 seconds left, they need to make a move onto the site. 10 on the clock as they get close. Blast pack still in play, Ingrosso, Axwell, but Steve not moving him Aoki, fully Steve off. Angelo. Just about far enough away that he could continue planting. Karen falls. Pistol standing, Guardian spotted and dropped, and it's cleaned up nicely by Sentinels. It's only Munchkin left. Munchkin by. Near that spike to stop this oh, game. short ray. Oh, Munchkin by. That's where the hope of the round ends. Never mind. Yeah, in the end, he almost has to go down just to make sure that he's going to have weaponry but for the next round. And there's going to be a small. क्या लगता है बजाज भाई? Aggression देखने मिलेगा यार. Tens by 29. देखो A का कंट्रोल बहुत इजीली मिल जाएगा इनको. They have got the crowd. Definitely seems like they are the favorites, even if they're on. हाँ वही A कंट्रोल इजीली मिल जाएगा इनको. वैसे स्लो खेल सकते हैं. पर्सपेक्टिव भी है पेट का. I think so slow खेल के फायदा नहीं है इनको फाइट्स चाहिए अब जेनजी को. They're going to be put under pressure, an immediate push here as they take control of Mound. That Util in response, good paranoia, but too late. The player's already able to see. This could be down. everything. Fades from but the angle. Wow, क्या बात. In a 4v4. Good retake ultimate online for 𝐿𝐶. That can counteract the Viper's Pit as we've seen before, but the potential to play aggressively on the back of 𝐿𝐶 could cancel it out. It has for Sentinels previously. Tens on the other side of this. Smoke has John QT covering the cross. That was so well timed, Ray. Holy shit, Karen. That was actually so good. And now the Nightfall gone all the way through. John QT, 13 HP, but he fades into the corner. And now he'll be able to get his health back online. Even notices the Nano Swarm chasing him down. Snakebite now landed right on him, and he's jumping forward. Oh my God. By another piece of utility. This time the alarm almost. Sassy. Nah, bro. Ulta. In on the Odin. Oh my God. भेजो घर भेजो रे बाबा घर भेजो इनको. And a player spotted, only one to root out of that Viper's Pit. And Oh, but yeah. the angle essentially. They're running for the hills. Nice, 𝐿𝐶. He'll catch 𝐿𝐼𝐍𝐿𝐒, setting them up no. to close this out. Nice one, 𝐿𝐶 is GOAT, my GOAT.
as 11 goes on the board for I Sentinels. actually, brother, close what to a a round. Watching tomorrow's race early morning. Tomorrow is not race, no? Tomorrow is qualifying. This tournament, we've seen a lot of teams tomorrow F2 का lose their own sprint है map pick. We've और seen qualifying है teams सुबह fight 11 back. बजे से. Mentioned it as well, 10:30 is qualifying. throughout their तो last Sunday 9 9:30 is series, race. Sentinels have Red Bull was a taken little off in the first FP2, map no? every single time. Or FP1 was it? But we're seeing that they have no Little off. By little off, you mean they were second? response in map number Yeah, 2. 3 tenths slower though. 3 tenths. Yeah, Australia is a little faster. And that to max. I've seen a massive resurgence from Zelsis. Ferrari, according to qualifying simulation pace, is first, like topping the chart. Yeah. Yeah, but that's also like Tracks 1 lap. Ferrari always prefers. हाँ. Legend that is Solo, Australian an GP. opportunity to try and Let's talk this go, one through. As Leclerc, said, please. We have seen him play against Sentinels. The last Tens time by he Chulo. played Chulo in tens the by. upper match to go into the final. and Imagining lost. Lewis in red. Now he has to find some wise words to try and थोड़ा bring this हल्का team सा over back, extension हो have गया an जेंजी का. opportunity for the 2-0. Otherwise they head into Breeze. And honestly, उनको एरिया लेना ही था ऐसे भी, these teams so would look can't fantastic really on blame that them. map, so I have no idea which way it will go. It's going to be whoever's made best use of the downtime, what little of it there is in between these games. Again, talking about the stakes of this match. कल ना उनके सामने क्या चड्डी बच गई टेंस ने. आज टेंस को शट डाउन किया पूरा. The fact that whoever wins this, first of all, gets to watch their opponent play. Always a great advantage to have, but mainly they get a day off. They can prepare, they can sprint, they can relax, get up late, whatever And they the want. veto advantage. Chulo tens by Chulo. The impact of winning this series, it's not just about, oh yeah, they can get to the grand final anyways. They can, but they'll be on the back numbers foot when don't they lie, think they're Anuj bhai. running off back-to-back game days. 4 rounds in a row. This Like, attack oh, side for Gen he's G also like hasn't looked great. We're going to see the same again. This My adaptation, Problem is Godspeed. aggression, and then हाँ. Sentinels now Williams sits only in have the one setup car. on the A side. हाँ अरे क्या गजब. भाई वो बहुत बुरा करा यार. मुझे एल्बम बहुत अच्छा लगता है बट ये तो बुरा करा. मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ. मेरे पास दूसरा गाड़ी नहीं है. नहीं उसका चैसी फिक्स नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं वो पता है, लेकिन ये they can't fix this over. No, they can't. They can't. They already decided. They are कार्बन dumping मोनोकोक को कैसे Logan. फिक्स करेगा? टेप लगाएगा क्या मामा? Speed tape bro, speed tape. फिट टेप लगाएगा, ठीक है. They want this man to go for भाई पर दूसरे बंदे को बोला बैठ जा भाई. नहीं होगा तेरे से. हाँ. If he just commits to it, he could have so वो much उसमें value दंगे हो जाएंगे spraying फिर through that लोगों wall. को बोला The बैठने players का तो. creeping up towards the switch. बोल दिया already. बोल दिया. Actually बोल दिया. Alex हाँ. भेज Only one car. Only one car. Albon is going to drive. भाई तो लो मैं if I was Logan I'd be like अरे बहन चोद गाड़ी वो ठोका तुम मेरी गाड़ी उसको क्यों दे रहे हो? हाँ भाई वो गलत तो करा है एक्चुअली भाई. एल्बम बेटर है उससे बट भाई अभी क्योंकि तू लोगन है. ये तो भाई चीटिंग है Explanation is भाई. क्योंकि तू लोगन है. Is going to slow them way मेरे बाबा down. ये चीटिंग है. मैं तो भाई बोल Information in their रहा hands हूँ allows One second by George बोलते हैं, चेटी बोलते हैं. भाई. पर मैं तो बोल रहा था मैं चला हाँ अगले साल तुम गांड में. E3 Pro रिलीज हो रहा है. थैंक यू. Zelsis spraying away. It's 12 ठीक to है. 7. 5 in a row. बराबर for कि नहीं Gen बजाज G. भाई? बजट में रहा. हाँ. Yeah, they were so ready for that. देखो बोल के भी हास ही बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ और बोलते हैं, ठीक है? Play the retake on, see if they Hey, needed Haas to. is So actually Zelsis' doing only well. play was to just get out of there. They had Bhai, 4 but players I waiting have for the B-side. I have stopped Second the Nightfall goes supporting in. Haas since they let Gunther go. Second, Someone who's doing well is Sentinels right He can now. sense the blood in the water and जी. gets himself a couple of आप headshots F1 से गेम easily. में कहाँ आ गए? 5 rounds in a हाँ row तो now. पिवट कर दिया देखा. And that's अच्छा exactly what Gen अच्छा G segue did on था. the other side to take us to नहीं overtime. बहुत रफ था रे बाबा. चलेगा 2 मिनट में हो जाएगा राउंड. उसके बाद वेफर के बारे में बात करेंगे. Sentinels Right. already they're getting the early read. The spam almost gets the opener. Oh, it's going to. Because after you If he spam gets it, that, no? you spam this wall. This is a goated position भाई. ये position Get very close, but not Odin close के लिए enough. इतना गजब है. Zelsis is now back on the site, reloading as pressures applied. The door is open, but all the while Texture is creeping his way towards the stairs. 2 players spotted, one up close, and even suspecting one near the switch. Zelsis has a lot of information. Oh, and even Zelsis भाई चेटी बोलते हैं. the blind fire pays off. भाई. Karen's in danger too. He was getting खुदा sprayed at. मेहरबान तो गधा पहलवान भाई. किधर All भी the मार while, रहे they're गोली just लग रही है. hoping that on the side of Gen G, somebody look on Sentinels will make a mistake. उनका fade down हो गया. What is happening? Why are they winning on each other's All map the picks, way bro? up, so he knows that they're not going back in this time. यार I want to see 10. Last time is going to be fun, bro. Yeah, breeze. Bro, Tens बोलेगा fuck this भाई, मेरे को नहीं खेलेगा कंट्रोलर. जेट दो रे बाबा. What's it? Remember 10 is Jet Sassy against bhai. Ghost का I think. टाइमिंग हो गया सासे भाई. 40 kills. Meteor's found 40 another. में यार Somehow this 4 round वन टैप has मारे थे become डबल डोर से. 30 seconds left on the clock. No, I don't think. Still have themselves. Fake set. No. Down available. ONG? The spam might actually I'm just not about a Sen get rid of fan. it.
It's still online Nah, at least for now. dude, Sentinels, Surviving an what the extra second and they haven't actual been able to heck? put the pressure on. Putty bhai, putty bhai. Bhai, cutie, oh, इसको फर्क है. He's on 1 HP and through the smoke. भाई ज़ेल्सिस बजेगा. Let's go map 3. ब्रीज आ गया ना. Let's go. ये सोल पेट्रोल कौन है भाई? हाँ ना भाई, पेपर एक जर्सी में क्या मस्त लग रहा था वो. 13-7 for Sentinels. ऐसा बॉडी बन जाए रे तो बाबा. सोल पेट्रोल तो सीएस की टीम थी ना. पता है. फ्रीकसॉर्ड वगैरह के साथ. हाँ, फ्रीकसॉर्ड. भाई जॉन क्यूटी भाई अचानक से इतने सेक्सी क्यों लगने लगे भाई? टॉप फ्रैग कर रहे इसलिए? मामा ब्रो, आप थोड़ा. कोहली मेरे को पता है क्या बोलता है कोच फीड? क्या? कि मैं बिल्कुल जॉन क्यूटी जैसे दिखता हूँ. मतलब वो कोहली. It's that radiant glow, true भाई. They call me the rank digger भाई. कोहली उसकी तरह दिखता है. पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हुआ करता था. उमर गुल, हाँ. सीएसके की बैटिंग चालू हो गई गाइस. एक क्वाड ने चौका. उमर गुल का एक्शन भी क्या था रे? नहीं, वो तो सोहेल तनवीर का था, सॉरी. भाई सोहेल तनवीर का जो एक्शन था रे बाबा. इस बार जॉन क्यूटी इन जारसोस वीडियोस ब्रो, रियली मनी चेंजेस एवरीथिंग. ऐसा है क्या भाई? सही में? So you're telling me I am not ugly, I am just poor? अभी रेजर से 2 ही लोग स्पॉन्सर्ड है वैलोरेंट में, कैंग और सेकंड. भाई वेंका भाई, आपको पता है मेरा नाम कहाँ से आता है? नहीं. रेजर माम्बा. That's my first. So the mouse. Yeah. Nice bro. भाई किसी दिन रेजर ने स्पॉन्सर कर दिया ना भाई, उनको बोलो माम्बा भेजो पहले तो भाई. बात की बात है बाद. मेरा फर्स्ट माउस है इंटेल 3.0 माइक्रोसॉफ्ट. मेरा माइक्रोसॉफ्ट बेसिक करना. सेम माउस इंटेल 3.0 बेस्ट. हां, इंटेल 3.4 बेस्ट. वो पीछे लाल कलर का लाइट आता था वही ना? हां, एग्जैक्टली. बेस्ट माउस है इंटेल 3.0. भाई पहले फर्स्ट माउस था लॉजिटेक G304. तो अनुज भाई पहले तो ये बोलते थे ना, जनरेशन गैप. वेंकी भाई वो नया माउस नहीं है वो. वो कोहली का अभी तक करंट माउस है. हाँ, पहले ये बोलते थे ना कि 1.6 में ऑपर्स के लिए इंटेली और असॉल्टर्स के लिए MX. करेक्ट भाई MX 508 में ऐसा लगता था भाई ब्रिक लेके खेल रहे हो, इतना भारी लगता था भाई. नहीं, आई नेवर यूज्ड MX 508. मैं ऑप नहीं करता हूं, बट फिर भी आई यूज्ड टू यूज इंटेल 3.0 ओनली. नहीं, फिर मैं चेंज हो गया ना. फिर मैं MX 518 पे गया था और फिर आया था किंजू FK2 जावी. MX 518 आई स्टिल रिमेंबर का माउस है ना. हाँ. वो तो अभी नया वापस रिलीज हुआ है, मतलब सेम ओल्ड डिजाइन के ऊपर. भाई लेकिन 518 हर कैफे में भाई वही मिलता था. इंटेल 3.0 से डायरेक्टली वेंट टू डेथ एडर. हां, वो क्योंकि सिमिलर थोड़ा शेप है, बड़ा मोटा. भाई लेकिन मुझे अभी भी याद है सेंसे लिया था एक बार भाई, जो दिल आया था रे वो माउस पे. ओहो आज तक. आपका हाथ अन्ना, आपके हाथ पे कैसे FK2 और ये सब जमेगा? हाथ पे इंटेल ही आना चाहिए. हाँ. इंटेली के क्लिक्स कितने स्मूथ होते थे. हाथ दिखाओ स्क्रीन पे, हाथ दिखाओ अन्ना, ऐसा हाथ ऊपर कर दो. क्या कौन सा माउस? हाथ दो. हाँ, ये मेरा माउस है और मेरा हाथ देखो गाइस. प्रॉब्लम ये है. अन्ना ये कौन सा माउस है अभी? ये स्टेंस फाइनल. ये देखो डेथ एडर देखो कितना अच्छा है. डेथ एडर देखो. नहीं होगा अन्ना. कौन सा माउस है भी अन्ना आपके पास? टेंस का. अन्ना नीचे का पूरा हाथ बाकी है अन्ना. भाई साहब कब दिला रहे हो पीसी भाई? सून भाई सून. और अनुज भाई आपके क्या प्लान्स हैं अब? कुछ नहीं, अभी तो चिल ब्रेक पे. भाई हेल्थ इंपॉर्टेंट है अभी सबसे ज्यादा. बात तो सही है.
हेल्थ के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। It's also so easy to just be like Odin go burr, but the way they used it strategically to punish the A pressure. नहीं भाई ओडिन को बर रही भाई दीवार के थ्रू बैक तो तुम आज 2 क्लिप खाली कर दो और तुमको किल्स मिल रहे हैं। क्या लगता है गॉडस्पीड भाई कप टू भी जीतेंगे? इजी या लाइक सी वो जैसे देखते हैं अनुज भाई, देखते हैं अनुज भाई, मतलब बाकी टीम्स विल बी स्ट्रॉन्गर, ट्रांसफर्स भी होंगे बहुत सारे, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। Bajaj bhai, if you ever need a washed up caster in your team, my doors are always open. I trust my players though, वो है, but वही है कि क्या चीज की बात हो रही है? Very polite way of saying no भाई। अनुज भाई was asking कि कप 2 का क्या सीन अपनी टीम में मैं Are बेंच you हो रहा guys winning it again? तू क्यों बेंच हो रहा है वेंका? पता नहीं गॉडस्पीड ने बोला कि बैठ जा ब्रो, तो ऐसे नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है, मेरी जगह कोई तो आ रहा है, वो बता नहीं सकता अभी। भाई ऐसा मसाज मैं भी डिजर्व करता हूँ भाई। यस और फिर भाई रूटरूपर्स कैसा मैप 5 तक गया था ना उन लोग का मैप, ये फाइनल्स वो तो 3-0 था, हमने चोक कर अनुज दिया। भाई ऑनेस्टली कम, मतलब ट्रू रिपर्स के लिए बहुत मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि उन्होंने 7 मैप खेले, 3 ओटीज गए, बट आइस बॉक्स में ही आइस बॉक्स हमारा क्वालिटी खत्म हो जाना चाहिए था, और फिर स्प्लिट पे भी सेम जो 4th मैप था वो भी वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। वी जस्ट मतलब लेट इट स्लिप, फर्स्ट ग्रैंड्स चलता है थोड़ा, बट अगेन इट्स अबाउट मेंटल। आई थिंक द टीम हेल्ड इट्स मेंटल बहुत ही अच्छे से, डिस्पाइट व्हाटएवर वी वर फेसिंग। बहुत जन सिक थे, वेंका बीमार था, होक्स बीमार था, so I'm just glad that we had that experience, जो कि आगे जाके हमको जब मेन आएगा इवेंट तब हमको बहुत काम आएगा। चलो बढ़िया है, गुड गुड, ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए। कब से स्टार्ट हो रहा है? ये भी नहीं बोल सकते। अच्छा ओके नेवर माइंड, ठीक है ऑल द बेस्ट बस। सून, पर एकदम वेरी सून। हाँ ट्रू, नो प्रैक अगेन। Judge bro. हाँ। I think you have to start soon bro. Yes bro, but एक बंदा गांव में है। Oh. Wherever तो we अभी go, आएगा गांव का पक्का? प्रॉब्लम कॉमन है। हाँ। गांव तो जाना रहता है ना सबको। भाई गांव में भी अलग मजा आता है भाई। अरे किधर चले ब्रो, मैं कुछ गलत बोला क्या? नहीं एकदम परफेक्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है गाइस? अभी थोड़ा डर लग रहा है मेरे को। मेरा ध्यान नहीं था गाइस, प्लीज बता दो, डर लग रहा है। बजाज भाई हाँ कुछ नहीं, 10:30 बजने वाले, बेड टाइम चालू हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ बेड टाइम, अभी देखो इन दोनों टीम में से किसका बेड टाइम चालू होगा। मेरे को तो पक्का आई हैव फुल फेथ इन जेंजी ऑन ब्रीज। अरे यार ये तो सेम कॉम खोल रहे हैं। जब जेंजी जीतने वाली है। एस्ट्रा वाइपर, वाओ गॉड स्पीड। जेंजी जीतने वाले हैं। यार ग्रे फॉक्स फैंस। मेरे को इतना इंस्पायर कर दिया, मैं एक गैप में इंटेल 3.0 माउस ले लिया। क्या बात है ना, परफेक्ट। अभी मारोगे ना हाथ पे बैठे। क्या अभी खरीद लिया क्या? खड़े ऐसे बैठे खरीद लिया? हाँ eBay में मिल रहा है, $170 में ले लिया। क्या स्पेलिंग क्या है? $170, 179। बाप रे बाप, भाई पहले का माउस रखने चाहिए थे। इंटेली माउस खाली डिस्प्ले It's not too late. 1500 का मिल रहा है ब्रो, क्या बात It's कर still रहे हो? not too late. अन्ना आपके फेवरेट, आपका अभी करंट फेवरेट माउस कौन से हैं? राइट नाउ आई एम यूजिंग फाइनल माउस रे। हाँ तो स्टॉक रखते हैं थोड़ा 10 साल बाद के लिए। अरे वो नहीं भाई, इंटेलियन MX508 मेरे पास तीन डब्बा पड़ा है MX508। वो डेथ मेकर के लिए लेके आया। हाँ वो तो टीम छोड़ के चले गया, वो दूसरी बात है।
करेक्ट हाँ 10th वाला तो एक्चुअली रेयर है अन्ना। हाँ ब्रो सही बोल रहा है। वो रखो या मेरे को दे दो चलेगा। मेरे पास सारे पुराने माउस पड़े हैं बस कम से कम 8 या 9 माउस लेकिन सारे वर्किंग कंडीशन में डबल क्लिक वाला है सब वर्किंग कंडीशन। मेरे पास 8 स्किन्सू पड़े हैं वर्किंग कंडीशन में बस। आपके पास 8 किंजू है क्यों? मैं सिर्फ किंजू खेलता था ना 2011 से। है ब्रो लास्ट मैच। अनुज भाई भी लाइक माउस की बातें बाद में पहले गेम देखो। सेकंड में अंदर आए चप्पल दिया कैरन भाई को। भाई इसके हाथ में रेडिएंट एंटरटेनमेंट है ना। पड़ा शॉटगन करना पड़ा। शॉटगन भाई का दिन नहीं है आज। एक तो मरी शॉटगन इधर किया तो गलत प्लांट है ना ये रीटेक बहुत इजीली होगा। हाँ ये छूट के हो सकता है हल्का सा छूट लेकिन सेफ प्लांट भी है वो। नहीं जैकन ने अच्छा प्ले बनाया। अरे कैसे जॉन क्यूटी जिंदा है गाइस डोंट वरी। नॉट एनीमोर। उड़ा देगा मंचकिन भाई ट्रैकिंग बहुत लंबा भागी जॉन क्यूटी भाई बट नहीं भाई वो इजीली मार सकता है क्यों डिफ्यूज कर दो इसको बाद में मारो। Third, Gen G find a first. सही है Exactly how you play off on the defensive side. I think क्योंकि अन्ना उस समय ये डर था अगर एक जन डिफ्यूज में बैठता ना तो वो आइसोलेट कर शेरिफ देखे या शेरिफ लेना रे बाबा। that's the thing though. You've kind of उसको याद आया वापस बड़ा गन देना है गाइस। What Gen G's running definitely has I think this is going to be one-sided to be really honest. बहुत बजेगा प्लीज जीतो रे जेन जी। जो भी जीतेगा बजेगा भाई तो ऐसा है। इसमें भी 8-2 8-3 स्कोर देख सकता हूँ। क्या माउस पड़ा है इंसेन वाला। कौन सा था वो? We're talking about a ridiculous, what was it? माउस पैड तो QC के heavy is best. Since Sentinels sent. पड़ा है मेरे पास extended edition चादर बना के। आर्टिसन ब्लू Early days in this map at least. वो तो चाइना जापानीज आता नहीं रहे मेरे। They don't normally invest जापानीज सीख and they haven't again. It's either all or nothing. They're not like a sheriff team. They're not like let's भाई put a जिंदगी little में bit. पहली बार देखा था बड़ा माउस पैड 2000 रुपए का। गोलाथ स्पीड एक्सटेंडेड एडिशन 12-13 की बात है। 1.6 के टाइम में तो SK फैनेटिक ही होता था। SK फैनेटिक नाम हाँ नहीं मून भी था मून का एक मून एक डोटा प्ले था उसका भी माउस पैड रहता था वो भी मेरे पास। मून वाला तो मैंने बहुत कम लोगों के पास देखा। और नावी के वो आते थे ना हेडफोन्स येलो। Do you remember the neckband? Spawn पहन के खेलता था। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इनके लिए रीटेक करना। भाई वो बंदे में डबल वो मार रहा था भाई। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ब्रो। हाँ वही मैं कंफ्यूज हो गया। डर गया भाई मैं बोला मारेगा वो। डिफिकल्ट हो सकता था इनके लिए रीटेक बट सेंस क्लासिक गेट्स वन। वो वाले चीज वैसे भी। Weaponry is going to be picked up for Gen G, so again, it's not really the end. How much did the Jesse cost including देखो मैं custom? बता रहा हूँ क्या होने वाला है। सेंटिनल्स पहले जेन जी से मार खाएगा अपर ब्रैकेट में, फिर लोअर में पेपर एक्स से मार खाएगा। पेपर एक्स तो आए है ही नहीं यार मुश्किल है। सही नहीं चाहिए जीते मुझे चाहिए वहां वापस। हाँ सेम बहुत मुश्किल है ब्रो। लाउड तो मुझे लग रहा है जीत जाएगा। डेलुलु इज माय ओनली सोलुलु गाइस। मैं मेरे को तो नहीं चाहिए भाई। अरे गॉडफिड भाई ये क्या सीन है? मैंने कल लेना देखा वो गेको का विंगमैन को वाइपर अल्टी में कुछ डैमेज नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है वाइपर स्पिट में ये सब में ना। ब्रीच का फर्स्ट किल में पड़ता है। ये क्या सीन है यार? हाँ हम भी तो ब्रीज मैप पे 5th मैप 11-10 राउंड हम विंगमैन ने डिफ्यूज कर दिया वाइपर मॉली पे। गंदा सीन है वो मॉली डाल दिया तो वाइपर तो बोलेगा हां चिल गाइस कांट डिफ्यूज पता लगा वो चल रहा है वो आपने टेक्नो ने ऐसा कुछ करा। एक्चुअली इसका लॉजिक ये है अनुज भाई कि वाइपर का जो भी होता है वो डिक्रीजिंग डिमिनिशिंग डैमेज देता है ठीक है और उसको एब्सोल्यूट डैमेज चाहिए विंगमैन को। तो आप शॉक डार्ट मारो ब्रीच का वो मारो कुछ भी मारो
तो वो एब्सोल्यूट डैमेज है ना, प्योर डैमेज है, और ये डिमिनिशिंग डैमेज। मॉली से होता है क्या किलजॉय का? हाँ उससे भी टूटता है। हाँ किलजॉय का मॉली से होता है, किलजॉय का एब्सोल्यूट डैमेज है ना। आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स गाइस आफ्टर 4 years. बेकार है वो, बहुत annoying है। नहीं पर अच्छा है bro, honestly. बहुत सही है, ये सब छोटी छोटी चीजें ही तो हमको मतलब आप जानते ही हो अनुज भाई स्किल सीलिंग कितनी लो है, डिफरेंसेस कितने लो हैं, तो यही सब छोटी छोटी चीज की नॉलेज आपको डिफरेंशिएट करेगी। पूरे प्रोफेशनल सीन को तोड़ दिया भाई स्किल सीलिंग लो बोल के। नहीं है सही है ना रे मामा। None of those weapons are in play anymore. It is just Watch party में you're getting to learn new things, guys. About a great start to this map. It really doesn't get better than this. No, that's सासी भाई क्या करना चाहते हो? एंड वेंका के पास वो अवेयरनेस भी थी उस समय उसको बोलने की। मैं तो चिल्ला रहा था ब्रो, मैंने बोल दिया था उनको नहीं पता विंगमैन से होता है मैंने वो स्पॉम सुने। Viper wall wasn't there. Viper orb, same thing, not there. It's just straight up fights. Players spamming through the smoke, putting them low. And now they found. सासी भाई क्या हो गया? IM काम नहीं कर रहा है। इनके पास इतना डिनायल है, रीटेक इतना इजी है इनका जेंजी का, बहुत डिफिकल्ट है। जो गलत कैसे मेरा यार पर। That's the thing. That's where you see actually just the usage coming out of 𝐼𝐼𝐍𝐿𝐒 and then also just the denial. Like it's having that second controller. ये क्या है? लाइम जूस है क्या? भाई वो ना लाइम जूस पी रहा है ना ये। हाँ एग्जैक्टली लाइम जूस है वो। टर्की में इटर्नल फायर का वॉच पार्टी देखा क्या? अरे शिट मेरा माइक म्यूट है। हाँ ना लाइम जूस है वो। हाँ लाइम जूस। हाँ क्या नहीं दिखा सकते क्या? अनलेस वो कोई कलर्ड सोडा या कुछ हो, वो पता नहीं, बट डोंट नो व्हाई बट सासी भाई आईटी इंडियन आईटी एम्प्लॉय जैसे लगते हैं। सासी भाई तो पूरे हमारे मेरे एरिया के लगते हैं पूरे एकदम। चैट भी भाई अलग ही नशे में भाई, अलग ही जोन में भाई चैट। लव इट, लविंग इट भाई। We've never seen a Korean team look this scary, and we've heard about them. Hell, I talked a lot. थोड़ा इनके पास चांस है अगर ये लोग मिड कंट्रोल थोड़ा ज्यादा लें। 2020, I'll even throw 2023 in there. एंड टू एंड खेल रहे हैं फिलहाल तो। They were right. I think the thing that's been most impressive as वापस well एक ही तरफ is जा they built रहे this team out of players that ultimately didn't सासी और टेंस अभी भी 0-0 पे बैठे हैं। छोड़ो टेंस भाई, छोड़ो। Munchkin definitely didn't have a great 2023. Meteor as well. Expectations were high. 𝐼𝐼𝐍𝐿𝐒 came from tier 2. हाँ पर है हमारा ये वेंका खेलता है योरू। हाँ ब्रो योरू तो मेरा एजेंट है। Looking to try and break back with what is some weaker weaponry here. अभी हो गए अनुज भाई, जैसे डेडली है ये खेलते हैं, पहले नहीं खेलते थे। क्लासिक के सेकंड क्लासिक में कुछ तो है ब्रो। तो है भाई। अरे लाकिया भाई ऐसा नहीं मारते। लाकिया भाई क्या बोला था मेरे को? खत्म है बाबा। Oh no, this is not looking good. ओके अन्ना अभी भी टाइम है, वाइट टी शर्ट है तो पहन लो जाके जल्दी जल्दी। मैं चेंज करके आता हूं, पीआरएक्स पे क्या आता हां जल्दी जाओ सेंटिनल्स का ब्रीफ में फर्स्ट टाइम खेला है इससे पहले। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। ये बोला था मैं भी थोड़ा हुडी चेंज खेला था इस टूर्नामेंट में, नहीं खेला, एक बार खेला था जेट के वो लास्ट क्वालीफायर से उसमें। The comeback of 𝐼𝐼𝐍𝐿𝐒 The Bucks in Classic for more sale. may have been seriously understated when he made it back into a tier 1 बट वही team. बात है, ये There सब are जितने many भी of us who have been waiting कॉम for से this उसका for बहुत such a इजी काउंटर है ridiculously long एस्ट्रा time. वाइपर डबल In jail, कंट्रोलर। over बस a अवेयरनेस vision अच्छी होनी strikers. चाहिए, तो No वो experience with जेन first. जैसे What do ट्विंकिंग you mean? redemption arc to even get this far. Texture about to come under Texture pressure, by, Texture but by. he's not shying away at all. Maybe he should have done. Seconds removed him and taken the operator. वो ऐसे टाइम पे एक्सरे भी बंद करना समझा ही नहीं। Spam through the wall after. But nothing to be found. Oh, shot rejected. जेके भाई गुड शॉट जेके भाई। Another kill and Tens answers Nice. up. पहला राउंड। Finally, it looks like Gen G have been आगा left जेके भाई। here on the defense, and with Munchkin falling, that's confirmed. Karen Count भाई, 1v4. उधर क्यों देख रहा है? This is रिंग है, सब है कैरन भाई। एक स्मोक लगा के सेक्सी सा डिफ्यूज स्टार्ट करते हैं। लाइन अप लैरी बाबा। ए ये तो एक्लेयर्स पापी किया। मैं ना पे जा रहा हूं। बेस्ट है ना, मैं बोलता हूं ना एक टीम में वैसा रहना चाहिए, बहुत अच्छा सुकून मिलता है जब ऐसा रहता है ना, कोई दिखता रहे तो That comes back off राउंड से वही तो कर रहे हैं।
पर ये सेंटिनल्स का गेम प्ले देख के समझ में आ रहा है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट पे खेल रहे हैं एकदम। Is it true Genji has picked up carry from Riot Games? Yes. मैं करता हूँ तो भाई रंगोली बनाता हूँ guys. आप लोग समझते नहीं हो but leaderboard matters. मैं 4 साल में कभी साइफर नहीं खेला, ठीक है, अभी थोड़ा सीखने का ट्राई कर रहा हूँ। परसों मैं खेल रहा था बाइंड पे, बी साइड पे ट्रैप वैप लगा के, पहला 7 राउंड मैंने एक बंदा नहीं देखा है। और मैं सोचा नहीं, और मैं सोच रहा था कि भाई सेंटिनल क्या करते हैं बैठे पूरा टाइम। दीपोन जो करता है आपको भी वही करना है। वो तो झूलता है बाबा। No fear out from Texture. This time he will catch it, but it's a player that can be brought खत्म हो back. गया। It's going very differently this time around, though. भाई मैच मेकिंग चल रहा है क्या? वो शटडाउन है ये लोग। शटडाउन है। बी साइड क्यों जा रहे हैं ये लोग? क्या ये पे क्या है? भाई मैच मेकिंग चल रहा है गाइस। Aggressive off pick. They try to punish that मिड जाओ यार थोड़ा मिड कंट्रोल लेना ही पड़ेगा इनको, पर ये प्रिपेयर नहीं है इनका मैप देख के समझ में आ रहा है। हां इट इज नॉट प्रिपेयर्ड। हाँ इनका सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखा ना BIA जा रहे एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई अब तो ये भी चल रहा है लाके भाई बैठ जाओ गाली दे रहा है। हाइट सेम है, बैठ जाओ, दिखता नहीं है। नीचे एक और बॉक्स लगाना पड़ेगा रे बाबा। हां एप्पल बॉक्स नहीं है, छोड़ दे। फाइनली मिड कंट्रोल थोड़ा सा ले रहे हैं। अरे भाई behind the scenes that in scrims this गलत map for recon। Genji has been going fantastic, even if the results don't display that. मेरे को ऐसा भी लग रहा है टेक्सचर चढ़ते जाएगा, मौका मिलेगा चढ़ते जाएगा वो। They were confident, they were happy to take it here. ना हॉल्स कंट्रोल ले रहे हैं ना कुछ, कंट्रोल भी नहीं दे रहे उन लोगों को। Sentinels, we haven't seen it successful in Americas, and it's ना हॉल definitely not looking कुछ नहीं है। नाइस रे बैठे रे so टेक्सचर। aggressive in his control. They have to be using the drone just to force him back out of main. Shock darts being sent onto him, but if you believe that he's giving this up, फिर से नहीं you'd be वाले foolish. And look at what's फिर से happening. बैठना है, 100% बैठेगा फिर से। Already stacking No up respect players gaming into this भाई। B side. The read they have is bang on. And there's not even an intention to have Meteor go उसको somewhere क्लियर else, करने के लिए कुछ rotate यूटिल ही to नहीं है any उनके pressures पास, there. क्या This game करेगा? crashes केओ का onside. नेड यूज Decoy करेंगे। used. They might even think that's the real one. They do. Flashed on Zek and he slowed down. Peeked out from the side. Munchkin wrapping हो to पाए get रे a nice बाबा। angle, and he found another, and they still haven't found Meteor. He's No. springing away, catching Nice one. the jump up and dropping the spike. These players have to come out of the pit. They're getting a reveal. Meteor staying alive for now, and he's up close to the pit, knowing that they have to emerge from it to pick the spike, but they already have. चल क्या रहा है? QT's around the backside. Game He's of coming patience. right back into the safety of the pit to try to get the plant down. A flash inside, but it's all a decoy to push them towards him. As Plant Meteor तो moves करना around the पड़ेगा, other अटक गए side. खुद ही। This is beautiful play. They're not even looking as he goes कॉन्फिडेंस back. देखो दूसरा फ्लैश timing है रे। Now the plant, sure, it's going to be found, Good but flash. blinded up. He is stuck in a corner. John खिला रही QT है। doesn't stand नाइस a राउंड chance. भाई। ओके मैं चेंज करके आता हूँ। एकदम मेरे जैसा खेला रे योरू ये। Leading by 5. That's the thing you love about this guy. Like you watched him play these Sentinels in such an aggressive manner. The operator on Killjoy in the last map, happy to run in 1v2s. कोई भी अच्छी टीम हो ऐसे मतलब एग्जीक्यूट्स को रोकेगी, मतलब जो भी वेल रिहर्स, जिसको इतना टाइम मिला प्रैक्टिस करने का। भाई इतना हाइप हो गया, इंग्लिश बोलने लग गया भाई। या लेट्स गो गाइस। आगे भाई बैठ जाओ, हाइट सेम है। They're coming back in with the buy, but it is Loving one of the it, weaker guys, we've loving seen. Ults, none of them are even remotely close, and almost all of them are either close or online. Here he goes again. He's crazy. He's absolutely. यहाँ से भी एक किल लेके जाएगा। यार ये कैसे पीक करके मार रहे हैं, पागल हो गए। एक बार मार मिस हो गया। Texture's not going anywhere. Eventually he has to fall back. The flash अभी is थोड़ा good. थोड़ा ज़्यादा Spam from someone else. थोड़ा ज़्यादा। Indeed it was a spam from someone else. 𝘼𝐿𝐼𝐽𝐿, who's now down on the floor. He'll used by Meteor. 1 spotted, 2 spotted, and 2 taken down just like that. They saw the final player. They know exactly where he is. Nothing slipping past Genji right now with a 7th round locked in. थोड़ा वेबसाइट चेंज करना पड़ेगा लगता है यूट्यूब से। व्यू दूसरे वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ, गैस सिमुलेटर खेल रहा हूँ। नेक्स्ट मैप जब चालू होगा मेरे को बोलो। कौन सा सिमुलेटर? गैस सिमुलेटर, गैस स्टेशन सिमुलेटर। Or they lose that map control immediately because it gets pushed by Texture. बहुत अच्छा है गेम। Challenge for it. The problem is हाँ एक्चुअल में बूट भी आता है। there almost has to be a response. Mid control. I own you. रात को बूट भी आता है Mid ऊपर इधर control has उधर not घूम been के जाता है। something that we see too much for from Sen. I almost want to see the pressure put in
because these A takes are just being Finally, slaughtered. Halls And now we're even control. seeing the switch up of Gen G putting Texture on the other side of the map. I think his expectation is, well, surely they don't go for that लगता है again. ये भी slow नहीं करेंगे, fast ही कर रहे हैं. There's going to be some Halls congestion off rip. Blackie has given up the space. Just going to drone it instead. Close the door. Shot to close. Oh my god! That is gorgeous. ये कैसे मारा? Does manage to train क्या with the शॉट ultimate मारा as ये? Zeus got ये देखो कैरम बॉल को देखो. कैरम देखो कैरम बॉल खेल रहा है. It's actually over. surprises everyone. It's Jover. Is on the floor again. आ जाओ Godspeed. Just Karen anymore. नीचे कर pick up बाहर आ जाओ. He's still काट got दो his साइड को. flashes. हाँ. Cosmic divide. Insult to It is Jover, injury. guys. Sentinels are locked out as Karan more Arjun. rotations are coming through. Munchkin not even looking at the... He's not trying to hold anything other than Halls. They know that they can't go back because of Texture on mid, and there's two players watching for that walkout. 8-1 हो ही गया भाई, Sentinels need देखो a miracle to get away with this. Damn brother. 8-1 हो गया, उसके बाद 9-1. Can peek in front of it. It's a dual access ult. I think so. यहाँ पे second timeout use करेगा Kaplan. Second timeout use करके बोलेगा कि थोड़ा mid control लेके B shot से जाओ. I think so. B shot control window control लेने बोलेगा. 9 rounds too late, but sure. हाँ, but 8-4 is salvageable. हाँ, second timeout लेगा. लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म है ये game. किसे मारा रे वो shot? And like the flash, a split second later, I thought 𝐼𝐼𝐻𝑒 was going to be dead immediately, and then we need to talk about what he just did. Newton का लाख किया. ये split one का prize pool के अलावा भी कोई significance है क्या guys? बताओ ना, chat पूछो. नहीं. Ran through the whole opposition's इसलिए हमने experiment किया. and came out on top. Gen G have got Sentinels in their pocket, and so I don't know what they can say. Kaplan's got his task cut out for him and Drew. Better be combining in a fusion dance of brains to get this one across the line. It's looking grim, and the best मैं part बोल रहा about हूँ it for Gen G, you spoke about how Kaplan they को had बोलना ही all the पड़ेगा rookies mid online. control लो, They've B used shot up से आओ या तो the elbow control लेके B shot से खेलो. Karen और कुछ ही नहीं बचा है इनके पास. कर ही नहीं सकते ये लोग. हाँ, mid तो B है, की call है. and they're about to have the Hunter's Fury But back वो उसका online. setup वो There's सब no I don't think they have रे. way इसलिए in नहीं which कर they're रहे वो letting लोग. this slip without They saying don't know. They don't running have up that against body a mid brick to B wall का. again and again. They've got to be Window कैसे clear sensational करना है, to कौन have a जाके किस कहाँ pick करना है, उन लोगों को वो setup नहीं है. वरना कांटेक्ट पे खेल लेंगे तो भी चलेगा. मैं तो बोल रहा हूँ एक दिन को विंडो पे लर्क पे छोड़ देंगे या हॉल्स में लर्क में छोड़ देंगे, लॉन्ग लर्क पे हो जाएगा. इधर भी टेडी बेयर गाइस देख रहे हो? नहीं, मेरे को देखो हाँ, ये मैप में तो टेडी बेयर ही टेडी बेयर है. आज टेडी बेयर से मुझे बहुत लगा हुआ है. You've got a double duelist and you've got double controller to just basically create space for them. This is a almost seems like doomsday for Sen City. Gen G have dropped a nuke on them, and finally we're going to see some mid control. I wanted to see this challenge for. आ गया mid control. क्या सीन है? रेज नहीं खेलते आप? क्यों? Disgust. खेलता तो? खेलते हो? अटक गया. हाँ, लाइफ पे रेस तो खेलता हूँ मैं. Even sticks around to fight. Maybe goes. उसमें किल जो है क्या बोलते हैं लोटस में? को बजाज भाई को पता है. मेरा किल जो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लोटस पे. A little bit too far with that. That knife should be coming through fairly सीयू soon. को It's किल just जो back अच्छा नहीं लगता online. ज़्यादा, There इसलिए it मैं is. किल जो खेलता हूँ. Okay, okay. It's not caught them though. Texture still happy. Dash online and back pocket, but Sentinels are on the wraparound. भाई Moving in बहुत from बहुत mid तकलीफ control, देने वाला moving है. back through mid, Next in time fact, अगर hoping the rotations have come through. They have. There's an smoke. aggressive push from 𝐼𝐼𝐻𝑒, so he'll be inside of main for this retake, not able to get past the trap wire. Oh. On the site, there's only What? one Kuch man. bhi. All alone is Karen. Off the smoke to give himself a safe haven to play from, and they're trying to root him out. They suspect that he's in this position, and 𝐿𝐼𝐻𝑒 has got him on the running spray. It's whether they expect anybody to be in A main though. आ गया मैं. Like it might be the snake in the grass. It does seem like they're बात है. watching that position now. Enough time has उधर gone through. पता नहीं Has एयरटेल to ने be an किसी instant win कुएं on में this फेंक दिया था battle. मुझे. Otherwise, it's definitely going to become Net पे. problematic in terms of the time. The thing is though, in terms of finances, Gen G can definitely afford to throw some players into the win. Munchkin looking to lead the charge. The time though is ticking. क्या आज भाई पूछ रहे थे मेरे से मैं रेस खेलता हूँ कि नहीं. अरे मैं रेस क्यों नहीं खेलता ऐसा? Of Sentinels at this लोटस point, पे. but it's more so how many players do they come out with? इसको The बता answer रहे. is 3.
a solid hold after a huge hiatus from the मतलब ball. लोटस पे इसका केजे अच्छा है, Well, as if I'm Cypher popping an ultimate. बेटर है I'll आई take my फील, hat off to you there, और Captain. ये बहुत Drew, अच्छा good डिसीजन calls मेकिंग है इसका to केजे से। change up the pace of this game. और Looked like it's a हमारे big पास play दो ऐसे back प्लेयर्स through हैं, middle, which is सेयू somewhere भी they've had trouble. खेल सकता है डुएलिस्ट सेंटिनल और ये भी खेल सकता है, तो हम चेंज करते रहते हैं ताकि थोड़ा इनको भी जो कंफर्टेबल है वो रहे और थोड़ा ओपोनेंट को भी थोड़ा डिफरेंट सेंटिनल्स और डुएलिस्ट देखने को मिले। बस बैंक का थोड़ा हाइपर अग्रेसिव है, सेयू उतना थोड़ा कंट्रोल्ड है। Working around mid, right, trying to get up through elbow, but every single time there's somebody there ready and waiting for it. John did also get a little bit of space on mid, but they've seen the constant aggression. Camera up and watching this. फायर को लगा, It's a little मिल closer गया than ना you'd like to see. सेंटिनल्स को मिड से घुसो डोर से। Survived the round and rallied the troops towards the A side. Good wall to cross. अरे जब जेनजी वाले मिड पूरा छोड़ के खेल रहे हैं, मिड एक्सप्लॉइट करना ही पड़ेगा, बट ए मेरे हिसाब से नॉट द प्ले। Rotated through, albeit he's only got 0 HP now. Never mind, not 40. There's also Karen on the side, and they've managed to chop and change some of these fights. He's in a little bit of trouble there, but it looks like it's going to be fine. Oh my God! Shot texture. Tag is received. Oh my God! भाई वो मेरे को स्टेयर्स वाला शॉट देख लीजिए प्लीज। पिक्सल दिखा होगा उसको, उसका सिर का 100% दिखाएंगे बाबा। Lakia would get a tag, kill someone with the Hunter's Fury, and they retake together. Instead, he kills the guy who gets tagged immediately. He hits the most disgusting headshot with an operator. हिलता भी नहीं भाई, उसका एक्सप्रेशन तक चेंज नहीं होता भाई। The Viper screen to kill the last. जो The guy शॉट has no मारा fear whatsoever. Well, for Solo, we've already mentioned he may not be in the एचएस के बोल रहा है जो मैं हेड कोच बन के नहीं कर पाया, Elise versus वो मैं असिस्टेंट कोच बन के also कर रहा हूँ। tens. The MVP. हाँ तो जेनजी का ही हेड कोच था ना एचएस, Turn finished third. फिर उसको हटा के सोलो को बना दिया और उसको असिस्टेंट कोच बना दिया। His move to coaching was something that anybody knew and was excited for. फाइनली बी स्प्लिट, एक बी स्प्लिट हो रहा है फाइनली गाइस। ये राउंड तो सेंटिनल्स का है, हाँ ये राउंड सेंटिनल्स का है। देखो ना कितना होल्ड अप है बी पे, अरे छोड़ दो भाई टेक्सचर भाई डजंट गिव अ फक भाई। स्पेसिंग थोड़ी खराब है यार, बहुत खराब है, थोड़ी नहीं बहुत खराब है स्पेसिंग। केओ का हल चालू है, वो कुछ कर नहीं सकता वो टेक्सचर। भाई मर जा टेक्सचर भाई, नहीं मरेगा भाई, मरेगा मरेगा। वन नाइट अरे मरेगा भाई, मरेगा। निकाल दिया सेंटर 9-3 कर्स गाइस, 9-3 कर्स गाइस। ये लोग का बस अटैक कॉम्प है। It's definitely a scary prospect going forward, but similarly to what तो लैंड पे बोले थे ना Sentinels at the end. Of course, as mentioned though, you look at the composition. सिर्फ अन्ना को क्या, VLT प्लेयर्स फैंस सबको याद है, बहुत तगड़ा हर जगह पे। भाई दैट इमेज इज बोर्न इन माय हेड। भाई एक बार भी नहीं, कितना बार हुआ है फुल सेंस के साथ, जी के साथ। Well, a big factor on their attack is going to be Meteor, so let's hear what Meteor had to say. अनुज भाई बोल रहे हैं भाई चैट में कोई लिख दिया अन्ना टीम क्रिएटेड द कर्स भाई। बट एक्चुअली तब से स्टार्ट हो, उससे पहले था ही नहीं वो फंडा। अरे वो तो इंटरनेशनल आर्टिकल भी आ चुका है उसके ऊपर। 성적을 좋게 내고 있는 것 같은데 사실 아직 실감은 안 나지만 그래도 또 저희끼리 वो भी याद है 90 잘해서 कर्स के बाद मिड टू बी स्प्लिट 사실 페이퍼렉스라는 팀이 स्टेयर से लीन वाले को एक को मारने का ट्राई कर रहा था, दूसरा उसके साथ हेडशॉट में फ्री फंड में गए। 페이퍼렉스 팀원들 간의 에임 싸움이나 अनुज भाई आपने थेरेपी ट्राई की है क्या उसके लिए? 피하지 말고 우리도 한번 싸워보자라고 얘기했던 것 같습니다. 사실 감이 온다기보다는 그냥 PTSD का सिम्टम लग रहा है। 할 것 같으니까 이제 새로 리빌딩이 되면서 ये सब चीजें याद रहती है भाई, तुम जितना ही बोल लो, खासकर जो इन्वॉल्व रहते हैं उनको एकदम वो भूलते नहीं हैं। 팀에서 해오던 사람들끼리 모인 거라서 우리가 어떻게 लेकिन मुझे मार खाने वाले नहीं, मारने वाले राउंड याद 많이 रहते हैं। 얘기했던 것 같아요. 그런 부분도 이제 저희 팀 मेरे वो कम रहते हैं ना इसलिए। This could be a big win if it comes through. Nice work from Meteor. One bullet left. एक बार मुझे याद है, आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्ट था और अभी नया नया चालू ही हुआ था ह्यूमन पे, मैं और अनुज एक लॉबी में आ गए और आई वाज सोलो क्विंग। हां यू वर देयर, आई ओनली फाउंड आउट आफ्टर द मैच। 그냥 이 선수가 And 뭐 잘하는 거
알고 있기 때문에 हारे रे बाबा 그냥 of course हारे 센티널을 하게 된다면 और 저희가 उस दिन पता नहीं I was having a 하는 terrible day okay 이길 수 있다고 और मैं Phoenix लिया था कि you were playing Phoenix I don't remember something had happened I was playing like dog shit okay and you were so frustrated like I could hear it in your voice but you were trying to keep it together and you didn't know it was me I didn't know it was you I only found out after the match 분들이 계신데 그 응원에 보답해드리도록 하고 싶고 그리고 저희와 함께 항상 달려주셔서 감사합니다. Anuj bhai was in my game recently on Breeze. I was playing Yoru. Yeah. all over the world. I'll tell you what, plenty of them showed up जीते here क्या to है भाई ये support them बताओ today. They'll be thankful that they did. भाई फ्लैश रेडी है रे बाबा खत्म Meteor off the bat. He is sweating. हाँ उसने बोला ना शायद अभी मामा इतना दूर से भाई मीटर ने क्या भाई वो उठा रहा था उसने चाटा मार दिया मैं क्या बोलूं अभी That's the thing. He talked about the pride he has for being that Korean team in this tournament. Sadly यार ये one sided ही होना था They have got further than बट any क्या बैन किया Korean team सेंटिनल्स ने ऐसा जेंजी के सामने जो ये ब्रीज है सेंटिनल्स ने आइसबॉक्स बैन किया ठीक है एंटी बैन था मतलब ओके ओके और फिर सेंटिनल्स ने सेकंड टाइम में एसेंट बैन कर दिया एसेंट बेटर नहीं लगता इससे तो बेटर ही होता है और बाइंड और ब्रीज बचा बाइंड मैं तो पहले ही बोल दिया था कि ब्रीज दे दो मेरे को प्लीज ब्रीज दे दो मेरे को देखना है जेंजी का ब्रीज वो बहुत मन था hoping maybe he could hit something with a miracle shot or a shot dart, but instead they're aggressive to try and take him down. Left on just 40 HP. आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो आपके सारे मैच कवर नहीं होने के बावजूद भी कवर्ड रहते हैं ये बहुत सिंपल चीज है इन अदर न्यूज़ वाटर इज रेड पता सबको है तो हर को या हर नहीं करते हैं सब कॉम्स के पीछे जाते हैं बट देखो जेंजी इज प्लेइंग सो फंडामेंटली साउंड हाँ उनके पास गिमिक्स हैं सब कुछ है बट अन्ना साइड बन जाओ जैसे ही बदलो अरे मैच होते ही बदल जाता है I don't know if they'll consider the force. I think they'll play the eco, but either way, it's not looking good for the #1 America's team. He could have been dead within the first few seconds, and instead he ends up Korean language switch कर रहा हूँ. हाँ भाई. भाई सोचो पैसिफिक आप लोग सोचो पैसिफिक T1 DRX जेंजी बचा क्या? 3 rounds from a final. DRX. This would be his 7th Korean powerhouse international event. Korean. 9th to 10th was his best placing before this. To say that this Gen G side, this squad is special. मुझे honestly NA इतना impressive नहीं लग रहा मतलब NA like not America's NA. बजाज भाई आपके लिए चैट से एक सवाल आया है. Is already being made. भाई जेंजी को एक साल में ऐसा क्या होगा कि इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया? एक साल में कुछ नहीं हुआ एचएस के कोच था तब तक कुछ नहीं हुआ था बहुत गंदा खेल रही थी जेंजी to be very honest आके सीधा सच ही बोल रहा है सोलो आया सोलो he's a very fine fundamentals और वो सब का कोच फंडामेंटल बहुत अच्छे से एंड फ्रैंचाइज लेवल में फंडामेंटल स्ट्रांग हो whatever game is played for like decades now. Decoy leading the charge, spotted by See again, you can see Genji कितना simple है mid वो लोग दे रहे हैं mid ले ले रहे हैं mid control and now they can go anywhere. Already thanks to a fantastic performance. उसने योरो अल्टी यूज कर दिया सेकंड राउंड He's already diving in. ये देखो रे बाबा. Oh wait अरे and leaves John QT in a spot where he could get this done. The first player lands the पलट के पीछे क्यों दिख रही थी ऐसा क्या हुआ बहन तो दोनों पलट के पीछे दिख रहे थे but Gen G 2 away from sending भाई मैन करो ये वॉच with players like Sassy showing up. We had a great first map out of 10s as well. अनुज भाई आप खेल लो बेटर 5 man Grand पार्टनर final. क्या चाहिए 5 man It's looking like they're going to कितने have चाहिए another बताओ fight later on. ये मैच के बाद की बात है भाई मैच के बाद क्या players on the Sentinel side that have like 30 minutes का ब्रेक रहता है ना बीच में कर तो सकते हैं and I मेरे को थोड़ा टेम्पटिंग लग भी रहा है ऑफर ये खेल लेते हैं गॉडस्पीड के साथ खेलेंगे अरे गॉडस्पीड का आपने देखा नहीं है अभी अरे गॉडस्पीड के साथ कुछ बातें राजी रहनी चाहिए क्या हुआ आप एक्सपीरियंस करना अभी आप करोगे एक्सपीरियंस आपको 100% क्यों नहीं
चलो भाई मेरा गार्डियन बहुत तो अच्छा है। टीबोन एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इससे क्या होगा? नहीं टीबोन इज आल्सो बेटर ब्रो, ट्रस्ट मी। जी ये क्या सुन रहा हूं मैं? वेंका, एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? अन्ना मेरा गार्डियन बहुत अच्छा है। अरे भाई गार्ड वेंकी भाई देखो अब वेंकी भाई आपने बोला तो गरम करके ठंडा मत छोड़ना, मैंने स्लीव भी पहन लिया भाई, देख रहे हो? खेल ले गॉड स्पीड से कैसा खेलना है? नहीं भाई वेंकी भाई अब मैं नहीं जानता, अब खेलना पड़ेगा। आई एम नाउ स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन, हल्का सा टर्न ऑन हो गया क्या? टेक्सचर ने 3 को मारा है, टर्न ऑन का सीन नहीं है। वन साइडेड तो क्या है, कुछ फाइट नहीं है, कुछ नहीं है। जरस भाई थ्रो कर दो, मैं बोल रहा हूँ मेरे को फाइनल क्या 4 बस 10 वर्सेस लाउड देखना पड़ेगा यार। दिस इज द वर्स्ट। मैंने आपको बोला ही था ना, ये पूरा जेंजी साइड वीटो था। दिस इज वो 20 मिनट लेके जब वीटो किया तभी डाउट आया मेरे को। इतना हंस रहा था कैप्टन। वीटो मेरा हो गया टीबोन बेटर बोल दिया, वो बंदा मीटअप में लोगों से फैंस से 1 विन हारा है। देखो भाई एक टाइम पे मैं अच्छा खेलता था, बस यही बोलूंगा। अब नहीं, वो टाइम 10 साल पहले हो सकता है पर escape. Not goes peeking into the window, but I don't think he's ever going to do that. He's also had his cam spot. Yeah, Bajaj bhai, I have a very important question to ask. But it means that the I'm not bored, very bored. 9 rounds in a row needed. You know my legacy in KPL, no, in both the seasons. Yes. What was it? I am wondering if I should participate in season 3. Managing it versus Loud. Mamba bro, I have one answer for you. Hey, है क्या KPL? कल आना। Is this actually a thing? It is an actual thing. Yeah. Okay, so no, in all seriousness, so it's a bunch of Twitch streamers who, so there's this streamer called Mazman who hosts this tournament, right? And super fun, right? It's a very small community of Twitch streamers who play. So captains बनाते हैं, auction होता है, and it's all like full fun and trash talking and all like full drama, like fun. मैच हटाओ, काको दिखाओ, exactly. I played 2 seasons. I won both. और उसका अभी बात चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर होते क्या उसमें? नहीं रे बाबा, ऐसा नहीं है। ऐसा करो क्या? अरे रे भाई बजाज भाई फाइनल में आए थे सामने सीजन 1 में। ए भाई उस समय मैं मॉडल 3 था। अब देख लो भाई। और हमारा कॉल क्या था पता है? बाइंड चल रहा था फाइनल में। मैं फ्री फायर कास्ट करके आया ही था बस। बजाज भाई का सुआ जिधर देखा उसका चाची भाई का रिकॉन, चाची भाई का रिकॉन कुछ फायदा नहीं है। चलो भाई मैं गेम लॉन्च कर रहा हूँ गाइस। थोड़ा स्ट्रेचिंग करने दो रे बाबा। पेट दिख गया। पेशेंस है टेक्सचर का भाई, वो बंदा। और भाई Oh my god. रोल कर दिया भाई, रोल। क्योंकि भाई मजाक तो नहीं कर रहे थे ना खेलने के बारे में? दूसरे पे डिपेंड करता है ब्रो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बजाज भाई, are you down? मैंने तो देखो मैं डाउन हूँ, लोग मेरे साथ खेलने के डाउन है कि नहीं वो। I am down. अनुज भाई। I am up. Good, Anuj bhai, good talk. Good talk. Good talk. Man is like, I don't want to do this. अरे 4 है, 1 मिल जाएगा, चलो खेलते रहे। 4 क्या अनुज आएगा? 4 कैसे हम? पूछ लो ना। अनुज भाई खेलेंगे तो बोले तो थे। नहीं बोले तो थे अनुज भाई। है क्या? हाँ खेलते हैं ना, चलो। हाँ तो चलो ना फिर, चलो। भाई ये क्या? आगे लॉन्च कर दिया मैंने गेम ऑलरेडी। गॉड स्पीड को क्या काउंट नहीं कर रहे क्या आप? नहीं किया। I understand your नहीं रे पापा, अनुज ने जवाब नहीं दिया, इसने मैं बोला 4 तो है ही है। मैंने अनुज खेलेगा, मैंने पूछा तब सुना ही नहीं दे रहे पापा। मतलब अगर अनुज भाई 2 सेकंड अगर बोलेंगे नहीं तो आप उनको रिप्लेस कर दोगे? हाँ एग्जैक्टली। मैं और अनुज लॉबी में आ जाओ। आ रहा हूँ। आ रहे गेम लॉन्च करें। अन्ना इधर आ जाओ, मैं इनवाइट करता हूँ ऑलरेडी। आप और अनुज भाई लॉबी में, आर यू श्योर? देख रो भाई। हां जो भी उधर है, इधर से उधर, उधर से इधर। अन्ना इतना झूठ। अन्ना पार्टी टू लार्ज हो गया। पार्टी टू लार्ज। हेलो मैं तो घुसा भी नहीं हूं अभी तक। 1 सेकंड वेट लॉस हो रहा है। ये कैजुअल सा वो सब तो ठीक है गाइस। इनवाइट करो मामा को। आ रहे गेम लॉन्च हो रहा है, जल्दी करते हैं, मैच दिखना है, मैच मिस नहीं हो। सॉरी रे बाबा। लाउड डोमिनेट करना है। इनवाइट जल्दी से। अनफॉर्चूनेटली
इधर हो Invite. मैं रिक्वेस्ट दिया किया मम्मा भेजो को। भेजो वेंका ब्रो इनवाइट। चलो गॉड स्पीड कहाँ है? पेस गॉड आ स्पीड गया मैं। आईजीएल मजा आ जाएगा क्या बात है। गॉड स्पीड कॉल लेंगे गाइस। चलो रे बाबा गॉड स्पीड कॉल लेंगे, सबको फॉलो भाई- करना है, ठीक है? भाई अपना लॉबी इतना इंक्लूसिव है, हर एक रैंक में से एक प्लेयर है फ्लैग से लेके इमॉर्टल तक। मैच में मिल गया। ओ भाई देखो हमारी पार्टी क्या बहुत बात है, क्या बात है। आइस भाई मैं तो बोलता हूँ डबल डुएल्स करो, जेट नियॉन लास्ट टाइम मैंने और अनुज भाई ने 5 स्टार करा था। अनुज भाई बताओ क्या हुआ था? भाई कौन क्या खेलेगा ये बताओ रे पहले। 10 मिनट में मैंने 30 किलो खोया था। मैं तो बोलता हूँ वेंका को हाँ जेट दे दो, कुछ भी करेंगे अपन गेम में जीत जाएंगे। नहीं अब तो मैं रेस खेलूंगा। अनुज भाई ने बोला ना मेरे को रेस में। नहीं अरे मस्ती बोल रहा था। लॉक ही कर लिया पार्टी बदल लिया अनुज ने। बोले नहीं लॉक सीधा लॉक किया रे बाबा। बाकी लोग है ना सब आउट ऑफ गेम है। भाई नहीं मैं मस्ती कर रहा था। वेंका भाई थोड़ा फ्लैश एंड डैश करना है क्या? आप लोग ले लो, मैं ले लूंगा। डबल ड्यूलिस्ट करके घुसना है क्या? मैं तो है ना एक वाइपर चाहिए रहेगा या तो हार्बर भी चलेगा। मांबा ब्रो भाई देखो हाउ कैन एनीवन जॉइन VLT? बजाज भाई आप ले लो, इंपॉर्टेंट कंट्रोलर आप ले लो। 50 lakhs आ जाओ। आई विल फिल। चलो क्या चाहिए गाइस? सोवा नहीं क्या बचा है यार? क्या कम? हां सोवा बचा है। डन सोवा हाँ डन खेलते हो सोवा? चलो रे बाबा चलो, आपने बोला तो ले लिया। लेट्स गो। बजाज प्रो गार्डियन ले लेना। यस ब्रो मेरा गार्डियन इंप्रूव हो चुका है इनका। लेट्स गो। उससे बेटर तो आप क्या ही कर सकते हो भाई। 2 मिनट देना मेरे को, गेम स्ट्रेच करना है भाई। क्यों? अरे मैं उस पे खेलता हूँ ना। मैं भी चेंज करता हूँ, एक सेकंड। I'll try stretch। ये तो भाई ओजी कॉम खेल रहे हैं जो एक सामने सीजी कॉम पे कार्निवल गेमिंग का सीजी कॉम नहीं है ब्रदर, उन पे ओमेन था। अच्छा हाँ व्हाट अ कोच मैन। कोच को याद नहीं है भाई। अरे मतलब नो डुएलिस्ट कॉम्प एक ही जन ने खेला था भाई हमारे। Can I play on stretch and see what will happen? भाई लेविटन बस इमॉर्टल जाने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? क्या सेटअप चाहिए? गाइस स्ट्रेच रेजोल्यूशन का क्या होता है? इट इज 4:3। कोई सेटअप नहीं, मैं और आप चलते हैं, बी सेटअप करते हैं। अरे उसके लिए गाइस कोई मेरा स्ट्रेच रेजोल्यूशन बताओ ना क्या है? बहुत कम है एक से अन्ना आप अगर इन गेम से ही करोगे ना सीधा तो खाली हड स्ट्रेच करेगा। मैं विंडोज में डाल के पूरा डेस्कटॉप स्ट्रेच करता हूँ। कुछ बोलना गॉड स्पीड भाई? हेलो हाँ ठीक है। हाँ लैग हो रहा है मेरा और मैं ट्रिपिंग। मतलब मे बी अन्ना बी खेल रहे हैं। हाँ बीज में हाँ होगा। ठीक है 100 even। कौन है? नथिंग भी कैसे? आ जाओ फास्ट रोटेट खेलो। वाइपर 1 HP 110। वॉल ऑन करना है तो बोलना। बोलूंगा एक मिड चेंबर मिड। Enemy spotted mid. अन्ना फ्लैश है? नहीं है। वाइपर 1 HP हील हो जाएगा। मॉल लिया। पीछे जा सकते हैं, मैं क्रॉस देखता हाँ मत करो अन्ना मत करो भी, कोई नहीं आया। एक क्रॉस लैग हुआ बाबा। पीछे जानो। चुप गए क्या? Attacker spawn. देख लो पीछे। भाई 10 सेकंड में रिकॉन है मेरे पास। क्यों है? Got one. नाइस वन। मैं बी देख रहा हूँ, अभी तक क्लियर है। हाँ मिड स्मोक बी जा रहे बी जा रहे हां फॉर श्योर रिकॉन है मेरे पे। हाँ आ गए बी आ रहे। प्लांट कर रहे। मोलोटोव क्या नहीं करता है। One enemy remaining. वेंका भाई प्राउड ऑफ यू वेंका भाई। मैंने भी स्पिट कर दिया था उधर। बिल्कुल मेरे जैसा जेट खेलो वेंका भाई। थैंक यू What a damage. So inside the game if you do 4:3 nothing happens is what you are saying. No. हाँ inside the game nothing happens. Oh you'll get better FPS though. FPS already find it. और इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आपको मतलब आपको अलग से मैं सेटअप कराता हूँ। मामा भाई आपको ये टर्रेट चाहिए तो बता देना, अपन वो टर्रेट भी डाल देंगे फिर पूरा। नहीं आपको जितना डालना है डालो। Join VLT 100k। अन्ना बी पे नाइफ कर रहे हैं ना। वेंका भाई आप पैसे खेल रहे हो कि एग्रो खेल रहे हो? Always aggro brother.
नो साउंड मिड ए वाइपर है स्पाइक डाउन नहीं है क्या बात ऊपर 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 बैंका चेंबर दिखा क्या अरे नहीं यार ट्यूब से नीचे कूदा गन के पास जा रहा है मेरी गन लिया 1 HP KO 1 HP माबा अंडर ट्यूब क्या गन थी इंस्पेक्टर शेरिफ एक्सपेक्टर भी है KO स्पाइक पे है आ गया चेंबर आ गया KO -55 स्पाइक ले लिया क्या नेस्ट वापस गए क्या वापस नहीं गिरेगा इतना जल्दी मिड देख रहा हूँ साउंड मिड साउंड मेरे को बी का सीन लग रहा है हल्का हल्का सा 30 seconds left. बी केयर करो बी आएंगे अन्ना आप ट्यूब के नीचे हो ना हाँ ट्यूब के नीचे हूँ मैं ठीक है मैं ट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ अंदर देख रहा हूँ ए पे प्लांट ऊपर चढ़ा One enemy remaining. लोडेड लास्ट स्पेक्टर है Spike Nice. planted. डिफॉल्ट आ रहा हूँ एल्बो है चिल करते करते कुछ ज्यादा चिल कर दिया रे One suppressed. वॉल अप कर सकते हैं वॉल अप डिफॉल्ट नाइस राउंड कितना अच्छा नहीं है अन्ना का नाइफ कितना सिक है ब्रो ये कौन सा दिखाइए बजाज भाई हाँ ये नया वाला जो मार्केट में फ्रेश आया है इजी लग रहा है ब्रो भाई चेंबर हर बार मिटाएगा मैं इधर का टेरिटरी रहा हूं मामा वेंका भाई मुझे ना हल्का सा बुली करना है उनको आप अब चढ़ जाओ मैं मुंह पे रिकॉल मार सकता हूं पर 30K वाले भी VLT में है नहीं चाहिए मत करो खाली क्या करना है मैं मेरे को ज्वाइन करना है था मिलके चढ़ जाओ वेंका भाई चढ़ जाओ नहीं करेंगे आप पे वेंका भाई आप माइनर इस बार मैं बी का वॉल दे रहा हूँ थोड़ा हाँ देखो सुन इधर जाके पीक करना है क्या मैं उधर का रिकॉल देखूं मैं 2 राउंड से वही कर रहा हूं ब्रो मैं बेल्ट चाह रहा हूं अभी अन्ना ऐसा वॉल है हाँ रिकॉन तोड़ सकते हाँ समझे हाँ तोड़ सकता हूं Knife deployed. One नाइस suppressed. एक्सचेंज एक मिड 3 जने नाइस वन दौड़ Spike down A. चेंबर मिड है किधर तू जा सकता है ट्यूब कोई क्लियर नहीं किया ना मैं जा रहा हूँ क्लियर करने भाई दो तीन है KO सेज वाइपर चेंबर अनोन प्लेसिंग सॉन्ग ग्रेनेड वॉल है अब भी आई वाइपर के वॉल हां वाइपर है सीएज है ट्यूब क्लियर अरे 120 KO 120 Spike planted. इधर है KO Last player standing. अरे स्क्रीन बोलना आई थॉट साइट है वो साइट ही सब स्क्रीन कैसे साइट गया है पता तो नहीं स्क्रीन में है वो अनुज मिड देख रहा है Just let them try to catch me. वेंका भाई थोड़ा नाइस पे खेल लेते और नहीं दे दे तो आपने भाई क्यों करा लास्ट राउंड ब्रो वेरी बैड मामा कौन करो ना ये बार-बार चेंबर आ रहा है टरेट तोड़ रहा है ड्रॉप तो मांगो ब्रदर लव यू रे भाई मिड पुश करके मारते हैं चेंबर जाओ यप लेट्स गो हां इधर ही चलना टीम बॉल दे रहा हूँ आपके लिए लो भाई क्या बाद में ए पे चले जाओ भाई डन डन Suppressing. I've destroyed B कोई है Flashbang. लो 1 HP 128 B 2B so and KO बी लग रहा है फुल बी मेरे को स्पॉट किया चेंबर 130 Use that. कमिट डिले कर रहा हूँ ना आ गया साइड डिले कर रहे इधर से कर रहे क्या गॉड्स पे ठीक है वेट करो बस अभी Shot down. मर गया ब्रो Last player standing. हेलो रोहित गॉड जी भाई 10 गोली चलाई मैं मरे हुए बंदे पे Nice one, man, bro. Have you ever tried intermittent fasting? Yeah, I do. No, almost on a daily basis. Eco. बजाज ब्रो ड्रॉप अ शेयर ब्रो आई सेव फॉर ऑप मैं जा रहा हूँ मैं शेयर देगा किसी पे अच्छा वाला
मैं शेरिफ लेके बी पुश कर रहा हूँ। आपके पास कौन एक अच्छा कोरोना में दो रे दो। थैंक यू। अरे मुंह पे शॉट डाउन मारूंगा, वेंका बकचोदी मत कर। आया नहीं वैसे। दे रे गन तो दे। तेरे साथ कोई शेर दो यार। चल ना मामा भाई, तू भी ले भाई, तू भी क्या आ रहा है? You want to play? Let's play. ए गाइस बॉल ही नहीं है पेशेंट। ड्रोन तोड़ सकते हो? ड्रोन तोड़ सकते हो? ट्राई करता हूं। कैन ट्राई। अन्ना स्पॉटेड है। ड्रोन तो नहीं टूटा लेकिन वो मेरे को तोड़ दिया। अन्ना ऑर्ब ले लो। मैं ले रहा हूं। एक एल्बो। नाइस शॉट रे वेंका। नाइस शॉट। Spike मैं आफ्टर आ रहा हूं down अनुज भाई। -110 के वो राइट साइड। स्क्रीन जा सकता है वापस। Last player अबे standing. वो उधर है 55 मारो उसको। पूरा ए का पीछे है पूरा चेंबर। KO Spike -55। planted. नेक्स्ट वॉच पार्टी आफ्टर दिस मैच। हील हो गया। -29। मैंने हां वो हील हो गया। मैंने 55 मारा। KO वर्ड है। जी मैं यही जा। ए पे सामान लगा दो। ए पे सामान लगा के अनुज भाई इधर खेल लो, मिड पे टरेट लगा के। मोलोटोव देता हूं एक्चुअली। हां अरे रिकॉन तोड़ सकते हैं क्या कोई? ये पे माम्बा को भाई हां भाई मिड पे टरेट ऑफ कोर्स I don't know. रिकॉन तो कभी भी तोड़ सकते हैं बाबा। Knife deployed. 3 तीन suppressed. जन। अन्ना थोड़ा बैक साइड की तरफ से खेलते हैं हां ना। तो वही है, मैं चला गया ना पीछे पूरा। हां बस। चैम्बर टीपेड। अरे -80। मैं ट्यूब देख रहा हूं। टरेट तोड़ रहा है यार। अच्छा ठीक है। बी क्लोज प्लांटिंग भी गाइस। Spike चला गया planted. I have Enemy kill. मैं ड्रोन कर रहा हूं। Take flight. कुछ नहीं दिख रहा है भाई। No charges. एक येलो। येलो पे रिकॉन डालूंगा मैं, रुकना। Scanning ahead. नाइस लास्ट वन है। Concentrate so नाइस बैठ जाओ। वेल डन। लेट्स गो। कोरियन बफ। You fail. Now flee. अन्ना आप मिड पे आओ ना, इसको नाइफ मारो, उसको पीछे मत जाने दो। हाँ मैं भी अकेला खेल लूंगा। नहीं एक काम करते ना अनुज भाई, सुनो वो आपका टरेट तोड़ रहा है ना, वो आपका टरेट तोड़ रहा है ना, स्विंग करके मैं ऑफ लगा देता हूँ साइड में आपको। चलेगा वो भी। इधर मारो नाइफ। फिर मैं अनुज रहने दो ना, वो ऑफ लगा रहा है। मैं ए पे लगाता हूं सेटअप। तो गॉड स्पीड मैं भी एक खेलता हूं, सरप्राइज बोलेंगे। हाँ आओ आने दो रे। मेरे को एक ड्रॉप देना ना। ड्रॉप मेरे को भी ड्रॉप चाहिए। दे रहा हूं। मैं एक अर्ली इन्फो के लिए रिकॉन दे रहा हूं। नहीं मत दो, इधर सप्रेस कर रहा हूं। कर रहे हो क्या? करो। हां Shutting them down. One suppressed. ओह माय गॉड मेरे को भी उड़ा दिया। वेंका भाई ओवर ब्रो, ही इज हिम। I will avenge you. ओ ऊपर था, नीचे था। ट्यूब चढ़ रहा है, ट्यूब के ऊपर चढ़ रहा है विंडो से। नेवर माइंड वेंका भाई। Last player standing. भाई एक बार मैं करता हूं। My quiver is never full. अरे आपका पैसा ही नहीं रे बाबा। PRX एंड लॉन्ड में कौन जीतेगा? PRX इको ना। हां इको। मेरे पास पैसा नहीं है। इको कर रहे हैं? हां मैंने 15 गन दिया लास्ट राउंड, मेरे पास पैसा नहीं है। भाई आउटलॉ पॉसिबल तो है लेकिन नहीं करना है। मैं एक और लेता हूं, मेरे नाइफ्स आ रहे हैं। हाँ थोड़ा बी हल्का सा पुश करके खेलते हैं। चेंबर अगर मिड ले भी रहा है उसको लेने देते हैं, और क्या। मुंह पे चाकू मार। ये चेंबर है। चेंबर लग कर भाई, चेंबर लग हां भाई मम्बा तेरे को ही ऑफ है। बहुत सामने चेंबर इधर है, ऑफ है। हां भाई फुल एसिंग गाइस। You will not kill my ally. वेंका भाई ड्रोन है मेरे पे। रेस कर दिया उसने। करो ना सिटी से ड्रोन करो। क्लियर है अन्ना अभी तक। अरे एक उसके प्लांटिंग है। ये मार किया, बॉल ऑन किया। Spike planted. एल्बो एक एक राइट साइड पे था। 1 HP सोवा 100 यार। अरे यार सोवा 100 टैग है। राइट से आके मार। Last player standing.
Nice try guys, nice try. सुबह मरता मैं निकाल देता राउंड। अरे मैं मेरे पास शॉट गार्ड था। मेरे को 1 सेकंड मिलता ना मैं मार। भाई मैं लैग बहुत हो रहा हूँ रे। टैकल लॉस आ रहा है क्या गाइस? मेरा भी आ रहा था पर अभी ठीक हो गया एग्जिट बैक कर रहा हूँ। Could you explain how intermittent fasting balancing the hunger? I do 16 hours of fast and eat on the other. ये दो ही लोग मार रहे हैं यार पैकेट I'm लॉस used to it. हाँ I have dinner at 6:30 and breakfast at 9:30 next day. हायर चिम क्या सीन है? वॉल ऑन करने हो तो बोलना। -80 Spike down A. टिम्बर मिड घुस गया कह रहा कोई देखो ना। ऑफ है पीछे हटा इसे एक वाइपर है उधर। ये कौन है? नहीं यूज कर दिया 20 सेकंड्स। वॉल ऑन करने हो तो बोलना। बेल्ट देख रहा हूं मैं। स्पाइक Spike down A. क्लोज। One enemy remaining. नीचे आया। One suppressed. Oh my god. अनुज भाई। My god. उसको रोप से मेरे कितना मारा है मरा क्यों नहीं हो? रोप ज्यादा इनएक्यूरेट कर दिया अभी। हाँ थोड़ा सा इनएक्यूरेसी बढ़ा दिया है। Only 2 meals the whole day, no? I have. बी जा रहे हो ना? I have 3 meals and a protein shake and a snack. So, भाई एपी में अकेला हूँ? ऐसे कैसे भाई? कोई बात नहीं मामा अपन मेरी थी। वॉल है अपने पास? नहीं वॉल भी नहीं है लौड़े लग। मेरी और सोवा को मारो। You want to play? Let's play. रिजल्ट आ गया इसका? यस सर। मिड पे कोई आया तो था। ए उसमें क्या? ट्यूब इन ए साइड इन गाइस। इनका क्या है? पुश का ट्रैप है मिड पे है वो पक्का। नाइस। ए नया सीटी पुश हो सकता है। फ्लैंक नजदीक आना मैं ड्रोन करूंगा। मैं फ्लैंक करता हूं आप अल्ट कर सकते हो मैं मारूंगा फिर। 1 सेकंड। क्लोज क्लियर है। Spike planted. सीन हो गया ना इधर क्लोज क्लियर है बोला मैं उधर से हल्का सा फ्लैश आया। Welcome to my world. अच्छा ड्रोन इधर तक नहीं गया। अरे मेरे को ब्लाइंड कर दिया वो। ड्रोन हमेशा ब्लाइंड करता है वो। Shutting them down. Two suppressed. Flag it. One enemy remaining. Nicely guys, well played. So proud of you. डिफ्यूज लोगे गॉड स्पीड जल्दी आओ। हाँ बजाज भाई लो भाई। अरे ऑफ किधर है मिड पे है। क्या पता आप किधर है? यार मुझे थोड़ा सा ना जलन हो रहा है। मैं एंट्री फ्रैग नहीं कर पा रहा गाइस। सोवा हो। यहाँ पे तो भाई डर देगा भाई। कैसा करेगा एंट्री फ्रैग? सोवा हो भाई। do not place your fateful limitations on me. ओके मामा। भाई सोवा भी करेगा भाई चिंता मत करो। मैं अल्ट कर दे रहा हूँ। सोवा डिफ तो है। अल्ट कर रहे हो और सेटअप लगा दिया मैंने। क्योंकि वो लोग 3 जन है ना। सोवा डिफ है। मुझे बढ़ रहे हो पहले। सोवा डिफ है। है। आएंगे वेंका इधर। हां Shutting them down. मेरे को भी अच्छा नहीं लगता क्या? नाइस शॉट। इनका स्मोकर डेड है गाइस। भाई पेन फॉर रखो ना मामा। मैं का अल्टी में ड्रोन आ ड्रोन तोड़ता हूं। लेफ्ट देख यार F1 का ट्रैक क्यों बन गया? उसने नाइफ कर दिया मैं गिर गया। रुको रे बाबा अभी मारेंगे। मैं बी जा सकते हैं ये लोग? मेरे पीछे ब्रो 120। भाई मैं मिनी मैप पे देखा अन्ना। बोलोगे कब? अरे मैं बी पे हूँ। अरे अन्ना आपके पीओवी में दिखा मेरे को मैप पे। नहीं अन्ना के पीओवी में नहीं दिखा मेरी पीओवी पे दिखा ब्रो। यू आर सपोज्ड टू बी वाचिंग मिड ब्रदर। आई एम वाचिंग मिड। क्लियर है? नाउ ही देयर। बी पावरलेस। मेरे पास रिकॉन ड्रोन सब है गाइस आओ। ये क्या वॉल करी है उसने ब्रो? Spike planted. पहले ड्रोन कर रहा हूं। मेरे पास अल्टी है। अल्टी पे चार्ज करते हैं। सोवा अल्टी करो। चलो लेट्स डू इट।
रिकॉन दे देना ये लो मामा। 1 2 3 नाइस मॉली है ना। One One of you can defuse actually. I'm biting on the defuse. उधर ही हो। Nice round मारो guys. मारो बजाज भाई मारो। अन्ना मैं अल्ट आ रहा था। बजाज में एक वन टैप फ्लिक। आगा 80। मिड से आ रहे हो। विवेक वेलकम। Can someone drop? भाई वेलकम भाई, मुझे लगता है मेरे साथ टाइमिंग हो गया वहाँ पे। नहीं I think so too yeah. Or maybe वो B से है when Anna went orange ना he might have looked in. How Because मैं वाइपर को मार के how तुरंत you आया plan था। your meal for a day? वाइपर को भी My मिड पे first मारा। meal is at 9:30. All good I have brother. protein shake at 11:30, 12. I have my मैप lunch में at देख रहा हूँ, बोला 1:30. चेंबर। I have a मैं भी snack मैप में देखा उसको at bro. 4 and I have dinner at 6:30. और कुछ बचा ये देखो चैट। One suppressed. भाई बी का सीन है गाइस। चेंबर लूरकिंग करता है हमेशा। गांडू। नेवर माइंड। भाई मारा गांड मार दी भाई चेंबर ने। ए पे चढ़ा ऊपर। आने दो ना ए पे मेरे। अन्ना अंडर अप मार के खींच लो ना। वॉल ऑन करने बोलना। बोलता हूँ। ये देखो भाई। राइट देखता हूँ आपका नज भाई। ठीक है वॉल अप करना वॉल अप। Just holding right. राइट साइड जा रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों लग रहा है वो लोग बी आने वाले हैं। आपका क्लोज देखो। डाउन हो रहा है। सो है। वॉल डाउन हो रहा है। नाइस। One enemy अरे remaining. वेंकी। Spike down A. मारो साले को। Still build. चीली। पीछे गया पीछे गया। मारो ना मारो पिक करके मारो उसको। 100 वेंकी भाई क्या आप लो सेंस अब चाहिए लास्ट अन्ना हाफ खत्म हो गया। अन्ना नेक्स्ट राउंड के लिए। क्या कह रहे हो मामा? वेंकी आप लो सेंस खेलते हो? Mid sense high. I started as Vito as Ascent, Sunset and Bind. 0.35. ये मैच खत्म होते ही हम वहाँ पे जाएंगे, ठीक है? इतना उधर तक आर किधर जाना है गाइस? किधर चाहिए बताओ? गॉडस्पीड बोलेगा। बी चलते हैं गाइस। बी चलते हैं। क्या बोल रहा है? ठीक है, चलेगा। एम तो लग रहा है। क्या? भाई मैंने एक रिकॉन देखा है गाइस। अच्छे से होगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा। Right here. नहीं होगा भाई। इधर से कहीं पे तो होता ना रिकॉन। जंप करके होता है वहीं से होता है। अरे लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा किधर है। Right here. गाइस मैं रिकॉन हाकूंगा, मेरे को फीलिंग आ रहा है। के बाहर है वो। कोशिश किया मैं। टॉप येलो चेंबर। एक तो रिकॉन मारा है मैंने। One suppressed. भाग नहीं सकता। बोला गॉड स्पीड। वॉल अप। भाग गया क्या? जाके बोल रहा वॉल अप। किचन। थोड़ा। लैंड करो। वॉल डाउन हो रहा है गाइस। कर दे। क्यूब। मुक्के थ्रू वन टैप मार दिया डिफॉल्ट। नाइस शॉट भाई। अरे डोंट थ्रो गाइस प्लीज। अन्ना सही है। अरे नहीं सही है। नहीं चलेगा। लेट यू वोंट एक्सपेक्ट मी यार। गारंटी करता हूं ना। मैटा बॉल ब्रो। चल अन्ना गोली चलाओ 2-5 गोली चलाओ जल्दी। जाने वाला तो अभी भाई हेलो मैं कुछ तो मारा है चेंबर को मैंने। कुछ भी मारा चेंबर मारे दिल्ली में वो भी। चेंबर बहुत खाया 78 खाया नेड से। वो किचन में बैठा था चेंबर। मच्छर की मारा दिल्ली में वो भी। किचन में बैठा था, नेड फेंका, नेड में खाया 78, फिर एक बुलेट में मर गया। बजाज भाई डिसिप्लिन का तारीफ तो करना पड़ेगा। देख रहे हो मैं फ्रैग ऑलमोस्ट हो गया था भाई। मैं गिर रहा था मेंटली 1 to 8। गार्डियन स्किन मेरे पास 8 नहीं 7 सेकंड में पता नहीं कौन सा है। अरे वही तो गलती किया ना मैं। इधर रिकॉन दिया। कांट ब्रेक इट तोड़ रहा हूं। क्लोज है। वॉल ऑन कर रहा हूं। ए तीन फील है। मारा। ओह नो। मेरे वन टैप पड़ गया मेरे को। तो भाई टैग नहीं हो रहा। नाइस बजाज ब्रो ऑल यू। दिस इज योर राउंड ब्रो, टाइम टू शाइन।
वो फ्लैश हो गया गाइस। तेज भी था बैक साइड। अरे पीछे आ गया। Spike down. बजाज बजाज भाई बजाज भाई नाइस ट्राई, नाइस ट्राई। तेरे पास से कैसे मिस हो सकता है भाई? Also delete my hard drive. नाइस ट्राई। गाइस ए पे थोड़ा कांटेक्टिंग करते गाइस। मारो। फोन नंबर क्या है? चार जन थे। कांटेक्टिंग का करने के लिए फोन नंबर क्या है? कांटेक्ट भाई मैं तो हीरो गार्डियन कर रहा हूं। मैं किल लाके देता हूं, टेंशन मत लो, मैं किल लाके भाई ये मैं बीलॉक कर रहा हूं फिर यार। तुम सब हीरो बन रहे हो तो मुझे दूसरी साइड हीरो बनना है। वेंका भाई व्हाट इज दिस? नो ट्रस्ट इन योर टीममेट्स। हम मारोगे ना मेट को? चप्पल खाया दोनों। कांटेक्टिंग में चप्पल खाया हमने। भाई ट्यूब के अंदर बैठा है। अरे भाई सेज भी है और ट्यूब पुशिंग अप, यू वोंट एक्सपेक्ट यू। I got the spike. कम ऑन अनुज भाई। वहां गांड फटी हुई है। आया एक आया। Spike down. Attacker दिक्कत spawn. नहीं, तेज हो गया। -55। वेंका भाई एम किधर है? गोली किधर लग रहा है? विनेबल। भाई आई आल्सो वांट टू प्ले लाइक वेंका ब्रो। क्यों? Enemy remaining. नोड़ा। अरे आंटी रे। एंटी दिखा नहीं। दिखा नहीं। नहीं भाई। Attack when they're suppressed. Accept their options, they make mistakes. सोहा भाई झूलो सोहा भाई। सोहा भाई झूलो क्या बोल रहे हो भाई? अरे अपोनेंट सोहा एक किल में है। मामा भाई। अरे मामा भाई पर्सनली ले। अरे मैं अपनी पे उतर आऊंगा ना फिर देख लो भाई। अपोनेंट सोहा एक किल में है। अच्छा उसको बोल दे क्या? ठीक है भाई। गॉडस्पीड ब्रो गॉडस्पीड ब्रो डायमंड 1 है, अन्ना प्लैट 2 है। लग रहा है किसी को? नहीं और मैं कोई बात नहीं। क्लोज। ओ मैं हैक कर रहा हूं, ये पक्का मुझे हैकर बोलेगा अभी। वॉल ऑन कर रहा हूं। Deploying drone. तो 3 मिनट पे केओ वाइपर हुआ। प्लान कर दो भाई दिखे दो लोग। अन्ना वॉल डाउन हो रहा है। मैं हेड हो जा रहा हूं। वॉल डाउन। स्नोमैन देख रहा हूं मैं गाइस। देख रिकॉन इन 10 ब्रो। रिकॉन बैक साइड वेट। वॉल अप कर रहा हूं। वॉल अप अगेन। रिकॉन करके वॉल डाउन कर रहा हूं। किधर चाहिए? किधर रिकॉन चाहिए? बैक साइड। वॉल डाउन किया। टॉप साइड एंड किचन। One enemy remaining. किचन। Nice one guys. No, just pan. वेंका भाई रात के 2 गेम खेलने के लिए फ्री हो जाएगा डेली? नहीं ब्रो। पहुंचूंगा मैं। आपके साथ क्यों ही नहीं कर पाऊंगा मैं। क्या? भाई क्यों बेचारे का गेम बिगाड़ रहे हैं मामा? इधर हम खेलते हैं। अभी औकात नहीं है इमॉर्टल जाने का वापस। हमारा टीम है। ये चलते गाइस। माम्बा आफ्टर वाचिंग। क्या? माम्बा आफ्टर वाचिंग ये वेंका। क्या? रुको मैं स्टिकर। You don't? No drone. Top left side. इधर बैक से देख। Nice बजाज। Enemy spotted mid. लो है वाइपर मर गया। 4v2 बैक साइड चेंबर लेट्स बैक साइड। या बेल्ट। नाइस गॉड स्पीड बजाज भाई सात किल पे आ गया वेंका। मोटिवेशन चाहिए थी बस आपको। Need a drop. Not that I need to, of course. Lil bro destroyed you. अरे कैसे मेरा टर्रेट डॉज करके? पता अरे नहीं। ये टर्रेट का नया पीओवी है।
हाँ आई थिंक वो ऐसा फार है, ऐसा देखो ऐसा वो एंगल देखो अनुज भाई, आजकल वो छोटा सा एंगल दिखाता है जब आप टरेट लगाते हो। हाँ मैंने इसके ऊपर लगाया था। हाँ वो ऐसा है ना, बोल रहा हूँ बी पुश करा और ऊपर से आया। क्या जाना है? स्लो खेलते हैं, पिक के लिए खेलते हैं। ड्रोन करो ना मामा भाई। आओ ना भाई बजाज में, आपके लिए तो जान आ जाए। Let's play. आएगा चेंबर यहीं पे रहेगा। बेल्ट मैं मारता हूँ, रुको। रुको वॉल ऑन कर रहा हूँ। करो गाइस वॉक करके पीछे लो अभी। नहीं इधर है, ऊपर चेंबर पे। देखा। चलो पीछे लो। अरे गांड मार दी मेरी भाई। वॉल डाउन हो रहा है, रुक जाओ। वो आएगा। कहाँ दिखा लास्ट? वॉल अप होगा तो मैं बता दूंगा, फ्यूल आएगा तो तब तक होल्ड करते हैं एंगल। मेरे पास अल्ट है, ठीक है मैं अल्ट कर दूंगा, अन्ना आराम से प्लांट हो जाएगा। लास्ट टाइम कहाँ दिखा चेंबर? लगा क्या था? You will not kill my ally. ऑल अप करो एक रेस करा। ऑल अप कर रहा। इट्स फ्लैंक लड़ने जा रहा हूँ मैं। वॉल डाउन। एक वो है, वो क्या सेज बूस्ट करता है ना, वहाँ पे है चेंबर। वापस से आओगे? हाँ आ सकते। नहीं बी खेलते हैं ना। नहीं वो सब रोटेट कर लिया ब्रो। अच्छा ठीक है जाओ, मैं इधर टेक कर रहा हूँ, जाओ। है अभी भी पुश इधर मेरे पिंग पे। 30 seconds. बेल्ट क्या वो? चल बजाज भाई मैं देख रहा हूँ फुल प्रेशर जाते हैं ना। बड़ी बजाज पॉकेट का अल्ट कमिट लग गया ना। क्या सेव करते हैं? टाइम नहीं है ना, मिड भागो भाई। देखो रे क्या मैं सेव कर रहा हूँ, मैंने प्लांट करने वाला हूँ। Last player इधर के भी नहीं standing. बचे। मैं बोला सेव करना है, क्यों इधर भगाया मेरे को? वेंका। हाँ अच्छा शॉट मारा रे पहला वाला। I can hold an area pretty well myself. Make sure to अरे ये चेंबर अकेला भी खेल रहा है, हम उसको आराम से ले सकते हैं। चलो अरे मैं बोला मैं मारता हूँ उसको, आप लोगों ने बोला भागो बोल। मैंने बी इसलिए बोला, मुझे पता नहीं था ना मामा ब्रो पिक कर देंगे ऊपर को। अरे वो पीक तो वो मुझे वॉल के थ्रू करके गया भाई। अरे तो उसका तो मतलब वो वॉल से सामने आ गया, पीछे टीपी लगा के। तो मैंने सोवा को किल दे दी गाइस। मत दे भाई, इतनी मुश्किल से तो दूर आया हूँ, क्या कर रहा है? कुडंट बी मी भाई। ओपन क्लोज टीपीड बोलो। अब ड्रोन कर दो। नहीं है ड्रोन। क्लोज है। spike down B. अरे बीच में कुछ नहीं। ओ भाई कहाँ गया मैं? प्लांट कर रहा हूँ कैसे? बैक से बाहर सकते हैं। हो सकता है फ्लैंक अभी। देख लो चेक करना है, चेक करके आने का पूरा। आप करो। भाई गॉड स्पीड स्पैम करना है वहाँ पे, क्यों इधर भाग रहा है? अरे आगे देखो उधर क्या हो रहा है, 5 लोग मेरे पास वैंडल था। स्पैम करना चलेगा, 2 लोग दिखा ना। नाइस वन मम्स। तीसरा भी मरता है, नहीं छोड़ता तो क्या जो स्प्लिट ट्रांसफर किया भाई। दिखने चले गए, एक चाहिए था भाई, बहुत इधर आतिशबाजी हो रही। मैं गया था ना फ्लैंक देखने। मैं वापस आ गया था। अब तक हो गया इधर। देख हो गया, कांड हो मैं गया। सोचा मैं डॉज करके आ जाऊंगा। क्या है मैं टॉप ट्यूब जाता हूँ अभी। 2 लोग दिखने के बाद यू थिंक यू आर जान। टॉप ट्यूब जा रहा है, तेरे को कुछ रिकॉर्ड नहीं चाहिए। मामा ड्रोन करो ना बी पे। हाँ पहले ड्रोन करो फिर रिकॉर्ड करो ना। Why are we not taking mid control? We are afraid of someone. You're going. I will drone come. आता हूँ मैं भी आता हूँ आपके साथ। अरे बाप। नाइफ मारो। alarm bot out. वॉल ऑन कर रहा हूँ तेरे लिए। एक बॉयलर दिखा नहीं मेरे को। ये लो पैन का लैंड। नाइस रे बजाज। गाइस कोऑर्डिनेशन तो है। Precise. वेंका भाई घर में घुस के मारेंगे। बॉयलर एक 70 एक मिड। स्प्री ट्रांसफर 100 मिड। स्प्री ट्रांसफर तो था। ओपन प्लांट है Enemy इनका। remaining. पता नहीं कहाँ है। नाइस। They're all dead? I have more tests to run. ऑफ ले लिया मैंने। नहीं भाई मेरे को एक हल्का सा ड्रॉप मिल जाता। दे रहा हूँ ये प्राइम वैंडल किसके पास है? ये चलते क्या केजे अल्ट पे? हाँ सोवल्ट है, लेकिन वो सोवल्ट करेगा, हम घुस जाएंगे। I can drop one gun. भाई हमारे पास जिधर सोवा अल्ट कर रहा है मुझे अल्ट बताओ। नहीं सोवा जिधर अल्ट कर रहा है उधर मुझे बताओ, मैं उसके मुंह पे अल्ट करूंगा भाई। Nowhere to run. I am the hunter.
मारो रिकॉन नाइफ सब मार दो उन लोग का भी सब आ रहा पहले उसका रिकॉन तोड़ता हूं मैं, फिर मैं अपना रिकॉन करूंगा। नहीं मारो पहले चेंबर के पास ऑफ का पैसा है। हां क्या ऑफ के रिकॉन नहीं तोड़ा भाई। नाइफ तोड़ा उन लोगों ने। एक ऊपर खड़ा है। मारूं अल्टी करो मार दो Nowhere to run. करो वो दिख नहीं रहा गाइस। अरे मेरे को जाने दो। नाइस पीछे आ रहा, बैक से मार अन्ना वन बैक से। दो वन मोर चेंबर आल्सो स्क्रीन्स। पीछे जाएंगे नहीं पीछे नहीं जाएंगे। लो आइए -114। मेरा पोजी देखो गाइस। चेंबर सीटी आ रहा है प्लांट करो ना वॉल डाउन है हो रहा अभी। है गाइस, मेरा लैग हो रहा है। कोई बात नहीं, अन्ना ही निकाल देंगे। अन्ना मारो, चेंबर लो है 100 डैमेज। वॉल ऑन कर रहा हूं। इधर आया स्क्रीन क्लोज। गॉड स्पीड साइड हां रोक के पास। नाइस वेंकी। लैंड करते पीक करते I could fight forever. अन्ना चाहिए प्राइम। हां चाहिए। ये वेंडल नहीं हो रहा है। I can drop one guys, I can drop one। हां मुझे चाहिए। मैंने दिया आ जाओ गाइस, उनका एक और राउंड है। मिड टू बी कर सुनो मिड टू बी से हम लोग 4 लोग पी जाओ, मैं मिड से आता हूं, मैं डैश मारता हूं मिड पे। मैं दे सकता हूं ना, मैं मारने आ जाऊंगा। ड्रॉप करो। नहीं उनके पास पैसे नहीं। ओह उनको भी ड्रॉप करना है क्या ब्रो? बी फास्ट करो मैं आता हूं मिड से। ड्रोन सीधा बम। हां पहले ड्रोन फिर रिकॉन। चेंबर लाइक्स टू प्ले हियर ऑलवेज। ड्रोन ना ड्रोन करके भागो। आओ देखो भागो। बॉल ऑन कर रहा हूं। रिपिक करेगा वो। क्या बात है। नो वन ऑन टॉप। होल्ड बैक साइड गाइस। प्लांट कर सकते हो? नहीं पीछे आते ना नेक्स्ट बैक साइड खंबा। अरे स्नोमैन साइड इज नो स्नोमैन है क्या स्नोमैन लास्ट स्नो लेफ्ट साइड। मेरे को देख रहा है। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट राउंड। अन्ना दे दिया उसने थाप करके। एक्सीलेंट गाइस, एक्सीलेंट राउंड। 2 VLT के प्लेयर्स बाकी थे और वही लक मिला। मैं ड्रॉप दे रहा हूं यही राउंड खत्म करो। ये क्या है? मैं प्लेयर नहीं हूं। अन्ना सेम थिंग। आ जाओ। सुनो ना गाइस, उनके पास चेंबर अल्ट है, चेंबर बी खेल रहा है, ए घुस जाएंगे, खत्म करेंगे। या एक काम करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करना है असली वाला तो बी फेक ए फेक कर दो, बी चलते हैं। ठीक है लो बॉल कर दो, नाइफ कर दो, रिकॉन कर दो, मैं मारता हूं बी वाले को। You want to play? Let's play. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है चेंबर इस बार रे आ सकता है। Deploying drone. नहीं हां चेंबर शायद ये पे ऑफ है। बोल रहा हूं मैं। आ जाओ बी आ जाओ। अरे नहीं सुना रे, सॉरी ब्रो। क्यों? डिडंट हियर ब्रो, सॉरी। वाइपर मर गया मिड। आ जाओ ए पे अन्ना, चलो इधर ए पे। नो स्नोमैन आ जाओ ना। कहां पे आना है? ए पे आना है, बी पे आना है? बी फॉर वीटा। लास्ट दोनों ये थे। चेंबर को मारा भी था ना थोड़ा। डिफॉल्ट प्लान दे रहा हूं। अनुज भाई हां थोड़ा स्कैम हो गया, ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है मेरे को? क्या स्कैम? चेंबर नाइस रे बाबा। एक किचन आ सकता है। हां आ सकता है। इस पे ऑफ है गाइस, केयरफुल। अन्ना क्या देख रहे हो ना? पता नहीं। ऑरेंज गाइस स्वॉट लिखने का बहुत मन कर रहा है, लिखूं क्या? जीतने के बाद लिख देना जो लिखना है। आया किचन। नहीं छोड़ो रे बाबा, इतना कैरी होके ऐसे टॉक्सिक होने का मन नहीं कर रहा है। इजी वेंका बोलो ना, ऐसा वेंका ड्यूलिस दे देने का, अपन ऐसी जीत जाएंगे। सही बात है भाई। गाइस आई हैव फाउंड अ सीक्रेट टू गेट टू इमॉर्टल। ऑल गुड। ये लोग असेंडेंट इमॉर्टल तो नहीं लग रहे थे ब्रो, तो बहुत गंदा खेल रहे थे। डैम भाई। तो टाइम फॉर वॉच पार्टी। लोग इस मैच गाइस मैच। चलो रे बाबा चलो। कितना स्कोर हो गया, क्या हो गया, सीन हो गया रहेगा अब तक तो। नहीं लाउड टू PRX5 लाउड टू PRX5 में देख रहा था। 5 राउंड कैसे हो गए? हां रुको एक सेकंड, जर्सी चेंज करके आया। अन्ना लेट हो गया अपन। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। twitch.tv रे रुको रे बाबा। लेट्स गो PRX भाई, PRX मार रही है हम हैप्पी। सही में? पर असेंट है ना, असेंट आई थिंक सो PRX जीतेगी ऐसे भी।
वीटो ही देखना मतलब नहीं देख पाए हम लोग। कोई बात नहीं ना, असेंट सनसेट बाइंड। ये Oh yeah, your mom's on the loose. Kubi. हाँ गया। DP forwards to just get right past it to fight. Slunk his way into the side. पर अभी भी कुछ भी हो सकता है। There's so much going on all over. क्योंकि ये राउंड जीतेंगे, इनके पास अल्ट्स की फ्लरी है, लाउड के पास, अगला राउंड अल्ट पे जीत सकते हैं। They lose this duel at 2 years. Critical one at that. No gaps here into the play. Judge. सड़क बाइट in his face. QC के बाहर। Practically in his mouth. ये FPX कॉम्प है, FPX खेलती है। Phoenix, Breach, KO. It's just that none of them actually found any success. Alex is calling a timeout. अरे ये चाइनीज टीम्स ना अनुज भाई, फिनिक्स पूरा मेटा में वापस ले आई है। बहुत जन फिनिक्स खेलते हैं, फिनिक्स सिंगल डुएलिस्ट। And full ult abuse करते हैं bro। हाँ अन्ना भी फिनिक्स है, अपना फिनिक्स आर्मी में अन्ना भी है। फिनिक्स है। ऑटम भाई फिनिक्स खेलते हैं। मजा आता है। Suddenly there's a gap in the defense and Paper X are very opportunistic. पहली बार इसको शान देख रहा हूँ मैं। So certainly 5 राउंड का लीड है not ना। a successful one for Paper X on attacks. समझा रहा है नहीं तो Indicating a little bit of their game भाई plan एलेक्स इज अ मूड दो भाई, मजा आ रहा है। कितना तेल, कितना ऑयली हो गया भाई इसका फेस। लोग मेरे को बोलते हैं गलत चीजें नोटिस कर रहे हो आप। Skin routine matchup would guarantee that rematch. यार बट जिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता यार कोई, जिंग मतलब ज्यादा ही बड़ी मिसिंग है भाई। क्योंकि ये लोग जिंग को रोल वीज़ावी रिप्लेस करना चाहता है, मतलब सेम रेस टू रेस। पर अगर मोनी को नियॉन दे दें, थोड़ा चेंज करे स्ट्रैट्स और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करे, मोनिये का नियॉन पे सिमिलर इम्पैक्ट आ सकता है, पर मोनिये का रेस पे नहीं आएगा। आई थिंक वो लोग ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनको पता है वो नेक्स्ट ईयर जिंग को वापस लाना है। अन्ना एक बार लेस भाई को बोलो झूले। लेस भाई झूल रहा है क्या? लेस भाई क्या है झूलो? अरे मजा आ रहा है। यार 11:30 हो गए, बेड टाइम हो गया। हो गया। अब I've got another in me. I've got one more in me. क्या? बोला ना ये टीपी करने से डिसाइड करने से पहले 3 लोग मर गए। वैसे तो वो लोग खेलते भाई। DRX VS का VS हाँ। भाग के गए सब। नहीं पर ये DRX नो DRX भी करती है अनुज भाई। अच्छी फैंसी खेलती है भाई, ऐसा फैंसी खेलती है भाई। अभी टेबल प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को मेंटली। Your opponent takes a timeout. They clearly want to adjust something about their attack style, and you say, right. बोला ना अब देखो इनके पास 3 अल्ट है, अगला राउंड तो ये सिर्फ अल्ट पे निकाल सकते हैं इजीली। भाई तुम लोग भी फैंसी यूनाइटेड का स्क्रिम किए क्या? पीछे से ये ना एसेंट पे बी साइड पे जाते पीछे से रीटेक करते, फिनिक्स आता है यार। अरे फैंसी ब्लैकलिस्टेड। अनुज भाई अभी तो कम किए, जब हम लोग गॉड रेन में थे ना तो मेरे प्लेयर्स रोते थे मेरे सामने। लास्ट में तो 5 जन पिटीशन लेके आ गए थे मेरे सामने, हम नहीं खेलेंगे। किसके साथ? फैंसी यूनाइटेड हेवन में उनका कॉम्प आया योरू गेको, ये लोग बोला नहीं खेलूंगा। हाँ मैं खेलूंगा इन स्क्रिम, तो बोला कोई फायदा ही नहीं है स्क्रिम खेल के। How dude? और फिर एक चाइनीज टीम थी भाई, वो पर्ल में वो पर्ल में फिनिक्स लेके घुसती थी, एस्ट्रा पुल में घुस के घूमते घूमते मार। भाई QCK is going to be ulting back in potentially with only an op to work with. Dropping wall. अच्छा एक और राउंड मिल गया। 6 राउंड जरूरी था। स्टैक पे काफी अच्छा 6 राउंड। हाँ वही तो 6 राउंड जरूरी था। Chasing him over तो extension. जितना अच्छा लीड मिला हुआ कम से कम 6 राउंड सिक्योर करना था। Time is running out, but handing these kills just over to him. And considering the Paper X economy was not amazing to तो राउंड ही कितने बचे? 3 राउंड बचे। Daifa pega Daifa both the teams lower kills bracket to be given in the other direction, but it won't make too much difference because we're so close to the end. I want to see Sen versus Paper X. Maybe a 200 IQ player didn't see how close they were to the ultimates, but maybe they're like, okay, Don't let's you think it'll break like viewership records? Just try and build that fast. What a way of entering.
Loud और Sen Grand Finals. Loud तो हो गया ना? हाँ, पर it already broke. It broke the viewership record 1 million. उसको ऐसा हाथ से ऐसा रेस क्यों करा? अरे ये मैं कल भी देखा था PRX वाले एक जन फिस्ट बम करने आ रहा है, दूसरा वो हाथ पकड़ ले रहा है. उसको चल रहा है बाबा. Maybe that is the secret. ठीक है. Early knife fall. It's just an attempt of a fake, but the early knife gives it away. कल BO5 है, कल भाई देखो. It's going to be onto जो skills ही उनका आ गया इसका कहाँ से फेंक रहे हो? play over towards A. Got away to sound cues. Odin Oh, through. They are getting absolutely destroyed here. मर क्यों नहीं रहा जब बोलते हैं? मर क्यों नहीं रहा है? इतना बुलेट खाया है सबके सब. Also, now with that showstopper, wants to send it and let it rip. Rolling Thunder cannot save you. Away from that one. It's explosive. High octane action. Oh, there. Beautiful by 2years. Really just expecting that reposition. क्या करते रहते हैं लोग? अब वापस को दे दी वो कुछ भी करते हैं भाई. Right into it, but misses the opportunity. वो देख लिया. Jump spots, gets a bit of a dish. Winnable actually, Forsaken or something like that. Patience though, not trying to force the fight in this situation. They have तो the plan कर रहा है. advantage to go for the retake. नहीं फगा. Oh, that could be huge actually. Feels confident enough to तो अल्ट बचाने के लिए नाइफ डालना था उसको. नाइफ आगा सीधा. Forsaken going. क्या कर रहे हैं? अल्ट कोई काम भी नहीं आया. क्या अल्ट था? शॉर्ट अल्ट करता है इससे. ऐसे हेवन अल्ट कौन करता है भाई? भाई क्या किया है इसने? भाई मेरे को कभी-कभी लगता है PRX एक्चुअली रैंक्ड की तरह खेलती है भाई मैचेस में. QCK is already there. Justin didn't see anything. Not too sure. उम्मीद on something. Jumping down. And there it is. The kill उम्मीद fade. गलत जिंदगी में PRX इंडिविजुअल इतनी स्ट्रांग है, वो लोग कुछ भी करके जीत पाते हैं. भाई मेरे को ये लॉजिक समझना है कि उसने मछली को ऐसे ऊपर ऊपर ट्विंग ट्विंग करके क्यों लेके गया वो. फाटो इंटरनेशनल लेवल पे प्लांट कर रहा है. उसको तो फाटो है क्या? ऊपर ही था वो सोचा. हाँ. शॉट पे लेके जाएगा इवेंट तो चला नहीं है मैं वहां से चला. पर शॉट कंट्रोल तो ले सकते थे शॉट क्लियर करके. सड़क भी कह रहे हैं ऐसा कैसे क्या आ रहे हैं ये लोग? साड़ा बोल रहे ये कैसे आया इधर? Final round of the half. Chances to tie this up, but PaperX's economy in the dirt. Oh yeah. Compared ये with बॉल double अच्छा है up ना. setups, I saw for a moment there on Loud. They'd probably toss them on the floor, looking to play them in the early game. A heavy stack of Loud as well. They can play over towards A because Les has got the pit down. Not being contested. He was assisted with an early fault line of 𝐻𝐈𝐍𝐿𝐒. QCK भाई क्या चल रहा है? QCK, he's not worried about it. हैं जी? No, he's not. मेरे को समझा नहीं क्या देख रहा था वो कुछ. You would be a little cautious in this situation for some pop flashes through the smoke or this kind of thing, but he's not worried. Nice shot. लेस्का अल्ट देखो. खत्म है ये राउंड. लेस्का अल्ट देखो. ए पे स्टैक कर रहे हैं. लेस्का अल्ट इम्पेनिट्रेबल है वो. अनलेस ये लोग मिड से जाएं. Position still with the operator. And the ones who aren't coming up with really any of the appropriate answers. Double smokes out. Who is tense पे बैठ गया? But it's being spammed with the rifle at work. तो ये tense पे बैठ गया. Placed onto the end of the barrels, and everything stolen I away would pay from for them. it. So even Watch. that Loud doing a miraculous job there. Honestly, bringing it to $5 pay per view भाई. I would pay. IPL का क्या सीन है? अरे CS के ब्रो इजी I think it मैन. bodes fairly well for Loud that they were able to Easy. खाला for a reason भाई. 10 रन चाहिए 13 बॉल में. शिवम दुबे 13 balls 10 runs. यहीं से हार जाए तो I मतलब think the adjustments looked nice. Impossible, bro. Squeezed with the operator Shivam on Dubey on open, strike. ended up playing really well. लोथर शिवम- HSL बैट. शिवम दुबे and रविंद्र जडेजा flashbacks. Well, earlier we spoke to QCK just before That is dispatch. not a surprise. You still think Pacific is the worst region? I mean, he's a part of mais EME. conhecido como QCK, उसको लगता है duelista da worst loja. region है Pacific? Não sei muito específico o que eles Lothar. tiveram de diferente, he's mas a part of EME. talvez eles Bro, tiveram by far the mais best momentos dentro do jogo, conseguiram otimizar esses momentos e ganhar rounds chaves que quebravam a economia ou faziam um snowball de ult e aí o jogo ficou um pouco complicado. Falar sobre isso अरे logo DRX depois में da but derrota é EME complicado, tô me sentindo triste, content muito ruim, creator. mas o campeonato ainda não acabou. Primarily, and it's not really his fault. It's just how they view the game. Muitas delongas. It's how we view the game Tudo bem, as isso well. não importa. Perder é Differences perder, of independente de opinion, round. not Perder por much round to ou talk por about. 14 é a mesma coisa, a derrota do mesmo jeito. Winnable, oh man, it's looking more likely. Finally fades away and he's back into it, but here it is. The follow-up. With all the rifles online. He doesn't have the time. My God. Eu não vim pra substituir ninguém, eu só sou um novo jogador do time. O time se tornou um time novo,
com novas formas de jogar, novas composições, então acredito que estou me saindo bem. Não sei se é confiança a palavra, mas traz um conforto por você jogar com pessoas que já lidaram com essas frustrações antes. Então, a gente vai lidar. Baकी maps क्या बोला था मामा? A gente já venceu times com esse estilo de jogo, então a gente vai saber lidar com Sunset है isso. और पता नहीं कौन सा है. Sunset है? चांस है. Just really interesting insight into QCK and his ideas. You know, he's I coming think into ये this V2 team. बहुत paper Obviously, X a lot of favored है. players Ascent, saying, Sunset, a lot of bind. players, fans watching it saying, well, he's replacing Aspas. He has to fill those shoes. But no, he's talking about how they've reinvented the team. What is the weirdest thing you've seen a player do on land? With, and there's parity there between them and Paper X. Paper X Ritual have to do the ho, exact setup same ho. thing, missing Jing, one of their best players. But I feel like Monya is filling in Weirdest Jing's कुछ नहीं है. shoes मतलब a little more. I They can haven't say adjusted that style. हमारा That's मतलब मैं probably एक one चीज of तो the things TOS है तो मैं बोल नहीं had the सकता. confidence knocked for But Paper X is that they haven't really figured out Weirdest what मतलब team something that stands out for you. मतलब फॉर एग्जांपल आई हैड अ सुपरस्टिशन तो मैं हमेशा मैच चालू होने के पहले टॉस वॉस होने के बाद सेटअप करने के बाद बाथरूम जाता था. That's actually very smart, भाई. Playing well individually so far. Get right की तरफ जाना पड़ेगा भाई. Pause लेके. Cloud's composition is devastatingly effective when it comes to site executes. So I'd expect Paper X to be doing their classic style of trying Casual to knife disrupt before you allow your Casual opponents to get into an exec. नजदीक check कर Delayed लेता. knife. Monyet was tagged, but he did not care. Still holds his ground. Interesting that Paper X have gone for a defensive wall that allows them to, you know, contest mid as well. So they're not worried about Loud's wall. Giving up that presence. Loud now opting to just contact in through A. And it's an open site, it's a free site. It seems to be a bit of a read. Look at them, they're just fast on the approach. Maybe just hearing those sound cues out towards tree, but they've closed the door in their faces. A bit of stray damage. Sadak is going to be safe though. Safe and sound, able to get that plant down. They need reinforcements quickly. Their Paper X are apt to flood defend. Kawan Noless is still really I love far 𝘼𝘽𝐿𝐻, man. Pause in the play, a bit of a break in the timing. It has taken Monyet still with that nade now. Does he choose to use it? Fragment. कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है. कोई फ्लैंक नहीं Here it आ रहा. sends it. Paranoia go flying along with the Dizzy. Swarming into सब लोग the hell में side. अटके हुए हैं. 3 plays into hell. And even to अटके clear हुए this पर one, plant just भी jump hell का in. ही है ना. It's a beautiful smoke. Tears is using it to just divide up this site as well, and it's making it more than difficult. Damn difficult. Have on the fuse. Might make a difference. Paper X mind free. Going forwards, right. Oh my God. An absolute differential. Something running. क्या हो गया माइंड फ्रीक भाई? क्या हो गया? कल बोल रहे थे. Absolute गुंडा. Plenty of time. Wow. Beautiful, flawless with the execution of that Full one. गुंडागर्दी कर दिया रे बाबा उधर. I don't know how he's managed to pull that one घोष से out. मारो ना. 3 players in hell with the अंदर smoke set right up. click कर दिया अंदर The जाके. spike is planted for them. Are you sure? Very clear game plan. मेरे हिसाब से घोष से मारो. Yeah, of course it is. Look at that thing. It Classic shoots है different. Sale numbers up. बाद में उठाया Get the chart out, Leo. Get the chart out. Why is there a dinosaur? Don't know. Don't खेल care. जा रहे हो. Go, go. जीता नहीं है अभी तक. Yeah, इसे हाथ that's इतना a क्यों nasty कांपता है round लेकिन from Mindfreak. something का. बहुत हाथ ये कांपता There's है. more to it, really, isn't बहुत there? ज़्यादा Game Red Bull plan. और caffeine It got की तो. dismantled by some right clicks from the एम classic. कैसे करता है? Sometimes it be like that. उसके सेंस पे वही चलता है ब्रो. So again, भाई पॉइंट Paper सेंस X पे being खेलते able to कैसे win the pistol भाई? round. मैं तो शक्तिमान बन जाऊँ. And ऊपर क्या देख रहे हैं? Tess was talking about, Kakuka was saying that they didn't really get much else. प्रार्थना कर रहा होगा ब्रो. नाइफ या कोई चीज का आने का वेट कर रहा होगा. ऊपर ही मार देगा क्या उसको? Sadak is सीधा. going to be receiving it though. But या तो गेको फ्लैश का वेट कर रहा होगा फेड रिकॉन का. Xena 2 is grouped पता up side नहीं by कुछ side. तो कर रहा होगा बेचारा. They can pivot this quickly into a B split though. Push. Push. Contacting, punish for that. Oh my God. Push. Could try and pivot. हाई but सेंस not पे now. जज कुछ भी चलती है. आगा माइंड फ्रीक आगा. माइंड फ्रीक भाई आगा. Something with this judge. मैंफ्रिक क्या बोला? मेरा काम हो गया है. ठीक है. क्या बोला? Now wants to take the long range हाई fight. सेंस Go to पे places जज up अच्छी into the चलती है. corner. चलो भाई पॉइंट सेवन Cleared करते भाई. out. Last one to Nice stand one, here. the So, Y. important beginning really for Paper X. I mean, Ooh. again, we talk about these comps. We expect them to be attack-sided. Big execute, generating these ults. It's a clear Something game plan giving for both shots these to faces. teams. Paper X winning this pistol. CSK won by 𝘼𝐽𝐿𝐻𝐿. You know, relatively cleanly. I mean, the economy is flourishing after this. डूबे भाई Coming to this शिवम bonus डूबे. looking nice भाई and उसने strong. सेकंड लास्ट रोल पे Just चक्का to मारे. talk about how Loud got anti-stratted so heavily during kickoff by EG. Part of that was a cipher, which doesn't exist for Paper X. Part of it was a double Odin buy, which we might see later on in the half, so keep your eyes open for that. And the other part was playing disruptively before Loud could get into execs. I think this is a perfect round to go for that more aggressive, disruptive defense.
asking he wants to come on YouTube. isn't it? It's a lot क्या of rotation है PRX It's का? to make you feel like they're fighting over मतलब A. ऐसा gamble rotation. Gamble play है पूरा. A reposition. सबके सब भाग गए. कुछ ज्यादा नहीं. और अब recon क्या fade का? आप बोलेंगे इधर तो नहीं है. चलो guys वापस ये. आ जाओ guys एक और simulator, retake simulator है. एक बंदा जो है उसके बुंड पे डाला नेट सीधा. 4 बंदे नहीं एक ही बंदा है उसके बुंड के अंदर डाला सीधा. वो रेड नहीं करता मर जाता, वो स्पैम मारने के लिए रेडी था. वो जैसे ही स्विच बंद करने जाता बुम बुम बुम. तकलीफ है ये पोजीशन. क्या कर रहे हैं वो? PaperX did use a lot of that util just in the beginning of that round, so I don't know how much they've got now for this retake attempt. इनका लगता है retake. It's not too ideal, but Dizzy does the ओ work. भाई कुछ गए इस पे तो ओ out there. Forsaken is just in their faces now, still trying to double up. High sense खेलना चाहिए. Judges just pushing them back as दो well. जज है. ओ क्या चल रहा है? ये देखो भाई. And still now to sticking on, broken. अरे 2is बहुत अच्छा है भाई. ओ वेट विंगमैन वाइपर मोली. अरे इसको मारता जीतता था. विंगमैन वाइपर. अभी तक तो वो देख चुके होंगे इनका, अगर जिनको नहीं भी पता होगा. भाई क्या राउंड निकाला, लेकिन भाई वो अंदर जो घुसे ना दोनों शॉटगन लेके. अरे इनका ये रिहर्स है, ये छोटा वाला शेल के सामने स्मोक करके कूदना. देखो ना पिस्टल राउंड में भी सेम रीटेक किया था 3-2 वाला. अब अगली बार से ये लोग क्या करेंगे, लाउड वाले ये हेवन कंट्रोल ही रख देंगे, देंगे ही नहीं है कंट्रोल. इस बार भी ट्राई किया था इन्होंने. या तो ऑरेंज बॉक्स प्लांट करके शॉट कंट्रोल रोक लेंगे. जाओ फिर लो हेल्थ करेंगे. That's because Loud, they're waiting for these right timings, and they think that they're ready for it. I mean, they're holding that with a lot of players. But something just too quick with it, man. Too quick with it. 8 rebounds close to the corner. That's Munya hoping to catch a player that might have just repositioned there. What I love about something is he's so good with Gecko's mobility utility, the legs. Mute hai kya? Oh no. Yeah, I love the way he presses 3 on the keyboard. Pulls out the knife just to run away. He does it better than anybody. Divide does not have a paranoia to play off here. He's got to rely on the Thrash. Yeah, he's using the Thrash to try to set this up here. Good return on the fire there from Sadak. Gets the trade off, at least attainment into the corner, so it slowed them down once more. But समझा नहीं कि वो सही खेला कि गलत खेला. सही खेला, but Loud. Yeah, they've stacked everything in a fight over towards A main. They're losing it, and now PaperX have 3 players ready to collect. Deep orb. Placed by less. Trying to use this to try and get themselves into position. That spam, the spray, a few stray bullets, TP forwards into the mix of things. But listen, Munya, inside the smoke, Loud! Paving the way forwards here. It's brute force, it seems to be the name of the game, but only one player will stand. Sanak, the IGL, does not stand the chance there. Collected onto the position. And this is a very classic round by Loud. They realize that their composition he was banking on the fact कि लोग थ्रैश के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो मार देंगे. At the start of these rounds with 4 or 5 सही किया, but know that they're going ahead. दो को मारना था, एक को समझा नहीं कि बराबर था कि नहीं था भाई. नहीं सही किया उसने, but उस लेवल पे क्या है ना, दो को मारना है वहाँ पे. Before they can even start to take A main control, something's already run out. कल वही दिक्कत है. At the very beginning of the वो round. लोग यही सोच रहे थे कि उधर का कंट्रोल मिल जाएगा, फिर वो थ्रैश रिकवर भी हो सकता है. In case करना रहा. एमेन का स्मोक करके वापस से. Against Gen G in the regional finals, and Gen G absolutely counter-stratted the ever-loving sugar out. Bro, मेरे को मैं माइंड से को दिखता नहीं. Looks like a gangster to me. Because the comps operate in very similar manners. They were disrupting that tempo. Yeah. And I think Loud's comp does struggle the more you force it to split through mid and try to take map control, these kind of things. It doesn't have, for example, a Fade or a Sova to be able to use drone utility or a recon to clear out close corners. It's much better at being able to get these big retakes, big XX going. Loud are skilled enough, talented enough to adjust the game plan on the fly, but they're always going to be limited by what the comp is good at versus what it's not good at. I think PaperX got a nice read here. Alex, why full tension? It's also great to see something. Hidden shots, feeling Alex भाई को पता है ना घर जा सकते हैं. I feel like घर गए तो जॉब को खतरा भी हो सकता है. Awesome game against Cayman Corp. He hasn't quite been at the top level that I expect from him. He's a very confidence-driven player, I think, as well. I mean, if you take a gander at any of the PaperX vlogs as well, you see it. You know, he can. And that plays by PRX. Actually, has to be picked up on a frequent basis. You know, confidence around him, being the support staff and the players.
They were looking clueless ekdam. But when he has good games, you know, this guy is just unleashed. Yeah, he's phenomenal. Well, they know where he's positioned at the moment, and that's where you should expect the op to play. Many flashes to try to push him off the line. So to try and defend the line as well. Bit of Odin spam and spray through. Jumping spot, you do not survive that apparently. It's a nice attempt and a nice clearance, but still as they're trying to swarm the position. Something by something हो रहा है. Artillery. Something by तो भाई chaplings कर रहे chaplings. 1 HP man, 1 HP. अरे क्या? Maybe more than a dream. He's managed to bring this to a 2v2. Doesn't have the spike, but that was dropped down a little bit earlier. Look how bold Forsaken is. He just jumped up on the पूरा control आ गया. अगर right click पड़ा ना इसको इधर. बस HP नहीं है. He's seen it! Just altered up there and he just sees him crouched. That's unreal! Near an elbow, I'm not too sure, but it just pokes out here. Monye to bind में खेल रहा है. How on earth have my team lost this? What's going on? There's no shot. I mean, less. Of course, being a difference maker. Now they don't know. It's like मेरा Premier का team ये round खेला. And Paper X are the kind of team to over-rotate a little on defense, so they assume that he's close. 30 seconds left. पता नहीं है कि वो कहाँ है हमारा public. Because if they were just on B, surely they would have got the plant down. Incredibly winnable. अन्ना आपका आवाज lag. How low these two players are from one lag कर रहा है क्या? Exactly. या तो mute हो जा रहा होगा बार-बार आवाज बोलते-बोलते. अभी सही आएगा रुको. हाँ अभी सही है. A lot to clear here, but maybe gifted yet. Bit of that information. Pulls out the rifle, expecting the re-swing. Both the players are towards the back of the site now. A smoke. Drop down, classic out. Thinks twice. पता तो होना चाहिए वो red है दोनों. Forwards. That's gonna have to be broken. Nade rebounds out wide, and now he's just firing. Here's the rocket. Talked about it earlier. Pre-fires in the corner, but he guesses incorrectly, and now he's left wondering which way is 2 is. How did he reposition? Time. जिता दिया भाई, जिता दिया loud. Getting away from him. He thinks he's behind the boxes. टीम ने गलत मार किया. टीम ने गलत किया उसको. Wrong info है वो. Giving that he is second बंदा भी close है बोल के. I'm really unsure how it even Brother, what are you doing? लिख रहे सब but chat you just see the mind games between both of हाँ, those players. The less information मैं that was तो clutch कर available, लेता the more it favored इतना तो less alt नहीं है 2Es. 2v4 हारे गए लोग. 2v4 हारे. Walking through B main. And this one. भाई Alex POV दिखाओ रे बाबा पहले. Who ults into that spot? Unheard of. Short रे. Bye. Truly unheard of. Bye bye बोल रहा है. God, that's a face. Just blinked. ये थ्रोता है. पक्का थ्रोता It's है. a scary face, isn't it? He's normally a little more animated than कुछ भी that. बोलो. Be practicing stoicism or mewing. Not too sure. Yeah. ये देख के मेरे को जी का Inspired by Marcus Aurelius. याद आ रहा है ब्रीच से वो लोग जैसे फ्लैश करके एम इन कंट्रोल लेते थे धीरे-धीरे. Very similar, actually. Very similar. No, even now, Dawai can do a little forward smoke and take that aim in control. हाँ, retake, मतलब re-aggress करके लेना ही चाहिए वापस. Because now they are only smoking वो one way कर रहा है वो लोग. Instead of doing that, they could have done smoke little further and take that aim in space. वो contest कर सकते हैं ना वो चीज़. हाँ, और अब info भी नहीं है ना, देखो ना पूरा exactly. खत्म. इस समय re-aggress करना चाहिए, but they are too scared. थोड़ा बहुत यार passive हो गया. being too scared. तो paper एक being too scared. Yeah, exactly. बहुत passive है. Just might be curtain. Run it back facing him. वो स्पॉट भी हो गया उधर साइड के बगल में है स्टेयर. अभी देखो हाँ पता चल गया स्टेयर से अब तो क्या है. एक को मार के आ सकता था चलेगा. Going even here, 4 versus 4, but he has more time for the fast rotate. अपना meticulously clear कर रहे हैं every angle. Even if Loud are able to get this, Paper X can make it extremely Sen वाली गलती नहीं करेंगे ना. Just by holding B main and the defense spawn. Being cleared out now. Smoke propped up. Pre-firing up to the sky. Expecting Dizzy. Though, now defaulting over towards the foul line, using that util to try and delay, but you are right, this could get pricey. I think बाकी टीम को देखती ही नहीं है ऐसा लगता है. Broken. Back of the site में bleed भी one way smokes करती है दोनों एरिया का, जिससे पूरा टाइम दिखता है और उनको कुछ नहीं दिखता. ये लोग अभी भी पूरा full body smokes करते हैं. Retake के वक्त back side. And Loud keep enough players alive that they do still have that cushion to work with. 2Es can drop Sadak and they've got a good buy going with some still going A again. Let's see what Loud PRX will do now. It's Loud's ults
that now become an issue for PaperX. The more you let them get set up to go change kar diya, Rolling Thunder, the more difficult it's going to be. I'm looking at the minimap and PaperX look poised to go for some serious A-main aggression. That puts the pressure on Mindfreak, doesn't it? Yeah, because as soon as Sadak calls that, they're going to be running into the pit, I would imagine. Same ult. Drop down, knife, spam into the corner. Mindfreak already dropped him 250. Never mind, he's dead. He's gone. Less is like, बेटा मुझे पता तुम कहाँ बैठे हो. अरे वो बोट हाउस उसके बाजू बगल में बैठ सकता है ना, इधर ही चिपके के क्यों बैठा है? स्विच के पास बैठ सकता है ना वो. अल्ट के बाद चलेगा. अल्ट के बाद स्विच के बाजू बैठ सकता है ना. And allow PaperX to spread out a little bit around the map, or even force them into making a play that they can punish. Well played by Loud. Well played by Loud, 100%. बहुत ज़्यादा डरा हुआ खेल रही है. Molly sent flying into the smokes available here, ready with the spam. Damage being done. Sadak barely alive, but does return the fire. Forsaken still. Tucked into the side. Yeah, but clear potentially, but faced by too many. Tigers in opposition this time, storming into the site. It's going to be gain for them with that territory. Loud now. They definitely don't know Monet is out. Two players left alive here. Munyet though has got us back to the available players. Oh my God, he expected. Really quite excellent, peeking through it. So now ऐसे क्लियर करने गया होगा. Okay, लग रहा है लॉर्ड जाएगा guys. ना तो PRX is completely off. How it works. Timing off है उन लोगों का positioning off है. Trying to disrupt it. If that had been allowed, taking a main control at the start of the round instead of B main control, then they would have had an enormous clash in Gelato. Yeah. And who knows who would have come out on top. एक कुछ मतलब मैं भी kind of gambled incorrectly. They were going for the hard read. Loud do tend to favor Odin उन्होंने यही राउंड में खरीदा था ना. With the way that they call their attack sides. And it just happened to be the wrong one. They were hoping that Mindfreak could hold stuff down on the B side of the map. What was going to happen, dude. Les has got the read. नहीं but Loud Odin खरीदती है. आज बनना है क्या देखने का. अरे जो टीम सपोर्ट कर रहा हूँ हार रहे हैं. Both these teams struggled a little bit to be able to impose their will on the defense side. But what we saw from Loud. अन्ना important question. Loud का जर्सी है क्या? To be able to catch PaperX. Loud का जर्सी नहीं है. नहीं तो अभी Loud का जर्सी पहन लेते. अगर PaperX जीत रही होती तो समझ में आ जाता कि सही बात. For a lot of early round aggression instead of mid round aggression. And I think that timing difference is ended up being. बड़ी वो जल्दी ला सकते नहीं यार. भाई ये हार्ड बनाना तो मुझे आता है. Read when it's just straight off the rip. Yeah, it is. I main so. And Sova main in Lotus. Wow. I mean, honestly, there's worse things to play. There are worse things to play. Yeah. I've seen it firsthand. Like League of Legends. जैसे हटाओ गेम बचाओ. Fight भाई fight रे बाबा fight. Not me. I can hear cackling from the desk, man. All right, elimination game. PaperX are in a tough position here. They really are. It's about to spiral out. अगला इवेंट में नहीं दिखे करे बाबा. Forsaken's not really found opportunities to have his will imposed finally upon some the aggression. And he snuck up to try to लोग take expect भी नहीं कर रहे होंगे. and he gets out. Finally. Free man. He's the player that's been the difference maker this tournament. Punished the jump spot. So punished for that. Two players waiting for him to just make that kind of mistake with the paranoia flash over the top. There was a bit of a team blind, but side control for them. And now fighting towards Market. Something dropped dead. Nice job. Difficult spot the PaperX are being put into here is that the fact that Loud are just getting into these sites. Obviously, it's against the half by PaperX, but they're not having to use ultimates doing it. They can save them now for when PaperX have a bit of a buy round and money's back into an orderly and sensible fashion. Why peak, buddy? Again, the silver lining would be to apply enough pressure that the ults do get invested. By Bago, chappal khao. It just doesn't seem likely though. PaperX सामने थूक दिया भाई, spit exchange. Game plan has broadly been. We'll see. No, there's no danger here. PaperX's game plan has broadly been क्या spacing है भाई? Stack one of the sites and just kind of hope that Louder go in there. वेंका भाई सच बोलो हमारा अभी जो आइस बॉक्स में मैच हुआ था उसमें स्पेसिंग बेटर नहीं था. If you gamble incorrectly, Louder just got into a post-plan situation. I think हमारा 5 stack और इनके गेम को compare नहीं करे तो better है. They're playing it just still anchor with like one player, for example. Venka in short bola, Venka in short Mamba is telling you kal aana. They're on the eco. Basically बोल भाई चट्टी. But if you're gonna stack one side of the map super heavy, you're kind of forced to play full retake on the other and just rely on your double initiator. ये हंस क्यों रहा है हारने के बाद? Something's enjoying himself out there. This is the round where पता है ना आखिरी टूर्नामेंट है. एलिस गांड मारने वाला बाद में. If they have any chance. चढ़ा मैंने देखा नहीं यार मैं उल्टा था.
थोड़ा सा रिवाइंड कर, 10 सेकंड रिवाइंड कर, पागल की तरह हंस रही है। देखा भाई, कोकेन वोकेन करेगा इसने क्या है ये? What is that? I do not know what that is. Rebounds, will clear out flavor. a few of these players to his timely there. New flavor. Happy flower, happy flower. But Loud are going for a lot of re-clears, right? We haven't seen them go for big rotates around the map. Paper X will be यार सेन ने साइड कर दिया पेपर एक्स। Here it is rolling front. That will be a did dodge it, but there's a one-way smoke into his face. Nice Monet। Deal with that run it कैसे मार दिया? मोनेट सिर को चला रहा है राउंड के बीच में। this timing out and साचल through. मारा Yes, ना Paper X उसने? players still holding their ground, basically rooted in place. मेरे को लगा साचल मारा। And Les is now going to offload the pit to try and get them through. This is a call. ये क्या ult है? This is an amazing ult if you're planning to rotate. अच्छा ult है ये, maybe info split or go over to B. It's पॉप not फ्लैश का the डर best रहता है। inside, but it यहाँ gives से the burst कर players सकता है, on यहाँ से शॉट burst 2 ही जा रहे हैं अभी। बट अभी इनको पता है 2 ही लोग हैं मैंने। थोड़ा एफ हो Prowler गया। sent straight through tree, wondering if that split's coming पर through. इनको लगेगा कि बाकी लोग भी जा रहे हैं। हाँ ये लोग ये Wait स्प्लिट this कर रहे, one स्मार्ट out, है, but काफी स्मार्ट है ब्रो। Direction they're going to take it towards. A seems like a likely contender. They've smoked तीन for a है big अभी split भी। though, so Forsaken's worried. हाँ बट बर्स्ट Watch appeal of ये South वाइपर Point. एल का बस एक चीज अच्छा है कि ये लोग कोई भी एंगल को आइसोलेट कर सकते हैं बर्स्ट करके। Paranoia settling in. Divide. नाइस दवाई। Inside the smoke wants to rule that position and take अंदर से जा रहे things हैं। away from them. What up? Big balls. Never mind. Yeah, mind freak. Still, ये मार दिया mind freak some of ने। the bodies toppling down. Time working against them नहीं, now. नहीं, The top नहीं, are running big around. It's a little क्या risky, but I like it. Oh my God. पेपर एक्स कुछ भी करती है, मैं बोल रहा हूँ गॉड्स भी रैंक की तरह खेलते हैं। हाँ भाई But no, क्या? I as stupid as it looked, I like it. Big balls, big balls. इक्का we need a Sings Loud का जैसे चाहिए। मैं क्या करूँ रे? ये की है? जो माइंड फ्रीक ने मारा, मेरे को लगा मोनेट ने मारा उसको। नहीं नहीं माइंड फ्रीक ने मारा ऊपर से। बट भाई क्या है ये भाई? Paper X had stacked so heavily on that area. एलेक्स की ए राउंड में भी गलती है, अल्ट बोला ना इसने। Yeah, that one moment. बोल रहा हम जीत गए, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा, हम जीत गए। मैं तो गाली देने के लिए तैयार था ब्रो। He's actually ready to counter ये अच्छा प्ले है पर बी में अभी थोड़ा रख के खेल रहे हैं। पर मुझे ये समथिंग मरने वाले थे। नो एज वेल भाई, समथिंग प्लीज, समथिंग प्लीज। नाइस, गुड रिकॉन भाई। पर इसका मतलब उनका रिएक्शन थोड़ा फास्ट होना चाहिए अभी लाउड का। एलेक्स अम्मा बहन पे आने वाले हैं। हाँ ये ऑल्सो नो देखो ना, ये भी आ गया मार्केट आ गया। हाँ देखना, हाँ हो गया बस। गोली मत चला, सामने करेगा तो मरेगा भाई। शॉट सेकंड भाई, ग्रेट प्ले फॉर सेकंड। हाँ 4 सेकंड भाई समथिंग शॉट है समथिंग भाई। लेट्स गो, we're back boys। शॉट है माइंड फ्रीक भाई। मतलब इंडिविजुअल Awesome. Everybody played individually good. As a team very bad. This is really turned the tables. नहीं एक्चुअली टीम भी अच्छा था ये। Accurate representation of क्या Paper X. 4 सेकंड का एक बंदा उधर है, एक बंदा इधर है। ये देखो रे बाबा। 4 सेकंड का अच्छा था रिएक्शन, दैट वाज द टीम रिएक्शन। उसके अलावा मिड टू बी मार्केट आने का, बी में छोड़ के हाँ बॉल अप बॉल डाउन अच्छा था। Yeah, looking lovely. Paper X don't try to contest super early. Got like a slightly delayed off peek into B main, which is a nice timing to go for that. And they just catch this अब time. भाई जो भी इतना लोग बोलते हैं ना, अरे तुम लोग को नहीं पता हर एक चीज का लॉजिक होता है, ये वो मैं मानता हूँ भाई, तुम लोग सपोर्ट करते हो पीआरएक्स को, बट मान लो कि कई ये लोग जो चीजें करते हैं उसमें से 80% का लॉजिक। इस राउंड का कोई लॉजिक नहीं है। इस राउंड का कोई लॉजिक नहीं है, इसके लिए कोई सेटअप वेटअप कुछ नहीं प्रिपेयर कर सकते। इंडिविजुअली दे जस्ट went, understood the timing and played, got it. गांड ले ली भाई, लेस की गांड ले ली। It's actually one of the first times we've seen Les try to solo take this लेस area. तो पूरा लेस से एचपी हो गया। फिर से ट्राई करने की कोशिश, बट नहीं करेंगे बिकॉज़ अभी नहीं जाएगा, उसमें उतना अक्ल तो है कि वो नहीं उसको सेकंड टाइम विल नॉट गो टू बी फेक कर रहा है बस, बिकॉज़ वो 2 बार ही पिक निकाल चुका ऑलरेडी। ये लोग रेडी है इसके लिए, ये लोग रेडी है इसके लिए। दवाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, turns away और just at the एक्सपेक्ट right करके time. कुछ नहीं हो सकता। नहीं करेगा वो टीवी मारेगा, मेरे को फीलिंग आ रही है। Now there is no contact for this kind of और play. वो So जैसा he's backed away from the site, gives up control of tree. With all of this noise, something's getting on a more aggressive line. So Nice Molly, back into a B split. It's going to nice be flash. Clear, just can't quite land the bullets. No way, this is overzealous potentially. Perhaps, maybe over aggressive, but they're not expecting it still. एक और है भाई, Space right back away from them. Sack. अंडरआर्म फ्लैश, गुड फ्लैश। अभी भी बैठा है भाई। There's no follow भाई up. अच्छा एंगल, लेकिन बहुत इंसेन एंगल है। It's a nice Oh one. my God, beautiful भाई। ये वो टाइम है, देखो भाई कैसे अवॉइड करते फ्लैश वो टाइम है जब मैंने बोल दिया एलेक्स भाई आप चप जाओ,
हम थोड़ा करते हैं कुछ। हम लोग थोड़ा रैंक जैसा खेलते हैं अभी। अन्ना हाई सेंस पे होता नहीं है ना, वरना तो खेल लेते। दवाई का भी लो सेंस है भाई, कैसे लो सेंस डॉज करा उसने, देखा नहीं? लो सेंस थोड़ी होती। ये हमारे जान पहचान के किसी बंदे का वो रिप्ले में देखा क्या, वो लोग थोड़ा हल्का सा लेफ्ट करके आंख क्लोज किया है, जब फ्लैश आता है तो डॉज हो गया। So you have to close eyes guys 1 second before to dodge. Now we know I was loving. मर गया, लेस का लेस हो गया, इसका एक और है। Oh let's go boys. My PRX is the main character. They just pull something out their Guys, blood pressure. मैं सच बताऊं, क्या सब अच्छा सब अच्छा। I can tell the exact same line, and this time let's go. एक और मिला। Something's Let's go. दस भी डाल सकते हैं क्या? वहाँ पे छेद है? Little to no chance for Loud now. It is 1-1. दीवार में बॉक्का है guys। Sealed up nice. दीवार में भी डाल सकते हैं। For Paper X, all the right adjustments at all the right time. ये मैच देख के मैं तो भाई मॉइस्ट हो रहा हूँ एकदम। Running out for Loud as well with his Hello? composition. They are Something is making me feel things I didn't know I was capable of feeling, भाई। Wingman. Totally right, the best liability to have on the team. Quite connect. 𝘼𝐻𝐿𝐒 seeking to try and pivot, but he can't break the door in time. Has to reload too on top of this. And already something is there. They are definitely the main character. Inside the shot at least. Imagine being Loud right now. In the corner, but it matters not. They played absolutely well. हर जगह डबल स्कोप ही कर रहा होता है। इतना broken feel कर रहे होंगे वो खुद से कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद पे बॉल डाला है उसने। अगर ये राउंड हारते ना भाई, नहीं हार सकते। अरे ये बकचोदी की वजह से, अरे नहीं हार सकते। पेपर एक्स, गुड बॉयज, गुड राउंड क्यूटीज, लव इट। हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे भाई, तुम लोग गाइस मैं पटाख से वॉशरूम जाके आया, थोड़ा खाना लेके आया, ठीक है? मैं भी पटाख से वॉशरूम जाके आया बिना खाने का। Going instead for more of a play through क्या mid, अलग trying to get value out of the Viper wall and connecting so often with Insane भाई, but I'm happy भाई, जीतो भाई, जैसे जीता है जीतो बस। And the off. Absolute insanity, and guess what? We've got plenty more action left to come. Sunset. Definitely the main character. That is going to be a fantastic one. Two teams that are potentially evenly matched. It doesn't stop anywhere near here. देखो मैं हल्का सा हेटर तो हूँ उनके गेम प्ले का, सच बता रहा हूँ। I don't like the way they play. Excuse me, but would you mind taking a picture of us? Oh, no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. They are winning, Check them out, brother. and You get a can't new say iPhone no to 15 Pro results. with Like, tons of storage, so you you can't can deny take all the results. pics. So many selfies. A preposterous amount of panos! That means Right. panoramic. And as many portraits of me as your heart Nick का bro desires. बोल रहे हैं insane watching them play, might become a player again, need to work on my iPhone classic in any now. condition and get iPhone Yeah. 15 Pro and iPad and Apple Watch SE all on us. क्या Only है on bro? Verizon. Time है भाई। कौन जीत सकता है? जेंजी वर्सेस PRX, जेंजी डेफिनेटली। यार PRX ऐसा खेलेगी तो पता नहीं क्या होगा। Yeah, if it works, it works. I'm not denying results. Red Bull gives you Insane. चलो अन्ना, आपका वो चीज तो थ्योरी रॉन्ग हो गया जो लोग बोल रहे थे। Exactly. आप जो पहनते हो तो वो हार रहे हैं। Not the jersey guys. Jersey is buff only. हाँ। Might just get to see Sentinels versus PRX if PRX ऐसे ही खेली तो। Oh my. Loud का पिक था इसका? I think ये Loud का ही पिक था because Loud को Ascent, हाँ Loud का पिक है Ascent, PRX Sunset। Sunset में PRX का डॉन्ट, मैं ये पूरा वीटो ही शुरुआत में ही हमने बात की ना कि PRX के तरफ है ये वीटो। Ascent, Sunset, बाइंड 3 ऑफ द मोस्ट पगिश मैप्स अभी के मेटा में अगर बोला जाए तो। सनसेट में PRX जैसा खेलती है ब्रदर सेज को लेके।
बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूट हेवी खेलती है। और क्या guys, what else is happening? क्यूटीज किधर है आज? क्यूटीज आएंगे, अभी आएंगे। अन्ना बाउनरा, all good मेघना, मेगा शाम, all good. I'm hungry, but here in my city everything is closed. What city? Which city? Sorry. Hey guys, Mika here, and I'm with Alex of 𝘼𝐼𝐍𝐿𝐒. That was a really close map. I want to know what was the most difficult part about the prep for this match, especially since it's such a high-pressure match, and you're up against a team that you really only get to play against. Something laugh after losing the round, cut to comeback confidence तो है. We don't even know what they're gonna pick on the map. So they can play almost all 7 maps. Probably can. We just have to focus on ourselves this game. I think we haven't had the best run. So we really just want to get this, get ourselves like quite more aligned, if anything. Okay, keeping it humble, but that had us on the edge of our seats. So let's jump into the game for more. 𝘼𝐼𝐍𝐿𝐒 proving that you cannot judge a book by its cover. You think when they're out of this one, when they don't. Kakuka is back, guys. The magic yet again, and they're up 1-0, Mimi, in this elimination game against a Loud team that I don't think a lot of people were giving 𝘼𝐼𝐍𝐿𝐒 the time of day against. The thing is, even if you judge them by their contents, the context, it's changed a lot throughout this tournament. I think this team came in not looking in their best form, but they just displayed an incredible map against Loud here. Their executes were looking clean on the attacking side. Something's Up was dominating on the defense. It was clear that with time, this team is really starting to figure themselves out. Yeah, exactly. And on the side of Loud, even though they have a lot of experience with this composition, we still see some mistakes, like dry picking when you have a composition that has Phoenix, KO, and Breach. Cowan seen from the defense don't find in a moment to even use his ultimate until like the penultimate round, and holding them and actually not using the composition to the full of its ability. Yeah, I mean, a lot of people watching this team. గేమర్స్ గల్కి వెళ్ళట్లేదా? లేదు బ్రో, చాలా దూరం కదా. ఇంట్లో కూర్చొని హ్యాపీ ఆడుకోవచ్చు కదా, అక్కడ వరకు కూడా. For the squad is looking on point. Yeah, I think that overall, the way that they were working the map, sometimes at a certain point in their attack, it looked a bit of an over. Can someone start FMCG brand 2024 through white labeling from any firm that export the product to other countries? Can this produce profit? It will, but depends on how much overheads you have. Will you be able to cover in the low margins that you make? Won't be that effective. In this day and age, लक्ष्य सारे को पता है ना कहाँ क्या मिलता है. So अनुज भाई मे भी म्यूट में एक बार पूछो. I think he slept रे. Hey, but I don't think Anuj is talking. I've been a big hater of the Gecko Up in the past,
But I think the way that they played it, in particular on this defensive side, was really good. Loud as a comp that relies on getting extremity control for the double. Bings को बुलाओ नहीं बुलाऊंगा. Something is really good at finding timings around flashes, taking that split-second moment and getting a kill on an extremity. That was utterly shutting down Loud's execute in the first part of their attacking side. I got a stat from Space, shout out from him. Something took 33% of first engagements and won 88% of them. That is crazy. Coming in from a get-go. And by the way, you know, now that we're going into Sunset, this is not the composition that is played without a duelist, okay? This is his get-go when there is a duelist also in the composition. Definitely, this is one of the other things that throws everybody so off of a PaperX. It's not that their duelist is going to be in your face, which he is going to be probably on your back because of that movement. It's also that you have to deal with something on the other end. I also really want to credit Coach Alex and whoever the 𝘼𝐽𝐿𝐻𝐿𝐒 was for this team today, because they really varied up. Thank you. It's a very small word, actually. I'm not a smart guy. Actually. But they really varied up how they were going for that aggression. Early on, they were going for those extremity fights I was talking about. Then Loud figured it out. They varied it up and went for mid-round aggression instead. And then towards the end... Can this be cracked if we do something in the supply chain? Try karo. It is something. Everything has to be studied, explored. It's a straightforward yes or no wala answer. Won't be there. Well, I think also too when you pair in with the fact that, you know, these teams have played this map where we've seen both teams, you know, go at this. But here's the funny thing. I was looking at the sets. PaperX, a lot more success here, right, in this competition. They've played it a few more times. They've thrown some unique ideas. They've beaten the likes of Heretics and EDG. They beat Gen.G in the Pacific Kickoff. This is doable for PaperX at a 2-0. Yeah, I really like the way, especially these two teams' comps are going to be. Wapas Phoenix. It's a similar win condition. Phoenix is back. Yes. Sunset है ना? Yes. ये कॉम्प अच्छा है लाउड का. But I feel like PaperX जैसी टीम को रोकने के लिए साइफर या कोई एक सेंटिनल तो चाहिए ही. सेंटिनल चाहिए रे. इतना हेवी अटैक W टीम को एक चाहिए. वही. At least it will give a small doubt in their mind कि यहाँ घुसो कि नहीं. हाँ मतलब जो लोग डिफॉल्ट खेलते हैं उनके अगेंस्ट चलेगा ये सब कॉम्प. बट एग्जीक्यूट हैवी जितना खेलते हैं PaperX नहीं चलेगा इनके. और सनसेट तो इनका पूरा ही एग्जीक्यूट हैवी. इनका बी रश पूरा रिहर्स्ड है. ये सेज वॉल करके जैसे घुसते हैं. या सेज वॉल का भी 2-3 तरीका है वहाँ पे. हाँ. बी स्प्लिट में भी सेज वॉल जैसे यूज करते हैं ये लोग. मतलब बहुत सेट तरीका है. बहुत इनोवेटिव है रे. थोड़ा गैप्स भी छोड़ते हैं कभी-कभी ऑफ एंगल्स के लिए. पर ना वही है, सेज का वॉल ना एक गिमिक है. मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन है. तो उसको बहुत इजीली रोका जा सकता है. थोड़ा माउथ पे खेलो, ये सब खेलो तो आगे खेलना पड़ेगा. हाँ. I love the way the PaperX approached this. We're going to see him immediately take some mid-control. The clashing tiles. Yeah, they're just trying to fight them. They're watching for it. 𝑘𝐈𝐍𝐿𝐒. First round is done, guys. Second round चालू करो. A ridiculous beginning here. I can expect Mindfreak, who's worked his way in. He's thinking twice about it now. Backs himself into market. What a beginning. I mean, the smoke deep down, not expecting that tiles aggression there. That just comes down to a game of chance. Yeah. PaperX is so happy to opt into. Please do watch party with Pinks. नहीं करना है मेरे को. That is ever present. प्रॉब्लम है आप लोगों को. And hope that it works out in their favor. The smoke there to try to block off certain sight lines coming from bottom mid. But as you say, they just had no idea that Loud were going to run a pistol, which also involved them charging towards mid through tiles. They want to take the fight straight to him, try and earn a few more of these ults, less onto the corner. It's a good idea for 𝘼𝐶K to try to push through that, see if he can find the kill. Yeah. It's going to be his ult that they try to build up early, but that's not exactly the way the cookie crumbled to open things up. It's actually very close. Two really kills and a death, plus the ult. We'll see how that opens up. I mean, yeah, they're just using that deep smoke to hide from the potential deep dart that gets used. Loud just above the sign of market. Yeah.
It's a specific counter-strike pistol, and Loud just happened to utterly destroy it. Right here. And now, 𝘼𝘼𝐻𝐿 stacking towards the A side. Standing ahead. Smoking mid in the exact same fashion, hoping that somebody sees it. Just a call, like there could be that presence into mid. Les completely alone here. He's going to get overwhelmed. And now 𝘼𝘼𝐻𝐿 are going to understand that this was fake pressure early on, over towards A. So Salek's got to accelerate, they've got to get into the B site. But you've always got to be worried with 𝘼𝘼𝐻𝐿. Is there still one player hanging around this area? It's going to slow them down slightly. That's why they're clearing it. Due diligence. Showcase, drone through as well, making sure they're into the back of the site. Flash. Players though, deep flash. Just along with that, I mean, a Dizzy, a wingman, everybody collided and collected into that deep corner here, but it just don't have the weaponry to really nail them. The paranoia was fantastic. A bit more so, one player to stand. It's 𝘼𝐼𝐻𝐿 on 1 HP. Smoking onto the spike, it's turned just like that. Wall up, 𝘼𝐼𝐻𝐿 blocking it. Has to be broken here, but a reload for 𝘼𝐼𝐻𝐿 now, and he's so low that it just feels like he can't get the spam bullets on, spraying through, just needs one to really hit and connect. It's not happening! It's a rounded. And 𝘼𝐼𝐻𝐿 even cleaning up 𝘼𝐼𝐻𝐿 at the end. He can't recover the rifle, but what a round for 𝘼𝘼𝐻𝐿. And that is immediately in round 2 showing you some of the power 𝘼𝘼𝐻𝐿 have on defense. And it comes down to the fact that their comp is so good for flood defending into B. Flood defending back B is one of the most successful ways you can possibly play now, this Sage wall makes a difference. In लोगों का attack and defense दोनों में पूरा prepped है. More than that, I feel like थोड़ा Monier Omen पे बहुत comfortable है. Monier Omen बहुत अच्छा है. Loud are going to find it difficult in post-plant situations. Nice, 4 spotted here. Wonderful indicator. What danger is there in this round? Maybe if 𝘼𝐼𝐻𝐿 is able to just flip the back ahead of 𝘼𝐼𝐻𝐿. Doesn't. He's in mid though. 𝘼𝐼𝐻𝐿 is fast to get into position to make the play. But 2 players doubled up, 𝘼𝐼𝐻𝐿 and something looking to re-clear. Good level of awareness. And Forsaken also with pretty decent awareness on the other side, even though that one-way missed. Yeah, into this corner. He's really stuck here. There's no repositioning. They've overwhelmed them. Doesn't matter about the superior weaponry. Needs to be that refight, the re-peek as well. A little bit strangling the beast that is their rifles. Aftershock can't be walking too far into this one. Dodging of the flash. Dizzy up into the air, but Salek, he's taking a fight straight to them, and now frustration really showing. Oh no. Dodging at the timing. No! The dodge! Timing रे, timing हो गया. Back-to-back thrifties, man. आपस thrifty कितने thrifties हुए हैं आज? Mastercard are getting the money पूरा shots today. split में I mean, we're coming off the back of the Sen Gen G game where we just had thrifties over and over and over too. I'm confused though. In what way was Forsaken stuck in the corner? Moniet's above him. He can walk backwards whilst keeping his crosshair focused towards A link. They could have set up a double face. Yeah, they could have. He's just kind of shoved himself in a corner looking to try to take the fight. I assumed he was just going to continue backing up. Very odd. Opened up the door though for Loud. Opportunism. Finding them the second round there and getting things back on track. There's that same smoke to try to deny. Oh my goodness, you're shot. Oh my god. Shot It's 𝘼𝐻𝐿 down again, that's the a spike drop. It bombed down. And they've Bomb gained drop, bomb control drop. and ground and another kill. You cannot be doing this to me now. He got thrifty, no way. The Mastercard representatives will be very happy, but it's not exactly the most picture-perfect Valorant that we've ever seen here. Wingman alerting the presence, at least to know now that a few Loud players are here. Spike still dropped down, but it's coordinated off, and they've obtained those rifles, and they're using them to great success. Now, I'm going to really just brute force their way through. They've gathered the spike up, but listen, they're just spamming it through. One Oh my left to stand. क्या चल रहा है आज? Can't overcome it. Thrifty. और thrifty. To back Thrifty. Mastercard वाले बहुत खुश है. कहते हैं This is so काश similar कहते हैं to Mastercard वाले बहुत खुश है G. इतने thrifty हो रहे हैं. The aggression coming out, very similar to the pistol round. And Loud, think of things from their perspective just for a moment here. They're in an elimination game. The pressure is on them. They're playing against a difficult opponent. They've only matched up against once, and they lost that time. Expectations are mounting for them to try to make a podium finish. You get the pistol win, you throw it away, you win it back, and it disappears out of your hands again. Relation to disappointment, back again here for Loud. A true roller coaster of emotions. Now 𝘼𝐻𝐿 trying to get Tiles to use this vault line that goes sideways and covers both sides, and they use it to pick off something. So once again, Brent,
worst utilities winning it out. फिर से thrifty or what? I say worst utility, I scrambled my words. I meant worst weaponry. The utility was fantastic. But that's 𝘼𝐻𝐿𝐻 trying to get that deep tiles position, and this time no one from PaperX punishes him for it. It's just a game of playing over various different areas of map control and a little bit of gambling of where PaperX want to fight. CK will lead the charge here, making sure all the areas are cleared. Oh wait. To the side, 𝘼𝐻𝐿𝐻 dart into a deep position, an attempt of a timing by That Maverick has is been immediately punished. 2 left to stand, 2 left to fight. PaperX, what have they got in them? Yeah, really wide face there, and he's going to get beamed down straight through the wall. 𝘼𝐻𝐿𝐻 does have the money to make a go. क्या चल रहा है भाई? Still opt into it. The power. Hello, chat. I mean, hello, guys. We've just been sent through. Hello. Thrifty पे thrifty, master card open. You never know what's coming out the other side. And we're all getting shaken up. Match 1 map 1 जैसा हो रहा है. Backside position though, quickly. 𝘼𝐻𝐿𝐻 is going to be swarmed from this position. Molly at the उसमें भी third map पे गया ही था. Nailed shot, man. I mean, less so much precision. I'm not saying it बाद again. thrifty वापस thrifty. I'm not doing it. I mean, पूरा thrifty ही है अभी तक तो. Mastercard thrifty. खाना वाला भी आ गया, चलो अब आएगा मजा. And now in a position though where मास्टर कार्ड वाले फुल पैसे वसूल हो रहे हैं उनके भाई. ultimate's online. Nice one, Mamba. खाओ भाई खाओ. क्या खा रहे हो? 7-8 points to be able to get Already खा रहा online. भाई. You're not supposed to really have access to these big भाई, ultimates हो as गया. soon as Alex the भाई का economy दिमाग starts का going दही through कर your दिया opponent. public ने. But PaperX are one away from being broken here. Not that that means anything in this map. Come on, one more thrift. And अच्छा now ये तो Lauda buy कर रहे हैं. pretty close to some big ults. Now I'm looking at 𝘼𝐻𝐿𝐻's positioning. And he sends an early fault line up towards A and is trying to take space off the back of this recon. But look, he is quite exposed in mid here. And he's trying to take this tiles position. The second fault line perhaps for a later reclear over towards A. देखते हैं bro. लोग कहते हैं एलेक्स कुछ करता नहीं. मेरे को तो लगता है करता है. Operator. काफी लोगों को लगता है एलेक्स बड़ा useless है. Cautious. But they have multiple tools for these map control plays, and this time deciding to invest the drone. मैं कभी stories सुनाऊंगा मैं. No tag, so no ult from 𝘼𝐻𝐿𝐻. Okay, bro. Delayed wall. Yeah, and if you break it, you give away that there was serious pressure behind that. Pinging up onto the top of him. I mean, 𝘼𝐻𝐿𝐻 loves to play on top. Sentence angle. Yeah, great flash. कल lower final BO5 है. Lets them know his presence. हाँ. Be sent into the opposite direction there with 2 tags. तभी तो अन्ना मजा आएगा सेन लाउड हुआ तो. देखो honestly बता रहा हूँ क्यों PaperX 5 maps इतना strong नहीं है. Have the protocols to deal with that. अच्छा है ना सेन का भी डाउट है मेरे को बजाज एक्चुअली. Sam's now into this site. हाँ मेरे को also 5 maps का strength है कि नहीं मेरे को वो भी डाउट है. by 𝘼𝐻𝐿𝐻. पॉइंट तो है ना बट एटलीस्ट 3 मैप तो देख चुके हैं. मतलब ब्रीज छोड़ के बाकी मैप तो स्ट्रांग दिखे हैं अभी तक. आइस बॉक्स हो गया ठीक था. असेंड नहीं दिखा है उतना. ब्रीज नहीं दिखा है. ये छोड़ के तो बाकी ठीक ही लगा है मेरे को अभी तक. Particular position and any attempt here, they just want to barrel over the smoke position. Something, no chance here. Oh no man. The operator now, so he has to just run tail between his legs. कितना भागेगा? बैंक तक तो थोड़ी जाने वाला इधर. Composition is fantastic on those A retakes. कल no You office saw the Saturday Sunday utility was flying towards 𝘼𝐻𝐿𝐻, and they still managed to come out the other side unscathed. Mostly, जो भी जाएगा यहाँ से जीतेगा. डायरेक्ट स्प्लिट बैन करना चाहिए सेंटिनेल के. thinking about investing it. You could जस्ट see बिकॉज 𝘼𝐻𝐿𝐻 जेंजी ने position हराया in a जरूरी spot नहीं है. where he उनको was वीटो thinking में ही about थ्रो taking ऑफ कर sides दो. towards A. क्या खेलेंगे? Took the gamble, क्या saved चूज the post करेंगे? plan, came out वही to the वहीं good. पे खत्म कर दो. Now 𝘼𝐻𝐿𝐻 Taking already up. 𝘼𝐻𝐿𝐻 dying to spike there. Don't ask me. Luckily, they've got money to spare. Yeah. But that's a great punish onto Forsaken. Unless choosing to try to take the aggressive option, not caught by any of that retake utility. It was perfect. Lesson 𝘼𝐻𝐿𝐻 stepping up for 𝘼𝐻. Yeah, and now a timeout being taken here for PaperX. The trouble is, how do you get a grip in terms of what is replicatable? Because the rounds that you're winning have been seemingly down to just hitting a few straight shots, going for the mid-aggression. Well, you can clearly see that they have an anti-strat prep with regards to 𝘼𝐻𝐿𝐻's smoke to try to deny info for 𝘼𝐻𝐻. ये timeout तो setup change करने के लिए लिया होगा ना ये लोग? Because all the 4-5 rounds that they have done, they only tried 2-3 things. Clearly their game plan coming Technically 2 things. You lost the pistol round,
टेक्निकली टू थिंग्स मिड कंट्रोल ये लोग बहुत वैसा ले रहे थे, अब आई थिंक सो रोकना पड़ेगा। मिड पे जरूरत नहीं है कंट्रोल का, मिड पे ऊपर टॉप में ट्रैप लगा दो और मार्केट से खेलने से बेटर रहेगा इनका। डबल मार्केट खेलो तो वो लोग मिड आएंगे तो बी की तरफ ही आएंगे, मिड ट्रैप तोड़ेंगे तो पता चल ही जाएगा तुमको। Look like it. And it is so important in moments like this to not overcorrect. If you have the right ideas and they're just I think not so Cypher को एक खिलाना you might still चाहिए। want to stick to them. Like I was talking about earlier. इनके में Cypher है, दोनों में ही Cypher है। No, Sentinel नहीं है ना दोनों में। You have two teams like this that are so but for down to just opt into fighting against each other. हाँ, तब तो प्रॉब्लम है। Is going to और दो जन को भी खिला रहे हैं। Form is going to play an enormous factor. Feel like just a coin flip at times here. We could buy 4 Paper X. So ये तो eco round makes a difference. And Freak is sole recipient of the rifle. He's going to be holding down a B angle just by himself here. Something by. He's going to be given up. To फेंका. Acknowledgement तो there. सीधा मुंह पे आ गया ना। Down, so they know that there's players lurking around, a slow तो default और play, टूट which जाएगा। isn't anything out of the ordinary for Loud. No, and you can see that Loud is starting these rounds really passively. ये लोग को पता है लाउड मिड कंट्रोल ले रही है बार-बार, ये वाइपर का ये वाला वॉल करने के बजाय स्ट्रेट वॉल करने से मिड डिनाई नहीं होता, इतना सिंपल। बचा। And he hops away. हो सकता है अगला राउंड करें। हर बार टेढ़ा वॉल करना जरूरी भी नहीं होता। And free position, always trying to tuck himself up onto the box here. Are they even going to be aware of it? Oh, pocket है, pocket. 𝘼𝐻𝐿𝐻𝐿. Few random bullets, he might think it's cleared. It's not. Patience. Play Oh to my perfection here by God. Mind Freak. Might be looking for a few more still. Just drop down to 2 of them. Divide. वो तीसरा किल लेने का जरूरत था कि नहीं उसको पता नहीं, because दवाई क्रॉस देख रहा था उसका। To the corner. कर दिया उसने अपना काम कर Wide but दिया। less. We'll put him down and put him to rest here, dodging to the flash, but he's got a lot to overcome now. Looked around, weaponry handed over. Losable. I like how you said losable. Honed and ready, showcased by भाई एक और something आगा। Less aside, but he's going to have no opportunity to really get a free plan off here. Molly down, running through it, Monier, and there it is. Round 1, they know it. Tucked to the corner, something. इकोनॉमी पूरा खत्म कर रहे हैं। अरे 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 ये देखो भाई ऑफर, ये प्रोफेशनल पेपर एक्स प्लेयर भाई, ये देखो। Oh my God. दो बार ऑफ गवाया इसने, दो बार ऑफ गवाया इसने। स्नाइपर अल्ट भी आ गया उसका। Oh my God, that's actually a blunder. पूरा इकोनॉमी भी खत्म हो गया। इससे एक और थ्रिफ्टी है। यो पेपर एक्स ने कर दिया एलेक्स का पेपर चेहरा एक्स। दिखाओ, एलेक्स का चेहरा दिखाओ। And Les does what he can, but it's just, it's not enough. आपका MC बीजे कर दिया बोला उसने। बोल रहा है व्हाट द फक भाई एम आई सब लोग गेमिंग चेयर पे बैठे उधर वॉच पार्टी में व्हाट। And it pays off. हाँ Now Loud change up the pace. नाइस पुश Oh भाई, my चलो goodness. चलो। It's Paper Monate X my God. taking a fight Best straight omen to in the them. world. Yeah, Loud opted into that After pacing increase. 10. They wanted ये to बेटर है, थोड़ा end प्रेशर up डाल रहे being हैं। punished one way smoke as शॉट रे well. समथिंग शॉट मारा है। हाँ कर दिया शॉट रे वो 4 सेकंड नाइस Caught ट्रेड। me completely off guard. I mean, Loud वो have been scroller playing पे such jump किया ना अभी? defaults to start जल्दी these से। rounds off. Focused ये on mouse पे getting भी jump हो control, जाते but not कभी-कभी, that पता है? fast. Forsaken Not nice almost भाई। got a timing. ये चप्पलें पड़ गई पता है? With the gun, yeah, sticking. Go यार। My God, my God, 4 second, my God, my God. हाँ जिसा My God is my God. 8 HP That's the spike in his hand. 2 is my God भाई, 2 is my God. More than तो that. जब सब जाके मर जाओ अब। Especially when he's on 8 HP. एक एक करके जाओ, Exactly एक sure एक what करके। the read was टपली at the मारो start of this भाई। round. But Paper X have been fighting with 2 or 3 players every single time over towards भाई A. टू इज ये राउंड निकाल दिया तो खत्म है। I think you've got to start trying to take space. Alex and हाके मारेगा। You can go back and late re-clear with the fault line or the drone. Yeah, Oh, 8 HP no. I think trying to impossible just है। run in and take Oh, that fight no. straight up is गंद गया। going to be so difficult. हाँ अगर ये राउंड जाता ना भाई। There are so many tools though that Paper X have at their disposal with this no duelist composition. If you ignore A main completely, sometimes Divide might just wall it off, and then they can just ignore it. I mean, what are the chances that both teams just decide to fight A main that fast? The flash connections were so perfect. Paper X fight through all of the smoke utility to सर get the बीट kills. का जो एनालिस्ट है अभी Shots on target. सुशांत he came up with an amazing idea That was और something that I was a little formula concerned about going हम into बात this कर game रहे actually. थे। Loud are going to We always talk about time out, these but things I जिससे felt like कि from what we had जैसे seen over फुटबॉल the course of the में rest of this XG tournament, नहीं होता Loud had more players expected stepping up goals with their expected individual assists ये form. वो Yeah. तो एक्सपेक्टेड गोल्स के बेसिस में हम निकालते हैं ना कि
कौन जीत मतलब किसको जीतना चाहिए था, एक्सपेक्टेड गोल्स दोनों में से जिसका भी ज्यादा है तो एक्सपेक्टेड पॉइंट्स ये वो वैसे करके ही मेड अ फॉर्मूला जैसे एक्सपेक्टेड राउंड्स निकल सकते हैं एक टीम के दूसरे टीम के अगेंस्ट। ओके हाय बहुत गजब, कभी डिटेल में समझाऊंगा आपको को। ये क्या, अरे हेलो क्या लिखा उसने? ये क्या दिखाया? नहीं उसने वो पेंगुइन के मुंह में अपना उंगली क्यों डाल रहा था बार बार? पेंगुइन इज हंग्री। हाय भाई क्या क्या था वो? भाई so valuable for a team like Apex to be making these. भाई बात हो गया 1240 को उंगली डालना पड़ेगा, क्या करेगा? If it's form that carried them to this point right now, the ideas and time. Benga बोल रहा है जी। They've got good reads, they've got good adaptations, they've got good counter strats. बेचारा पेंगुइन भाई, पेंगुइन ने क्या बिगाड़ा है? Again, Paper start 3 players ready to fight over A. And Loud go for the exact same. फ्लैश ने मिस कर दिया। फ्लैश कैसे मिस हुआ? नहीं हुआ तो एक जन को लगा पीछे, एक जन को लगा, सेकंड वाले का तो दीवार को लगा फ्लैश। हाँ मिस तो किया बट एक जन को लगा। Anything like that. फिर मिड कंट्रोल ले रहे हैं इनका वॉल्स भाई। Face wide, doubled up in the high low, but no Paper X का सेटअप casualties or kills. Here's the bar. देखो क्या है वो puts him to rest. वो भी सोच रहा होगा भाई क्या हो रहा है। Sadak's just sticking the orb right in the middle of all of these guys' faces. Oh no. Wait. He's what? वेट क्यों कर रहे हो उसका डिटेन होने का? फायदा क्या है? असिस्ट अरे ताकि but something gets the response. ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। Of course, it's not मैं तो मार दूं भाई, मेरा तो बस ना चले। तो नहीं था भाई। नहीं मैं सरकास्टिक क्या चल रहा है भाई? मैं नहीं रुकता उसके लिए। वेट I would have just killed him भाई, फिर ये डिटेन किसी और को कर सकता था, वो सोचो कौन। एग्जैक्टली, अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सरकास्टिक में ही बोल रहा हूँ क्या चल रहा है। इसके बाद ये लोग सब पुश करके मर गए ऑलमोस्ट। उसने करियर राउंड निकाला ना, अभी दोनों 1v1 really begins, but he was just aiming in the wrong location. 4 kills in the round for something. This round, Loud did actually try to. It wasn't early round market control, but QCK started. और इनका यही काम करता है, ये लोग जैसे ही साथ में आके खेलने की कोशिश करते हैं। Then was looking to खेलो रे बाबा, खेलो जैसे खेलना खेलो। But there was no smoke up towards top mid, not enough players in mid to dominate those sight lines. And so there's a kerfuffle that happens over there that Paper X come out, I guess, to the good. And Sadak's trying to make it fake like it's happening over towards A, and the Paper X players just peek. The more mess that's involved here, the more I think we start finding towards Paper X's strength. Fast play again. Deep molly, deep dart, flash into the corner, and yet here. बजाज भाई आपका जो कोच था No clearance. It's starting to get sloppy. It's starting to get sloppy. At the end of the day, the day ends. And guess what? बहुत hit हो Exactly where गया। a team like Paper X thrives. Thank you. Pound for pound, this team were born and bred in the chaos. And they're showcasing exactly why you can never underestimate this squad still. अरे स्पाइक वहाँ पे है ना, शॉटगन लेके बैठ जा सकता था वहाँ पे। एलेक्स गांड मारेगा पता है। Brought into essentially an unwinnable scenario. Another नहीं कर सकता बेचारा another एलेक्स। Loud player in a 1vx, completely surrounded. And Nice round. Let's go. Coming out here. They're really not adjusting their defensive setup too much. Loud का एको ना? It's that Loud cannot come up with the answers. We've now seen 4 rounds in a row, roughly Quasi following the कर same सकते हैं, kind of trend. भाई चैट में बोला श्रीनिवास ने, To take control of एलेक्स it बोल रहा है जीते नहीं तो माउस पैड डालूंगा, बैट की ग्रिप They नहीं। can't figure out how. अरे The judge, the paranoia, the swings from both sides, just getting pulled into the maw of Paper X. That's all smiles. ये भाई जीत के कुछ नहीं होता है। जीतने के बाद भी इतना टेंशन में क्यों होता है ये? Alex. It's scary when he smiles, actually. You don't expect it. This is the first time Paper X decided not to fight over towards A. So we might see a very different round here. But लेकिन genius है, अगर if it's on purpose, no, it's given this genius space. it's working. Paper X anticipating that they would change it up. Definitely on Surely purpose. they don't go A main again no after we've randomness just been to it. beaten them. If it is बजाज भाई ब्रांडिंग का सोचो, ब्रांडिंग का मार्केटर बनो, कोच नहीं। One away from the ultimates. Sonic builds up his. बजाज भाई इतना भी sarcastic नहीं होना चाहिए, Drone बुरा लग wasn't रहा है। used to clear elbow, so they can start to use that now towards the side. But yet his position is vulnerable here. It's a pop flash play to set him up with a bit of supportive utility. He wants to disengage now with a smoke dropped down. No command, feeling the heat, feeling the pressure. That's a weird one actually, because it looks like they're playing for retake, but they've popped the null command. And Loud think that they're anchoring the site, so they haven't committed. This is a strange standoff. Line in the sand has been drawn.
TP into mid here, 2 years. I believe just sticking that one, so he's given himself a deep position to mid. Probably won't matter too much. Munyet might be eager though for a challenge here. How's your reaction time, son? Flashes on flashes. Paranoia to meet their match. And a deep dart as well. That's not going to be accounted for. Hunter's Fury though tucks into it, gets the connection, gets the collision course straight into these players. And Munyet does a decent job of just avoiding it. Dodging, ducking, weaving, but not enough there. And a repeat with the Outlaw. Something has something. Almost reload online. Shock darts though, jumping around the punish, and they're out Back wide. up to Harry. Ready for the taking. Even when Loud अन्ना सब जॉर्ड गैंग रियूनियन स्ट्रीम का पूछ रहे हैं. PaperX still find a way to जॉर्ड गैंग Five स्ट्रीम rounds in a row करेंगे. now. After a very back and forth beginning, देख लो chat. when no team could really get a अन्ना handle on की the चैट में economy, ऐसा लगता है 5-6 चीज एक बार में पिन करके रखनी पड़ेगी. lower eco buy as well. बेचारे तो एक ही सवाल का जवाब कितना बार देते हैं. Surely, Loud are going to change things up. And भाई this time, their 4 सेकंड defensive, कुछ तो their करता है वो attacking setup बाजू वाली does भी look इसके साथ. slightly different. PaperX already anticipated it though. Mid. Tiles, flash Mid. Munya's here already. Forwards in the approach, and he is set up with that util. Run it back, dealt with. There's no way, dude. Dropped immediately. These ults just डिनाई कर दिया पूरा कंट्रोल उन लोगों को. डिनाई बोलता ऐसा वैसा नहीं. आया तो चप्पल खाएगा बोला सीधा. If they're fighting over mid, they can't be doing their normal A setup. So he takes this timing into elbow. There is a chance that 𝘼𝘽𝑗 could find the back of something's head here. Yeah, he's not watching for it, and so he will be falling. Flatlined to the side, and a sight gains now for less. Going to be calling for the rotate and the pivot. Smokes. He could drop a pit. Falling down, he certainly could, and really turn this into more than a winnable spot with 2 years in that late lurk player dropping like flies. 2v3 here. Loud have a massive advantage here with the pit with the Rolling Thunder. Just letting it loose and letting it rip here. Sky high. That's the Vi. He's going to be flying forwards and won't be able to withstand any sort of pressure there, leaving it just to Mindfreak now. Mindfreak's been good at catching चलो 2Es in all 7-5 of these good games, up. but finally 2Es gets Good his up. value on the lurk. Loud with 5, but questions in my head about whether or not that's going to be enough. Who knows? There was a serious streak there of dominance from मैं भी देखना PaperX चाहता on हूँ the defense side. SENTINEL. And I do like the way that PaperX दिखाओ play their मेरे को. attack too. I कैसे think both of खेलेंगे these ये teams are very confident in Sunset. Still, anybody's game, but Loud, the team under the most pressure. Of course, listen, it's elimination. They're already 1 map behind. It's going to have to be that comeback, starting at the pistol round in that second half. Before we even get into that as well, earlier we did hear from Forsaken, just heading into the series. Hello guys, I'm Jason, aka Forsaken, and I play for team PaperX. Against Genji, we lost, but I don't feel anything and I don't have any regrets. I mean, I can tell that we're gonna lose because, I mean, they play well, but at the same time, I would say we just want to go lower bracket, you know, because I know that they're good, and also we're not in the good shape. I mean, like, we have like shaky map, shaky roster. Also, it's like, we're not doing as great as last time, so I didn't like regret or whatever. Something needs to do a little bit more. He's done some damage, and there's the follow-up. A shot right to Texture's temple. That's going to put us in a 4v2 with PaperX definitely favored to take this pistol now. Forsaken fallen. A little bit more of a chance. Something, though, delivers. Okay, he's up top and not spotted. Easy peasy. If we meet Loud, I mean, I'm just going to go all in, and I hope you guys enjoy our W gaming, you know. Actually, I feel like we shouldn't have been in the playoff. We should have been like lost like long time ago, maybe against TH or KC. Because I felt like lucky, I would say, last time. But, you know, like I said, when we go lower bracket, and every time we already played the match, finished the match, no matter we win or lose, we will like improve very fast. And hopefully in lower bracket, we will show you guys on our improvement. Yeah, Forsaken just handling, you know, that pressure like water off a duck's back. Coming into this entire tournament, just with the lowest of expectations, and now they're just improving at a meteoric pace, looking to really just take it to a team like Loud. They have the lead here at the half of a decider map. Yeah, I think that one of the big problems for PaperX is that their previous playstyle involved them being in the flow state, of all just having the same understanding of what was going on. And the more that you try to force that kind of thing and worry about the fact that you're outside of it, the worse it gets. But just getting absorbed into this tournament seems to have brought back some of that synergy. Some of the single-mindedness that we see from them, the hive mind of PaperX. Made them deadly. And the pistol rounds have been, well,
I hesitate to say important because they did flip-flop a lot at the beginning of this map. But they could be decisive. Everybody on PaperX grouped up to try to punish 𝘼𝐻𝑒. Disrespecting for that one here. 2years backs away with the TP. Off-angle approach now with the paranoia. Sent flying onto the left-hand side. 2years. So not accounted for. QCK just trying to back him up as well as bail him out. And they are just collecting all sorts of kills, but the damage done through the wall. Not enough to collect the kill onto 𝘼𝐻𝑒. Too far forward and not playing great angles. Pushing themselves into spots where they couldn't quite get it. Overextending to deal with 𝘼𝐻𝑒. Sadak himself on the corner, but does pick up the kill. Getting flustered, but it's okay there eventually with the reset of the aim. Less 1v3. See magic. He's done damage, but he can't get through. Sen versus PRX is also something so powerful on the pistol. On both sides. If it goes to that. Retake to block off angles in the post. It's such a nice addition to the KO Gecko comp that a lot of teams have been looking at. Look at this, too much to clear, really, 4 less. Big man in his face, follow through with the bullets. No kill collected, but he does have too much to do. Already the time's getting away from him. Look at PaperX. Stanced up, holding their ground, swinging off the contact, and that's pistol round 1 out for them. It's been so damn important. Like you said, you know, we've been talking about the details of the importance of it, despite the initial start of this first half, but really it sets them up beautifully. Look, slow up there. 𝘼𝐻𝑒 is used as bait, and they really do bait Loud into taking bad fights in that situation. All of this was set up as well by an underhand KO flash combo with the Dizzy. I know that people have been looking at this something POV. And talking about how he doesn't, you know, recycle the Gecko utility as much, that kind of thing. But they are really good at being able to combo those together to apply a lot of pressure to their opponents. And frankly, PaperX move fast enough that sometimes you wouldn't even use the second round of Gecko util. Les takes an opportunity to try to go aggressive, gambling on the fact that PaperX would not have everybody stacked in B main. This is where the danger zone presents itself. A team like Loud as well, because yeah, you've lost the pistol round. But PaperX on our attack side again. Very ult generation heavy. Something now 1 away from the Thrash to be used into the bonus round into the next. Assuming Loud can't do too much more damage here on their retake. Your timing है. On the flash peek into backside as well. Whoa! 𝐾𝐈𝐍𝐻𝐿, nice one, 𝐾𝐈𝐍𝐿 boy. Still got that wall, but 𝘼𝐻𝑒's on the flank. Pepper tier holding the util. Good adjustment by Mindfreak. Close. A decent opportunity actually to turn that away. मैं बहुत Thrifty नहीं देखनी मेरे को बस Thrifty after इसलिए Thrifty support कर रहा था. was not to be. As you were saying, right, building up something's ultimate here is really devastating for Loud. Difficult to deal with. And I think the addition of the Sage Wall just makes so many of these post plants a little easier to play. This is a map where we've seen a lot of teams develop really solid retake setups, where the amount of utility coming in just ends up being overwhelming. But if you force the retakers down a certain path dictated by that Sage Wall, things get a little easier for PaperX. Just throw a wrench into the plans of a lot of teams. Sage is so unorthodox on this map. Early Thrash. Used to set up here, out towards A. But a fake in terms of where the pressure's actually coming from. Yeah, I mean, he did have the spike on him, but the rest of his team now working into mid. Pop flash, wall up. Hearing all this noise, hearing all these sounds, he can't survive it past the box. A call is made though. Loud want to commit into this fight. I'm going to commit heavily out wide. Miscommunication perhaps. Something drops down as well. Forced into the spectator seat with the spike drop down. It's a favored situation for Loud now. They have spike. Very difficult to retrieve. If Monier gets another smoke online, which he does, he just sneaks in, sneaks out. And now all of Loud are in a pretty rough spot. They don't have any map control or information. Could be worried about some lurking happening here. So just like that, suddenly there's a lot of doubt in the heads of this Brazilian team. Daylight robbery from Monier. You'd expect the spam to be coming through as soon as the smoke gets deployed. It wasn't there though. And now, because Loud was so heavily stacked up around that spike position, as you were saying, they've lost all map control. Yeah. They're having to triple up and reclear everything together just in case. And they're slow to do it as well. What you see from PaperX is that after throwing that A utility, they were immediately up mid. And I was praising Sadak in the games that I've been recently watching Sunset. He's very aware of those mid lurk timings, but PaperX are faster than Loud are anticipating. And didn't we see that all the time on Ascent? With individuals finding timings ahead of when they were going to be expected. And look at the map here, how far away the nearest Loud player is. PaperX have got tons of time to try to reposition into a spot where they can upend the player disadvantage. Miles away.
𝘼𝘽𝐻 seeking to try and fight them deep into these angles. Now, Loud all ready for it with those protocols. Monyet left alone to his devices. Only the Spectre in his hands. It would have to be a miracle. It would have to be mistakes to be made. Less, though, hot on his heels as well to really collect up that kill and get that trade online. So that was a bonus round for 𝘼𝘽𝐻. The 2 players surviving for Loud, they might even consider that a bit of a success. Yeah, I think I would. 𝘼𝘽𝐻's economy is in a really nice spot. And not just that, they did find a timing through mid. So anytime one of these timing-based macro plays works, it's going to add another layer of confusion in Sadak's calling. Yeah. Because with a composition like this, you have to be mobile to plug the gaps. And if you're slower than your opponents, you're going to leave those gaps open. Something of course. सो जाना नहीं आता ये मैप होने के बाद जाके सोता हो रहा है अगर जीत गए जीते हार गए हार गए 2-0 भाई 2-0 खत्म On ascent, one of the big reasons. 2-0 ही होना चाहिए भाई हिम्मत ही नहीं है नहीं हो रहा मेरे से ना मैंने भी जस्ट चालू किया मेरे से नहीं हो रहा To really lock this one up. टाइटिंग एक्सरसाइज मेरा तो बैटरी पूरा डाउन हो जाता है 11 बजे के बाद मैक्सिमम मेरा 11:30 रहे 11:30 के बाद बॉडी Across the board from Loud. I mean, 2 players with a bit of money. बॉडी अपने आप 6-7 बजे उठ जाता है हां 6:30 है Done is to try and build up towards that big ultimate. Without alarm only wake up 6:30 6:45 भाई Loud choosing to try to fight a main there. Recommitting to the angle. नींद तो हमें भी आ रही है This utility was thrown. मेरे को तो नींद तो आ रही है ना नींद भयानक आ रही है अरे ये वॉच पार्टी मेरे को ना हमेशा मैं तो टाइम आउट में सो भी गया था भाई वॉच पार्टी में आती है नींद मेरे को उठना पड़ता है मैं राउंड हर 10 राउंड में राउंड मारता हूं CS 1.6 से याद है डेमो स्टार्ट हुआ कि मेरे को नींद आना चालू जैसा बुक करते हैं ना वैसे into market wall through broken भाई immediately एक बार मैंने दोनों ग्रैंड फाइनल्स की वॉच पार्टी की थी पैसिफिक और EMEA के साथ में कौन सा मैं 3 घंटे स्ट्रीम पे सोया था 𝘼𝘽𝐻 collects him quick on it with the trigger. Now we see it players lit up like Twitch पे कर दो something only the one instant trade, something Forsaken just trying to play in tangle with each other, but they are overwhelmed and moving towards the back. Less is dodging and weaving, gliding across the floor. मेरा तो अलार्म ऐसे हो गया अन्ना बिना अलार्म के इसलिए उठ जाता हूँ कंट्री हार्वेस्ट आता है तो वो 6 बजे आता है नारियल पानी लेके तो नींद खुली जाती है कॉल करता है Loud coming out with a big win there after Sorry, allowing country 𝘼𝘽𝐻 to delight. get in onto site. Country delight. Really Lord is coming back, yeah? 𝘼𝘽𝐻 is at the bottom of the scoreboard, but most QCK bhai, chulo, found it so difficult on the attack side to get in through a main. He just got beaten up over and over again in that same position. It's not really that he's even been able to take some fair duels. I'm surprised at how much the 𝘼𝘽𝐻's economy was hurting there. They came into that round with a Stinger and a Spectre, even though I thought they were taking the previous one as a bonus. Clearly, लाउड का दूसरा कोच एकदम 𝘼𝘽𝐻 messing with their own economy. राइट टू एज भाव की तरह दिख रहा है Tough spot. Damn, भाई. Oh, they're going to be happy with it. Ooh, timing हुआ. Something का भाग रहा है उसके पीछे. Rumbling towards him, looking for a tussle and a tumble. Less backing away, will be postured away from that Something ने angle. नंगा कर दिया रे उसको Very उधर. rare that you see less scrambled, but he did seem a little less than his calm भाई usual कुराना में self शरीफ कितनी there. सेक्सी लगती है यार. Forced to backpedal at some. अनुज भाई हौसला बुलंद रखो. सॉरी नहीं मैं बोल रहा हूँ हौसला बुलंद रखो भाई. Sort नहीं यौन में क्या है यौन करेंगे तो हम भी यौन कर लेंगे उसमें क्या है. Back over towards B main. And two is getting posted on A with the AUDI. जिम के बाद हालत Something that टाइट Loud हो have जाता brought है out fairly recently, but मेरा भी सेम रेज मैं आपने भी बॉडी पे बहुत ये है ना If I do gym 11:30 last, if I don't do gym I can stay awake a bit. अब बोल रहा था आपने भी बहुत काम किया ना बॉडी पे स्क्रीन पे देख रहा था पहले से not going to have any way of being able to challenge this. Inside the market, Dizzy. Looks like connection there onto QCK, so it looks like the wall is intact. Wasn't able to spam it down in time. Forsaken. इससे बे अभी 77 हो गया. Side by side wants to play together now. Him. Something. मैं तो ओवरवेट हूँ ना अनुज भाई. With it, the flash is not connected. From the back, feeling really the heat and the pressure, but 𝘼𝐻𝐻 seeks to relieve it. And now back into the action and the fight. Rolling front, committed. You're not getting away with that one yet. Escape the eye. Still after मेरा भी है अभी लेकिन मेरा 78 है. Where that come from? Mindfreak
2 on the table now, 2 Please, left to go. Mind Freak, please. Dropping down, no, it's not on it. Looking through, another tap will force Mind Freak out into the open. 𝘍𝐿𝐍𝐿 really seeking to deny this one. क्या बात है Mind Freak? Mind Freak, bye! Freak कर दिया mind को पूरा. को क्या उसके पास कौन सा वेपन था? इतना पुश क्यों किया उसने? Still था. Sheriff. Oh my god. Oh my god. Spam क्यों नहीं किया Sheriff को? Oh my god. Mind Freak. Labeled as a Red Bull clutch, but could just as easily be मैं तो overweight हूँ, तो मेरे को तो weight बहुत कम करना It है. all came down to Mind Freak. मेरा could not find a safe position to go for the half. मैंने 9 दिन में 3.5 किलो कम किया है मुझे. मैं 9 दिन में 3.5 किलो कैसे कम कर दिया? शुरुआत में water weight होता है तो जल्दी कम होता है. मेरा diet मैंने बताया ना, मेरा diet is literally around 1200 calories. What do you have? It's very tough in those situations where you don't have smoke utility. Because you don't insane calorie deficit कर रहा है ये तो. Morning में oats, sorry morning में boiled water with 1 lemon squeeze. फिर oats morning में, फिर उसके बाद दोपहर को salad and brown bread toasted sandwich with no butter, no cheese, no ketchup, no nothing. फिर शाम को mixed fruit रायता with fruits. And रात को एक रोटी with दाल या कड़ी. आप कॉफी ब्लैक पीते हो? मैं पीता था, मेरे को कैफीन मैंने छोड़ दिया कैफीन. अनुज आप कॉफी पीते हो? अन्ना आप कॉफी पीते हो? नहीं, no coffee. हाँ, कॉफी एडिक्ट, ब्लैक कॉफी? No coffee tea रे. अच्छा, नो कॉफी टी. बराबर. भाई देख लो भाई, जो पीते थे वो ब्लैक ही पीते थे भाई चैट. हाँ, अमेरिकानो. All the way. They're finding it difficult to pick those timings to disrupt the Loud retake. And if they just sit there, they can do that against other teams, but not against the comp that Loud. क्या हो गया? सुना नहीं मैंने. Hello. They're gonna get obliterated. Sorry guys. माफ करो. See if they change things up or coordinate their post-plant progression just a tad bit better. कैफीन का brother. Strange biter for Loud. It is, yeah. It is a force. अरे नहीं, मेरे चैट में डिबेट चल रहा है कि भाई कोल्ड कॉफी दूध वाला रात को पी रहे हैं. बोले कोल्ड कॉफी कौन पीता है? दूध वाला ऐसा. It's insane. Got some of the best. मैंने कॉफी बहुत पीता था, फिर मेरे को बोला ट्रेनर ने कि हेल्दी नहीं है एकदम भी कैफीन ज्यादा. भाई मैं तो दिन का only 1 cup. Strictly 1 cup. Off the rip. Trying to see if Loud. And that's why I cycle off. PaperX initially wants bolts really to work with for PaperX on top of that. So भाई autopilot कर रहे हो क्या? Main control. Sorry. Hesitation though in terms of how they want to play it. Yeah, it's interesting. They've spotted 𝑘𝐈𝐍𝐿𝐒, and that seems to be a hard read. That if they see 𝑘𝐈𝐍𝐿𝐒 over towards A, it's not the Breach Phoenix setup, because they were ready to go for the B exec there, and now they've just come all the way back over towards A, and that's got to be a call from Mind Freak, I think, because he's the only one getting info on this side of the map earlier. They're going to hit a fairly weak site. 30 seconds on the clock. Orb rebounding. 2 years chance to play spoiler. But no, he's out of there. So I'm sticking around to find out with this one. Hunter's Fury to try and deny this one. Plans will be disrupted. Flash up into the air. It's actually a nasty one as well. Connected onto a multitude of players. Now the plant and the pit all layered down onto the site. This does make it difficult. Toxic Screen going to be covering the entirety of the field. No way of really using these flash players to retake in this spot. Absolutely. Paranoid Omen yet going to be using this one nice and early, still holding for the shotgun. Molly at your feet, Mind Freak going to be pushed out to the open, and he is the critical player. Has to dodge and duck and weave away from these bullets. Led just flying straight past him as they're trying to attempt to clear through. Look at the AUDI placement on high. 2 years. He's got so much more to do from this position. He just doesn't have enough info to really work with. Disastrous here for Loud with the fact that it was that weaker investment. Nice Mind Freak, अच्छा खेल रहा है. In fact, the total investment. कल झूल रहा था. Correction from me, Loud. They did put everything into that one. It was weaker. उसे क्या भाई झूलो. Hard skill में झूलो. At least one Sheriff and I think a Stinger to work with, but they forced into this to try to stop PaperX from getting. Phoenix के साथ पूरा scene हो गया अनुज. Shooting squad हुआ रहे उधर उसके साथ. Lost rounds away from being eliminated in 4th place. Loud. So last time that happened, I mean, top 4 इसका माउस कितना गंदा है रे. Not bad by any means. They made it to playoffs, but when there's only 8 ऐसा लेकिन कितना डेड स्किन है उसके ऊपर धोता नहीं है क्या भाई? of the top teams, look at this. Another boost play coming out Oh. from PaperX. Oh. It's disgusting. They were innovating with that over towards A, and they do it again. Disgusting Very to hate, reminiscent of Baba. when they first brought out the Sage Comp on Pearl. Bait खत्म out में the तो fights ड्रॉप के here लिए from खेल रही है CK लाउडी and को. 𝑘𝐈𝐍𝐿𝐒.
यार This tower is coming crumbling down. टाइम आउट भी नहीं लिया ना Full of Leicester boot. It's pure whimsy. पक 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 Smiles on पक the पक faces पक to पक having it. I mean, they have brought this. ये तो मेरे को समझ नहीं आता लोग 11 या 12 राउंड में वेट क्यों करते टाइम आउट Loud on the के verge. Exactly. Being eliminated. अभी भी मेरे को वो भी पता नहीं चलता है क्यों इतना देर वेट कर रहा है PaperX winning in 2-0 fashion. भाई कल तो प्रीमियर मैच में 2-0 फर्स्ट 2 राउंड जीते, थर्ड राउंड में स्विच ऑफ हो गई टीम, टाइम आउट ले लिया हम लोग। जागो रे। They know that the dizzy has been broken in many तो rounds. बजा They प्लेन में know नहीं that खेलता somebody is top mid, waiting to break खेल that सकता piece of हूँ Gecko वो utility. खेलता They था boost up, get मैं the और यूनिवर्स punish. खेल रहे हैं भाई। All of that in a round where Loud were just going for the eco anyway, trying Icebox to play वाला for overtime, forced to by कल the भी मैच है force in round 19. मतलब आज टेक्निकली टुडे इज आल्सो आइसबॉक्स। This is now going to take some क्या heroics. बात गुड लक There with a knife. He's so fast. डिवीजन 4 में क्या गुड लक भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू उठाओ Manya doesn't care, man. एक्सक्यूज यू मेरा भाई मोनिया भाई ये तो पक चल रहा है On the अभी head. भाग रहे हो Calvin बुलेट मार as he के does seek out that trade, and he will be granted it. Now to Yeah, thrash your though. mom's on the This one loose. up forwards here, still Well, slow, Puggy seeking to said- reposition. Cowsey lays Cowsey down multi more, कितना निकालते हैं? potentially gives them a fighting chance. इसका मल्टी के लिए दिखाई देता मेरे को He be हमेशा। the hero just when his team needs it. One more onto Forsaken, important, and he takes it. Good control. 4K in the round. Something drops him though. No ace Something to wake up. what he really looked for. Something pulling this भाई, Phoenix out to भाई, अभी तो seemingly मचाना nowhere. पड़ेगा। 1v1 and Loud. Desperation. QCK knows the position. Throws the molly. Flash round dodge. Duke avoided. QCK saves the day. ऑलमोस्ट झूल रहा था क्यों के भाई It takes such heroics from Loud. बोला जितना भी झूलूं लाइक समथिंग वाज सो कॉन्फिडेंट कि भाई मैं तो उल्टा घूम जाऊंगा रे बाबा। Cowan Zine was slowed up. बड़ा ना क्या Top लगता है A-link. आसपास रहता तो Had to जीतते take out two players with the trade. सीन मारता था ना It looked like the spacing was good. हाँ खतरनाक And he'd already shut down that play from Monya. देखो तो आसपास से It's like this रे मेरे को क्या है ना if you are in franchise I was telling this to Godspeed also one other day if you are in franchise ना तेरे को एक duelist चाहिए जो no fucks given वाला duelist है you can pull off rounds which are unwinnable not that he is very consistent but he is like Mr. Dependable हाँ It'll have to be done if they want to stay alive in a और series. कई टीम का डुएलिस्ट भी नहीं होता कोई हाँ। और भी प्लेयर होता है तो चलता है बट so that guy was Aspas for Loud हाँ so you technically no matter what the difficulty with him being there not there and all तो वैसा वाला player को you should not lose जैसा हमारा PRX में you have Jing Forsaken Matters into his own hands. Demon 1 है वहाँ पे Out. They still have the res online for this one, but Divide with him falling, no longer available. ना स्टार प्लेयर हाँ like even if Fnatic लिया तो Darka is not like that player he's a team player I'm not talking about that फनाटिक में if you have to point someone it's Chronicle Mr. Dependable है वो but Drops it 3 versus 3 now. अभी let's say पहले Jing and Forsaken Ascent में दोनों डबल साइकिल करके A main से सीधा साइड के अंदर घुस जाते थे Something going for the P. doesn't matter what it is Catches it in the perfect timing. A bullet to the chest with the IGL down and deleted. 2 left standing less. Again, heroics are necessary. And it has to be coming out swinging, traded. 1 to stand, 2 years. भाई balls on this guy dude. A fake with the TP, a paranoia evaded and dodged and juked, but the crossfire setup is too strong. It's too damn खत्म हो गया बॉल Oh something my god भाई हमेशा मॉर्निंग क्यों दिखाते हैं ये लोग। भाई Let's go PRX पैसिफिक अंडा दो पैसिफिक 3 में टॉप 3 में 2 पैसिफिक I like how gentle Davai was with that handshake. I'm still thinking for some reason PRX Genji finals में आएंगे अभी हाँ मजा आ जाएगा और PRX PRX Genji आ गए। 2 बार तो हो गया रे ना मैच इस बार अरुज भाई कौन सा कोपियम कर रहे हो भाई? भाई मैं PRX पसंद तो मुझे भी है भाई। एलेक्स स्माइल कर रहा है? Over a team that loves brawling, loves playing against opponents that are swinging in. भाई एलेक्स स्माइल कर रहा मेरे को है। बहुत पसंद है बट लाउड और PRX लाउड और सेंटिनल में लाउड वैसे है मेरे को सादाक बहुत अच्छा लगता है भाई हमेशा खुश रहता है वो They wanted, but an admirable effort. Nevertheless. चलो सेंड ऑफ करने का टाइम नहीं है मैं जाके सो रहा हूँ भाई ठीक है सी ऑल टेक केयर बाय बाय गुड नाइट चलो गाइस मैं भी They जा put रहा themselves हूँ in a difficult position, honestly. This new style that they've come up with, it does. चलो गाइस कल मिलते हैं कल का वॉच पार्टी में टुमारो आई माइट स्ट्रीम लिटिल अर्ली वी विल डू गैस स्टेशन सिमुलेटर उसके बाद हम लोअर ब्रैकेट का फाइनल देखते हैं ठीक है टेक केयर बाय बाय इज नाइट इज वेरी गुड